ठीक है. Don't. So. A very good morning to all the dignitaries and esteemed participants from the ministry, states, ARMMAN and other development partners. I, Nishant Sharma, I, Jayashree Das, from MMP Cell, welcome you all today to the National Workshop on Kilkari and Mobile Academy program. It is indeed a momentous occasion for us to be at this occasion, since this is the first time we are holding a national level workshop on Kilkari and Mobile Academy in Delhi. The objective of the workshops are to officially launch Kilkari and Mobile Academy in Karnataka, Goa, and Dadra and Nagar, Haveli and Daman, and to review implementation of Kilkari and Mobile Academy projects in the existing states and UTs, as well as to apprise about the future roadmap of Kilkari and Mobile Academy program. Now, let us briefly introduce you all to the Kilkari and Mobile Academy program. Kilkari and Mobile Academy program was launched by the Union Health Minister on 15th of January 2016. As on today, Kilkari project is rolled out in 20 states and UTs, while Mobile Academy project is currently functional in 17 states and UTs. Kilkari name is derived from a Hindi name called Baby Gargle. Under the Kilkari project, 72 time-appropriate messages about pregnancy, childbirth, and childcare are sent for free on a weekly basis directly to mobile phone of target beneficiaries who are the pregnant women or the mothers of the young children. The messages start from the second trimester of the pregnancy and continue until the child is 1 year old. Mobile Academy is a free audio training course designed to expand and rephrase the knowledge base of our ASA workers and improve their communication skills. It offers training opportunities on mobile phones of ASAs in a cost-effective and an efficient way. It is an anytime, anywhere training course that can train thousands of ASAs simultaneously via mobile phones. In this gathering, we are privileged to have the presence of dignitaries from the ministry, representatives from UNICEF and NIC, and participants from 31 states and UTs. The participating states are Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, UT, Dadra, Nagar and Daman and Diu, West Bengal, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Kerala, Ladakh, Maharashtra, Manipur, Madhya Pradesh, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, and Tamil Nadu. We thank all the participants for making it convenient to attend this workshop. Now, I would request our respected dignitaries to kindly join us on the dais. Director General Statistics, Sri Kal Singh, to kindly join us on the dais. Joint Secretary RCH, Srimati Mira Srivastava. Executive Director NHSSRC, Major General Professor Atul Kotwal. Deputy Director General Statistics, Sri Rakesh Moria, sir. Joint Director Statistics, Sri Nikhil Kumar Agrawal. Deputy Director Statistics, Srimati Rangoli Pathak. Dr. Aparna Hegde, Founder and Chairperson, ARMMAN. Thank you so much for kindly joining us on the dais. And we have Dr. Uma Vagi, Project Director, RCH, Government of Karnataka, who is joining us via virtual mode. So thank you so much, ma'am, for joining us. So we would now welcome all our respected dignitaries by offering them plants. I request Ms. Richa Saxena to please come and honor Director General Statistics, Sri Kal Singh, by offering a plant. I request Ms. Ritu Arora
to please come and honor Director General Shri Kalsi. Ritu ma'am. Now I request Ms. Prachi Singh to please honor Joint Secretary RCH, Srimati Meera Srivastava. Now I request Ms. Nidhi Tiwari to please honor ED NHSRC Major General Professor Atul Kotwal. ऊपर से यहाँ से Thank you. Thank you. Now I request Ms. Neelam Singh to please come and honor Deputy Director General Statistics, Sri Rakesh Kumar Maurya. Now I request Ms. Richa Saxena to please come and honor Dr. Aparna Hegde, founder and chairperson, ARMMAN, by offering a plant. I request Mr. Jagatjit Singh to please come and honor Joint Director Statistics, Sri Nikhil Kumar Agrawal, by offering a plant. Now, I request Ms. Madhurima to please come and honor Deputy Director Statistics, Srimati Rangoli Pathak. Thank you so much. Now we will proceed ahead with the auspicious ritual of lamp lighting. Light is considered as a symbol of auspiciousness, prosperity, and abundance in our Indian tradition. Light brings brightness with it and removes the darkness. It ignites the thought and enlightens us. Shubham Karoti Kalyanam, Arogyam Dhan Sampada, Shatru Buddhi Vinashaya, Deep Jyotir Namostute. I would now request all the dignitaries present on the dais to inaugurate the workshop by lighting the lamp, please. This is the switch off and switch on. In case you look to this front wala, piche ka matlab na kuch. यहाँ पे नहीं होगा ना।
Thank you, sir. Thank you, ma'am. I would now request Deputy Director General Statistics, Shri Rakesh Kumar Maurya, to say a few words to welcome all the dignitaries and participants. Sir, please. Thank you, Nishant and Jayashri. Very good morning to all of you. Respected Sri Kal Singh, Director General Statistics, Major General Professor Atul Kotwal, Executive Director, NHRC, Dr. Aparna Hegde, Founder, Chairperson and Managing Trustee, ARMMAN, and Dr. Uma Baggi, Project Director, RCH, from the Government of Karnataka, who has joined virtually. Madam Meera Srivastava, Joint Secretary, RCH, and Senior Officers of the Ministry of Health and Family Welfare, representative from the UNICEF, and the participant from the states, UTs, Health and Family Department, ladies and gentlemen. On behalf of the Statistics Division, I, Rakesh Kumar Maurya, welcome you all for attending the national workshop on Kilkari and Mobile Academy and launching event of the KMA program in 3 new states, namely Karnataka, Goa, and Dadra and Nagar, Haveli, Daman, and Diu. As you know that the Government of India has taken the several initiatives for improving the healthcare delivery services and spreading the healthcare services to unreached area and ensure the provision of better health services for all, including those living in the remote and inaccessible area through innovative ideas and technologies. One of the key services and Digital India initiatives undertaken by the Government of India is Kilkari. This M-Health service is a powerful tool providing the relevant information and guidance directly to the pregnant woman, parent of the children, and to the community health worker, thus creating the awareness among them about the health services and promoting right health practice and behavior. The weekly messages help families to educate, remind, and reinforce the prioritized actions for each week during the critical period. These actions not only save lives of the pregnant women and children from several risks, but also ensure a healthy outcome. Initially, the Kilkari program was run by the Bill and Melinda Gates Foundation's BMGF, their partner agency BBC Media Action. Later on, MSW has taken over the program and signed a MOU with the ARMMAN, a non-profit organization for managing the Kilkari program across the states UTs in 2019. As such, there is no investment in the technology, infrastructures, or operational cost is to be borne by the states. This services is free of cost to all states, UTs, and as well as beneficiary. Kilkari is an interactive IVRS which delivers the pre-recorded 72 audio messages directly to the mobile phone on the beneficiary. The services start the second trimester, that is 4 months of the pregnancy till the child is 1 year of age. In addition to this, the Mobile Academy is a free audio training course designed to expand and refresh the knowledge base of the ASHA workers and improve their communication skills via their mobile phone, which is both cost effective and efficient. It is an anytime, anywhere training course that can train thousands of ASHA simultaneously via mobile phone. Currently, the Kilkari is under implementation in 20 states and the Mobile Academy in 17 states. And
we are in the process of upgrading the whole infrastructures of the KMA program. And this for the remaining states of UT will be rolled out in a phased manner, but we are hoping that that will be completed by the most of the state will be covered by the end of this financial year. At presently, the KMA program is running in with 7 languages: Hindi, Udiya, Assamese, Bengali, Telugu, Gujarati, and Marathi. We are making efforts to include more regional languages in the KMA. The data source for the KMA project is the Central RCS portal managed by the Government of India. Based on the LMP of the pregnant woman and the date of birth of the child, the targeted beneficiaries are selected from the RCS portal. The audio messages are delivered to the targeted beneficiaries on their mobile phone registered in the RCS portal directly to the IVRS system. In Kilkari, messages cover maternal health, child health, family planning, and immunization. In a similar fashion, the training courses on the Mobile Academy for the health worker of ASHA, the course covers reproductive child health, maternal health, neonatal and hand wash and hygiene. The aim of the today's workshop is to review the progress of Kilkari program in the states in UT and discussions on the best practices, innovation taken by the states and UTs and demonstration of new MIS portal that has already been released by the ARMMAN. The workshop will not only foster collaboration and learning among the states, but also align our collective efforts towards improving maternal and child health outcomes in India. The launch of Kilkari program in Karnataka and Goa and Dadra and Nagar Haveli marks a significant promising expansion of this initiative. This development signals further advancement in the maternal and child health outcomes within these regions, underscoring the continued commitment to delivering the vital health information and training through innovative, scalable solutions. Thank you. Thank you, sir, for the kind words. May I now request ED NHSRC Major General Professor Atul Kotwal to kindly address the audience with valuable insights on how Kilkari and Mobile Academy program can help in achieving NHM goals. Thank you. Shrikal Singh, DG Stats, Ms. Meera Shrivastava, JSRCH, Shri Rakesh Maurya, DDG Stats, Mr. Nikhil Kumar, Dr. Aparna Hegde, and dignitary in the audience, Dr. K.K. Tripathi, Mrs. Reena Singh, all the representatives from the state, senior officials, and other representatives, and everyone present here. A very good morning to all of you. So as just illustrated by Shri Rakesh Maurya ji, that AML is an important initiative, and I'll add, if used effectively and efficiently, for the health promotion for the community as well as the capacity building for the frontline workers now. And that's what I think the new revised version is looking at. But I must commend the initiatives which was taken by Dr. Aparna Hegde and her team and the DDG Stats and his entire team under the guidance of DG Stats and JSRCH for continuing this program. And also now looking at the evaluation done by NHSRC and revising it and now launching the revised version, which will benefit more people and also increase the reach, benefit more people, and also the content also, which includes, it becomes all inclusive, as the word used by Dr. Aparna just now was gender transformative. So I was looking at, saying very simple, plain language that involving the males also now subsequently of the couple as such at home instead of only the lady, the gender transformative this thing content which is now going to be there. So we're looking forward to this revised version. A quick, background as such, we were mandated in 2022 to evaluate the Kilkari and Mobile Academy. And this was done and we presented in 2023. We wanted to save time. We wanted to do a quick evaluation before the revise so that we can revise the current one immediately. So we did it in 4 states for the Kilkari and 4 states and 4 states for Mobile Academy. The study findings, this thing, I'll just highlight few important ones only. I won't take much time. So Kilkari, the good things is that all the respondents found the content of Kilkari to be informative, the tone of messages to be very pleasant, and messages were convincing and useful in the daily routines. That's something which was a great finding as such. 99.5% of beneficiaries, that means everyone as such, barring 1 or 2,
who attended these messages said that they made behavioral changes like getting the tetanus toxoid and also the non-folic acid, iron folic acid supplementation, breastfeeding immediately after delivery and all, and maintaining hygiene, sanitation, ensuring immunization of infants. However, there were some two areas of concern. One was insufficient program monitoring at the state and district level. So that we need to strengthen now in the revised version. The implementing agency did not have any officials at the district level to monitor the program or the linkages with the district for monitor the program. Jharkhand and UP had much lower uptake because of the language issue in Jharkhand and also access to mobile phones in both the states. The reasons for not attending the messages were cited, and that included the language barrier, the working hours as such of the women, and inaccessibility to mobile phones. That's just in nutshell few of the important findings. I'll come to the content later on. Mobile Academy important findings were that the content was again useful and informative for the Ashas. But however, no refresher training regarding MA had been provided after 2016. So the same content which was there, which was being repeated, and now Ashas wanted a revised content as such. The affect component what you say that now you have received this, how do you feel? That was good as such, and again the positive part which was there. Messaging was pleasant, easily understandable, and clear in language. The mechanism e-certificate also boosted the confidence of the Ashas. However, many of them had not received the e-certificate despite doing it. That we need to strengthen our system as such so that once what we promise, we deliver that. The other issues were provision of again mobile number update was unavailable. So they had to go to the Asha app and all again, and then they were finding it challenging to update the mobile numbers. And topic update, as mentioned by everyone, because Ashas were more aware what is happening and they were trained in newer programs by the Ministry of Health only. And communication channel again, that defined communication channel between the state and district officials and national level was again missing. So it will also realize that there should be a systematic and consistent monitoring of the program, both at the state and national level, and also look at the up to district level and below, so that we can translate these MS interventions effectively and efficiently to involve the community as well as our frontline workers. And the revised one, the NHSRC, we have I've got 8 technical divisions. 2 divisions, community processes, comprehensive primary health care, and knowledge management division of NHSRC have been working with the MMP cell and the DDGIT team. And I'm very happy to note that all our recommendations were taken into account. We have revised the content together, where also the ARMMAN team is also part of that. And we're also now looking at how to make the content more and more engaging. Few videos are there. We'll look at that also, how we can utilize augmented reality to improve the quality of videos, to make them more engaging for the individuals as such. And subsequently, we'll also link it with Sashakt also, so that whatever training they go through in that we monitor through our one of the training monitoring software also. The another this thing what we are looking at is the content should be different for the urban ashas and rural ashas, because the contextual difference, and that's what I think is underway right now. All the 12 packages are as such being covered now, and that's why the gender transformative role also we are looking at. So what we are now planning is, as per the directions of ASNMD, a formative evaluation to built into this revised one, instead of waiting for a few years to do an evaluation subsequently. So within 3 to 4 months of the launch of this version, we would have been made our tools ready for formative evaluation, and we have an inbuilt formative evaluation which will keep on guiding the entire program to make it better and better before it is fully upscaled at the national level. And again, looking forward to this revised version, and must congratulate the entire MMP cell team and the ARMMAN team for revising the content to make it contextually relevant and also to make it more efficient and effective. And I must thank also my team of CPCPSC and Knowledge Management Division for working with the MMP cell on this, and everyone involved in the evaluation. Thank you very much. All the best. Thank you so much, sir, for your detailed observations and important findings and gray areas where to be strengthened and the key suggestions to make KMA program more effective. Thank you so much, sir. Now I would request Joint Secretary RCS, Srimati Meera Srivastava, to kindly share insights about Kilkari and Mobile Academy program from the perspective of RCH.
Respected Shri Kal Singh Ji, DG Stats, Major General Atul Kotwal Ji, Dr. Parna Hegde, Shri Rakesh Kumar Maurya Ji, Nikhil, my colleague Dr. KK Tripathi, Reena Singh ma'am, I think our development partners, representative from all the states and all my younger colleagues and participants. So, सबसे पहले नमस्कार. स्वस्थ माँ, स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ परिवार. अगर हम RCH की बात करें and particularly my division, I think I would summarize it बस स्वस्थ माँ, स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ परिवार. Now, that being the focus and the goal, I think there are a lot of linked issues which go beyond the programs and policies of the government of India. There are some direct interventions that we bring into the national agendas and we roll it out at the level of the states, and which seem to have a direct bearing. And we see the reduction in the SDG targets and in the goals achieved, milestones. But sometimes we fail to applaud and appreciate all these interventions which we are discussing, mobile and Kilkari Academy, which actually have played a vital yet many times unnoticed, unappreciated. When we look at these interventions, we realize that much of the problems which happen in the field is because of the lack of awareness and sensitization. There are old practices, there are unscientific ways, there are this complacencies. सबको पता है कि समय से दवा लेनी है, सबको पता है आयरन टैबलेट्स लेनी है, शायद मुझे भी पता था, शायद लेकिन मैंने ली नहीं. Maybe at that time, the Kilkari Academy was not in place. If it was in place, I would have taken. I would like to acknowledge, that possibly that when I'm listening and understanding, the depth of the interventions that go in terms of alerts and reminders as to what you need to do. Coming, realizing that the entire period of the childbirth, it is once I have spoken on many occasions, एक बार family में announcement हो जाती है कि the baby is coming, खुशी वहीं खत्म हो जाती है और जब बच्चा आएगा तो खुशी फिर renew हो जाती है. उसके बीच का period, उसमें माँ का क्या ध्यान रखा जाएगा, उसको क्या बताना चाहिए, how she should be taken care of, what is it that she should be careful about. Because once the baby comes in, she has to take care not only of herself, but also the baby, and therefore she should be fit and fine. So from the RCH perspective, I think I would like to compliment for all these initiatives, which play a deep supplementary role in that. Hearing Dr. Kotwal, I think I am thankful to him. And as with all the committed efforts which have come in, to first understand, do the gap analysis, realizing you that all is not well. We sometimes, get so complacent that we think कि चल रहा है system तो चलने दो. So this, I think, this intervention of चल रहा है चलने दो वाला system, I think, has been kind of not continued, which is very appreciable. And I think a lot of detailed work has gone into the analysis, and as he was describing, to closing the loops, which are, very, very important for making any system efficient and contextual as well, and make it relevant. That is, so NHRC division and his committed team, thanks to you. ARMMAN intervention, I think, has enabled a very, very effective rollout. Sir, I have dealing with your team and dealing with our team of Maurya ji and Nikhil and Rangoli, who have always been very committed towards taking bold, innovative initiatives to bring about these change. I think commendations go to them. The states, actually, states are the where the health activities really get rolled out.
They have to be monitored, they have to be seen, and they need to be, the drivers for change at the ground level. So I will request all the participants who have come here to join for the event to please take learnings back, do the analysis, uh, uh, guide, I would say, give your feedback, and help to roll out the implementation better where coverage is low. Because I think from coming to some level of achievements in reduction of maternal and child mortality, we have come to one level, but I always say, and to the sound of cliche, कि 95% मार्क्स मिलना तभी भी आसान है, 95 to 100 के बीच में मिलना बड़ा मुश्किल होता है, 98 तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, 99 और 100 तो स्कोर इज लाइक, उसके लिए ट्रिपल मल्टीप्लायर इफेक्ट से एफर्ट लगाना पड़ता है. So if we are really trying to target the SDG goals of reduction of as per the prescribed standards, I think the states have a vital role to play. And interventions as these, I think, go a long way. So my entire appreciation and thanks to all the people who have come here. Please make best of use of it. And together, I think we can achieve the target of Swasth Ma, Swasth Bacha, and Swasth Parivar. Thank you all. Thank you so much, ma'am, for sharing your great understanding of this program with the perspective of RCH and how it helps in achieving SDG goals. Now, I would request Dr. Uma Bagi, Project Director, RCS from Karnataka State. She is joining us through via online mode. So we will be requesting her to kindly share the insights, how this program will help them in achieving the RMNC services, strengthening the services. Good morning to everyone. Myself, State Program Officer of RCH Portal. Madam is Project Director Uma Buggi. Madam is in one meeting. That's why Madam told me thank for select the Karnataka. Convey the thanksgiving message to the dignitaries on behalf of Karnataka. From Karnataka, we have joined from that is the project director and maternal health and ASHA state program officer and deputy director of immunization and child health program officer and family welfare officers all are joined from Karnataka. Actually, the audio of MH and immunization and ASHA program had circulated with the our program officer. They have noted few changes that will be shared with your team. Kindly do the needful for the effective messages for pregnant woman and child. And we would like to thank the ministry team who had organized the today's workshop virtually. It was really helpful. Thank you all once again from the Karnataka state for the support in making a launch of grand success of Kilkari and Mobile Academy. Kilkari and Mobile Academy program is very useful. The prevent the IMR, MMR, and high risk pregnant women and anemia, and in time vaccination. And Mobile Academy is the boost up Asha's knowledge and improve their ability of learning for Ashas with practical knowledge and support their field activities. These are all very important. Thank you for giving opportunity. 5-10 minutes, our Uma Buggi Madam, Project Director, is joining, sir. Thank you for all. Thank you so much, ma'am, for joining us via online and sharing your really proactiveness in launching this, like rollouting in this program in your state.
Thank you so much. Now I would request Dr. Aparna Hegde, founder and chairperson of ARMMAN, to share her remarks and first-hand insights on implementing Kilkari and Mobile Academy program in the states and UTs. Thank you so much. And I'm so grateful to be in the presence of wonderful dignitaries like Professor Major General Atul Kotwal sir, Meera Srivastava ma'am, Singh sir, Maurya sir, and Nikhil, with whom we work very closely, Nikhilji, and the dignitaries here from the states. You know, it's an absolute honor for ARMMAN to work with the Ministry of Health and Family Welfare to implement these programs, because I come to this from a very, very personal experience. So I am a practicing urogynecologist, a professor of urogynecology in Mumbai and also in Delhi. I have a center in Delhi. But ARMMAN started from my experiences during residency in Mumbai. So I did my residency in Sion Hospital, which is one of the largest tertiary hospitals in India. And 70% of the women and children who ended up in Sion Hospital were high risk and severely high risk. You know, the kind of stories I have seen, it really, you know, told me very clearly that most of the deaths that women and children faced were completely preventable. If only women had access to the right information at the right time. If only health workers were trained to provide the care required at the right time. I'll recount a personal story, you know, and actually one of the milder stories. You know, it was an emergency day, and a patient called Rupa came convulsing in pregnancy-induced hypertension. And I was the, you know, first poster there. And when I opened her papers, you know, I saw that she had come in 3rd month of pregnancy, and I had seen her. It was my handwriting there. And then she never came back. Sion Hospital was a hospital where we would have 300, 400 patients waiting outside, some 5 or 6 of us manning the OPD in 2 hours. There was absolutely no time to even look at their face, forget giving them any counseling information, telling them of the danger signs, what are the possible complications, why they needed to come back for regular care. And Rupa, you know, she'd come in 3rd month and then obviously waiting for 4 or 5 hours just to get a minute with me. She never came back. And she was convulsing in pregnancy-induced hypertension, and she died in my presence. And death is extremely slow. You know, it is terrible when you see a patient dying and they've already passed that stage. It's a long process, and you know, these you know, instances, you know, wrapped me with guilt. You know, I was tormented with guilt. Like, what could we do to inform these women better about how to take care of themselves and their children? Such young women dying in these, you know, horrific circumstances. And the same thing in rural India, right? The ASHA worker obviously does not have that amount of time and counseling time, you know, training required to counsel when, you know, needed. And seeing this over and over again, I realized that we have to work at a systemic level. It is not enough to do heroics in government hospitals. It's very important to go into the community to do 2 things. One, inform women very regularly, handhold them through pregnancy and infancy, so they're aware of what care to take at a particular point in time. It is not just enough to give them 4 or 5 information pieces at the beginning when they come, or once a month, even if you are able to do that. It's so important to handhold them weekly, because pregnancy and infancy are dynamic phases. Things change week to week. So important to know what to do in that particular week. And very important to reinforce very important information from the past. So iron supplementation, it's so important to keep on handholding them for the whole period that they're supposed to take iron supplementation. It is so important to also handhold them for what is coming in the future. So they're supposed to undergo an ultrasound 20th week of pregnancy. 16th week onwards, you're supposed to tell them, please come back because you need to undergo this ultrasound for this particular reason, right? So it is so important to do that in a systemic way. And on the other hand, it is so important to train health workers at every level of health system, the ASHA, the ANM, the medical officer, and the specialist, to be able to give the kind of care required early enough. And given the scale of India's problems, the magnitude is so huge, it is so important to have scalable solutions. Those days in before 2008, we had traditional models, right? You know, where you would go home to home and talk to the women. The NGO sector would do that. And it is so important to have scalable solutions, which are cost effective and accessible to every woman and health worker directly in their homes, wherever they were. And that's when the mobile phone came to India and spread through the country like wildfire. I still remember I was in Karnataka. I'm so happy to see the program to go to Karnataka. I'm a Kannadiga, but born and brought up in Mumbai. And the idea of ARMMAN actually came to me in Karnataka in a place called Kumta. You know, I had gone to visit my relatives, and there was this Gaudti, you know, tribal woman.
and she was using her mobile phone to call up her next employer to tell her that I'm going to be late. I suddenly realized if a Gaurti has a phone in her hand, is using it to call her employer, it must be in the hands of most, the women and health workers that I want to reach. And that's when the idea of, creating mHealth-based solutions came into being. And it is one important thing was that not only that you use mHealth, you have to have something called as tech plus touch approaches. So, you use technology to reach across to women more often than is possible through traditional models, both women and health workers weekly. But also, you have to have those touch points for enrollment, for feedback, for two-way communication, etc. And that's why the tech plus touch approach of ARMMAN came into being. Second very important point I realized is you cannot build a parallel infrastructure. ARMMAN can't build a whole network of health workers in the field. You have to work with the government. India has a fantastic public health infrastructure. There's no country in the world that has this kind of reach, spread, staff working in the health sector of the government of India, providing free care. It is so important to strengthen that system because I am a product of that system. Right, I'm a professor right now in KMA Hospital. I built India's first department of urogynecology. I work every day in a government hospital. So I know how beautifully the system can work, for everybody. So it is so important to strengthen that system and not build your own parallel network. So ARMMAN works on those principles of tech plus touch and working with government health systems. And obviously those days we had no connection to the government. So the first thing we did was to start a program called mMitra. mMitra is a proof of, the service, like the, voice calling service can work. So mMitra was a free voice calling service that sent time and targeted preventive care information directly to the phones of the enrolled women in the chosen time slot and language preference. So we had, 3 tries for every message in a chosen time slot, language preference, a missed call system if the woman had missed all the 3 tries, and a call center to answer queries. And in a matter of years, it reached 3 million women. And we're so grateful that in 2018, the government of India, asked us to come and, collaborate with them on Kilkari and Mobile Academy. It was the 2 twins of the dream I always had. On the one hand, reach women at scale, and the other hand, train health workers. And no scale is possible with the government of India's collaboration, right? So we are very, very grateful that we got a chance in 2019 to, work with the government of India to take over and innovate and work with them to implement the program through the country. We're really, really hopeful that, not only that we expand through the country by this financial year end, we are already at 22 states, with Karnataka, it comes to 21 states, and 18 states for Mobile Academy. But our whole hope is that we meet the women where they are now. We all know that women now imbibe information through multimedia content on WhatsApp, they go on YouTube, etc. So it is so important that we go ahead and meet the women where they are now, because if you look at data, almost 50-70% of households do have access to smartphones. So we can meet them where they are. Secondly, it is so important that we have content that is gender transformative. I'm so happy that Sir spoke about gender transformative content. It is so important to involve the husband in the care of the woman, that both of them are responsible for the care of the husband and the the mother and the child. So looking forward to working Ministry of Health and Family Welfare to take the programs forward. And one last thing I want to say is about, working with the states. Health is state subject, and it's so important that these programs get assimilated within the state in a manner that there is improved review processes, accountability, and also improved data. So we really look forward to working with the states to improve the RCH data and also ensure increased enrollment and improved review processes, and also ensure that data, goes back to the health system at every level. Analyzed data goes to the ASHA, to the, ASHA supervisor, the district officials, the taluka officials, so they can monitor the programs better. So we're really looking forward to working with all of you. Thank you for this opportunity. Thank you. Thank you, ma'am, for sharing your insights and the kind of work which ARMMAN is doing in improving people's lives, and the suggestions which make about the data and the role data can play in easing the work of the health workers. So now we would proceed ahead with the launch of Kilkari and Mobile Academy programs in 3 states and UTs: Karnataka, Goa, Dadra, Nagar, and Daman and Diu. So maybe now request the dignitaries to mark the official launch of Kilkari and Mobile Academy in the respective states by pressing the button, please.
नमस्ते दीदी, मैं हूँ डॉक्टर अनीता। आज मैं आपको भारत सरकार की किलकारी मोबाइल सेवा के बारे में बताने आई हूँ। यह निशुल्क सेवा उन महिलाओं के लिए है जो कम से कम 4 महीने की गर्भवती है या जिनके 1 साल से छोटा बच्चा है। किलकारी गर्भवती महिलाओं और माओं के लिए एक सखी समान है। क्या सोच रही हैं? कैसे? अभी बताती हूँ। गर्भवती महिला किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आशा दीदी या एएनएम दीदी के पास अपना पंजीकरण करवाती है। जब पंजीकरण में गर्भवती महिला अपना नाम, उम्र, कहाँ रहती है, मोबाइल नंबर, संभावित डिलीवरी की तारीख आदि बताती है, तो सारी जानकारी सरकारी आरसीएच रजिस्टर में दर्ज हो जाती है। अब अगर महिला के गर्भ का चौथा महीना शुरू हो चुका हो या 1 साल से छोटा बच्चा हो, तो किलकारी सेवा अपने आप उसके मोबाइल फोन पर शुरू हो जाती है। इस सेवा में महिला के फोन पर हर सप्ताह एक कॉल आएगा। हमको यह पता है कि महिला के कितने महीने का गर्भ है या बच्चा कितने महीने का है, तो हम उसी हिसाब से हर सप्ताह माँ और बच्चे की सेहत से जुड़े संदेश भेजते हैं। तो ऐसे किलकारी बन जाती है एक सच्ची साथी जिसे फिक्र है गर्भवती महिला की और बच्चे की। मैं जो भी संदेश देती हूँ उसका मकसद है कि महिलाओं को उनकी गर्भावस्था, उनके और उनके बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में एकदम सही और सटीक जानकारी मिले। तो पता चला ना, महिलाओं के लिए किलकारी सेवा को अपने मोबाइल पर शुरू करवाना कितना जरूरी है, ताकि हर सप्ताह वो संदेश सुन सके। बस इसीलिए इस जरूरी सेवा को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार को आपकी मदद की जरूरत है। आपके सहयोग के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Now I would request Director General Statistics Shri Kal Singh to give a keynote address to the gathering, please. जनरल अतुल कोटवाल जी, डॉक्टर अपर्णा हेगड़े and Miss Meera Srivastava, Joint JSRCH, Rakesh Moria, DDG States, Dr. KK Tripathi, Economic Advisor, Ms. Reena Singh, CD States, officers and officials from Ministry and State and UTs. A very good morning, all of you. I extend my warm welcome to all of you. The officers sitting on the dais have already provided an overview of the program. So I will avoid reiterate the details. However, I would like to emphasize that improving maternal and child health and their survivals are central to the achievement of national health goal under national health missions. SDG goal 3, good health and well-being, also include the focus on reducing
maternal, newborn, and child mortality. Kilkari and Mobile Academy present the transformative power of mobile technologies in the field of health communication and education. By addressing information gaps and enhancing the capabilities of the health workers, these programs play a crucial role in improving the maternal and child health outcomes across India. The call made under KMA have been helpful to mothers and families in the states due to its uniqueness in nature. This information provided through audio messages and helpful in terms of anti and postnatal care as well as nutrition. The messages are helpful in giving timely information to beneficiary about the appropriate healthcare service. Kilkari program is also complemented the work of ASHA in mobilizing beneficiary to assess health service and reduce the burden on them. Continuing Kilkari support to families had lead to change in the behavior of and improve service utilizations. It also proved useful during the pandemic when it was difficult to hold the physical visit and awareness campaign to encourage healthcare seeking behavior. This program will also contribute to achieve SDG target of MMR and IMR. Their success underscore the improvement of leveraging technology to effective reach to the empowered communities. Together, Kilkari and Mobile Academy create a comprehensive ecosystem for health education. Kilkari engage and inform parents directly, while Mobile Academy equips health workers with the knowledge and skill to effectively deliver the information and provide essential support to the family. Through these efforts, we aim to boost health literacy, positive health behaviors, and ultimately contributes to the reduction of maternal and informal mortality rates. I am happy to announce that Ministry is planning to launch Kilkari program in northeast states, Meghalaya, Manipur, Mizoram, and Arunachal Pradesh in the month of November-December 2024 in two languages. As we engage in today's discussion, let's focus on how we can further optimize these tools to strengthen health education and support within our communities. Thank you for your participation and look forward to your collaboration efforts in this critical area. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.
Thank you, sir, for the kind insights and words. So now I would request Joint Director MMP Cell, Shri Nikhil Kumar Agarwal, to please give vote of thanks to the participants, please. Thanks. Thanks, Nishant. Respected Director General Statistics Sri Kal Singh sir, ED NHSRC Major General Professor Atul Kotwal sir, Joint Secretary RCH Meera Srivastava Madam, DDG Statistics Sri Rakesh Moria sir, Founder Chairperson and Managing Trustee ARMMAN Foundation Dr. Aparna Hegde Madam, and all other senior project director from the government of Karnataka and all other senior officials of central and state government colleagues and distinguished guests. An event cannot be concluded unless and until we express our gratitude to all those who have spared their valuable time to attend this workshop. संस्कृत में कहावत है, कृतज्ञता एव शिष्टाचारस्य उत्तम तमम रूपम अस्ति, meaning gratitude is the most exquisite form of courtesy. Hence, I consider it as my privilege to extend my vote of thanks on behalf of Statistics Division, Ministry of Statistics and Ministry of Health and Family Welfare. My apologies. And to all distinguished participants of the national workshop on Kilkari and Mobile Academy. First of all, I would like to express our gratitude to DG sir for delivering a thought-provoking keynote address that set the tone for today's discussions and also inspire us today's workshop. I would like to thank ED NHSRC Major General Professor Atul Kotwal sir for highlighting how KMA is helping in capacity building of the frontline workers and empowering beneficiaries. Also, thanks for stressing upon the significance of the KMA program in facilitating behavioral changes in the field. Also, as highlighted by you, sir, the division would work towards further strengthening the program. I would thank Joint Secretary RCH Ms. Meera Srivastava Madam for gracing this event by her presence and sharing her thoughts on how KMA is slowly and steadily improving the maternal and child health and how ministry is leveraging technology for achieving the desired healthcare outcomes in terms of SDG targets. I would thank to the state government of Karnataka to join the workshop and share their thoughts on how KMA program will benefit their RCH goals. Also, I would like to express our gratitude to DDG Statistics, Sri Rakesh Kumar Moria sir, for giving an excellent background on Kilkari and Mobile Academy and setting the agenda for this workshop. And also thanks to Chairperson Managing Trustee ARMMAN Foundation, Dr. Aparna Hegde Madam, for her enthusiasm when it comes to improving the maternal and child health, and also stressing upon the significance of right information at the right time. I also thanks to our senior officials and representatives of various program divisions of the ministry who have come to attend this workshop. And I will be failing in my duty if I don't thank enough to our guests who have come from across all the states and UTs, without whose support this program, the objective of this workshop cannot be achieved, because they are the individual spokes who help support the wheel being invented by the ministry. Also, last but not the least, I would express my heartfelt thanks to the team in Statistics Division and the ARMMAN Foundation for their collaboration in organizing this event, without whose support this event could not have been a success. Thank you. I cannot thank everyone enough for their involvement and their willingness to take on the completion of various tasks. Once again, thank you for all your cordial cooperation. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. So now, before breaking for tea, we have a group photograph. So we request all the participants from the state to kindly come in the front so we can have a group photograph. Thereafter, we'll have a tea and assemble back in 30 minutes thereafter. Oh. नमस्ते दीदी, मैं डॉक्टर अनीता। आज मैं आपको भारत सरकार की किलकारी मोबाइल सेवा के बारे में बताने आई हूँ। यह निःशुल्क। I request all the participants from the stage, please come on the stage. या जिनके 1 साल से छोटा बच्चा है। किलकारी गर्भवती महिलाओं और माओं के लिए एक सखी समान है। क्या सोच रही है? कैसे? अभी बताती हूँ। गर्भवती महिला किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आशा दीदी या ANM दीदी के पास अपना पंजीकरण करवाती है।
जब पंजीकरण में गर्भवती महिला अपना नाम, उम्र, कहाँ रहती है, मोबाइल नंबर, संभावित डिलीवरी की Participants from the तारीख state can come in the front. If you can come on the dais also. दर्ज हो जाती है। अब अगर महिला के गर्भ का चौथा महीना शुरू हो चुका हो या 1 साल से छोटा बच्चा हो, तो किलकारी सेवा अपने आप उसके मोबाइल फोन पर शुरू हो जाती है। इस सेवा में महिला के फोन पर हर सप्ताह एक कॉल आएगा। हमको यह पता है कि महिला के कितने महीने का गर्भ है या बच्चा कितने महीने का, तो हम उसी हिसाब से हर सप्ताह माँ और बच्चे के साथ जुड़े संदेश भेजते हैं। तो ऐसे किलकारी बन जाती है एक सच्ची साथी, जिसे फिक्र है गर्भवती महिला की और बच्चे की। मैं जो भी संदेश देती हूँ उसका मकसद है कि महिलाओं को उनकी गर्भावस्था, उनके और उनके बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में एकदम सही और सटीक जानकारी मिले। तो पता चला ना, महिलाओं के लिए किलकारी सेवा को अपने मोबाइल पर शुरू करवाना कितना जरूरी है, ताकि हर सप्ताह वो संदेश सुन सके। बस इसीलिए इस जरूरी सेवा को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार को आपकी मदद की जरूरत है। आप 3 महत्वपूर्ण काम करके हमारी मदद कर सकती हैं। पहली मदद तो आप यह कर सकती हैं कि महिलाओं की गर्भावस्था और बच्चे के जन्म का पंजीकरण सही समय पर हो। इससे यह होगा कि सारी जानकारी सरकारी सिस्टम में सही समय पर जमा हो जाए और किलकारी सेवा महिलाओं के मोबाइल पर सही समय पर शुरू हो पाएगी। इसके लिए आपको खास ध्यान देना होगा कि महिला आपको अपना सही मोबाइल नंबर दे, नहीं तो किलकारी संदेश उन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर महिला के पास अपना खुद का मोबाइल नहीं है, तो वह परिवार के किसी दूसरे सदस्य का मोबाइल नंबर दे सकती है, जिसके साथ वह रहती है और जिसका फोन आसानी से कॉल सुनने के लिए ले सकती है। भारत सरकार की दूसरी मदद आप यह कर सकती हैं कि जब कोई महिला आपके पास अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण करवाने आए, तो आप उसे किलकारी सेवा के और उसके फायदों के बारे में जरूर बताएं। उसको बताएं कि भारत सरकार की किलकारी सेवा से हर सप्ताह एक कॉल आएगा, जिसमें उसकी स्वस्थ और सुरक्षित गर्भावस्था के साथ साथ बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी बातें बताई जाएंगी। आप उसे ये जरूर कहें कि वह हर सप्ताह सारे कॉल्स पूरे के पूरे सुने, बीच में काटे नहीं। और अगर मन में कोई सवाल, शंका हो, तो आशा दीदी, एएनएम दीदी या डॉक्टर से बात करें। तीसरी मदद जो आपसे चाहिए वह यह है कि आप महिलाओं से कहें कि किलकारी सेवा के नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें, ताकि जब भी हर सप्ताह किलकारी सेवा से कॉल आए, उनको पता चल जाए। जल्दी से कॉल उठा के वह उसे पूरा सुने। किलकारी सेवा का नंबर है Thank you, everyone. 0124। Thank you, everyone. So we will assemble back in 30 minutes now. अगर कोई महिला किसी दिन समय पर कॉल नहीं उठा पाई या उसके मन में आए कि इस संदेश को दोबारा सुनना है, तो इसका भी इंतजाम है। बस उसे 144223 नंबर को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से मिलाना है और जितनी बार चाहे, जब चाहे संदेश को सुन सकती है, वो भी एकदम निशुल्क, एकदम फ्री। आइए इसे अपना मिशन बना लें कि हर गर्भवती महिला और 1 साल से छोटे बच्चे की मां के मोबाइल पर किलकारी सेवा चालू हो। आपके सहयोग के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दीदी, मैं हूँ डॉक्टर अनीता। आज मैं आपको भारत सरकार की किलकारी मोबाइल सेवा के बारे में बताने आई हूँ। यह निशुल्क सेवा उन महिलाओं के लिए है जो कम से कम 4 महीने की गर्भवती है या जिनके 1 साल से छोटा बच्चा है। किलकारी गर्भवती महिलाओं और माओं के लिए एक सखी समान है। क्या सोच रही हैं? कैसे? अभी बताती हूँ। गर्भवती महिला किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आशा दीदी या एएनएम दीदी के पास अपना पंजीकरण करवाती है। जब पंजीकरण में गर्भवती महिला अपना नाम, उम्र, कहाँ रहती है, मोबाइल नंबर, संभावित डिलीवरी की तारीख आदि बताती है,
तो सारी जानकारी सरकारी RCH रजिस्टर में दर्ज हो जाती है। अब अगर महिला के गर्भ का चौथा महीना शुरू हो चुका हो या 1 साल से छोटा बच्चा हो, तो किलकारी सेवा अपने आप उसके मोबाइल फोन पर शुरू हो जाती है। इस सेवा में महिला के फोन पर हर सप्ताह एक कॉल आएगा। हमको यह पता है कि महिला के कितने महीने का गर्भ है या बच्चा कितने महीने का है, तो हम उसी हिसाब से हर सप्ताह माँ और बच्चे की सेहत से जुड़े संदेश भेजते हैं। तो ऐसे किलकारी बन जाती है एक सच्ची साथी, जिसे फिक्र है गर्भवती महिला की और बच्चे की। मैं जो भी संदेश देती हूँ उसका मकसद है कि महिलाओं को उनकी गर्भावस्था, उनके और उनके बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में एकदम सही और सटीक जानकारी मिले। तो पता चला ना, महिलाओं के लिए किलकारी सेवा को अपने मोबाइल पर शुरू करवाना कितना जरूरी है, ताकि हर सप्ताह वो संदेश सुन सके। बस इसीलिए इस जरूरी सेवा को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार को आपकी मदद की जरूरत है। आप 3 महत्वपूर्ण काम करके हमारी मदद कर सकती हैं। पहली मदद तो आप यह कर सकती हैं कि महिलाओं की गर्भावस्था और बच्चे के जन्म का पंजीकरण सही समय पर हो। इससे यह होगा कि सारी जानकारी सरकारी सिस्टम में सही समय पर जमा हो जाएगी और किलकारी सेवा महिलाओं के मोबाइल पर सही समय पर शुरू हो पाएगी। इसके लिए आपको खास ध्यान देना होगा कि महिला आपको अपना सही मोबाइल नंबर दे, नहीं तो किलकारी संदेश उन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर महिला के पास अपना खुद का मोबाइल नहीं है, तो वह परिवार के किसी दूसरे सदस्य का मोबाइल नंबर दे सकती है, जिसके साथ वह रहती है और जिसका फोन आसानी से कॉल सुनने के लिए ले सकती है। भारत सरकार की दूसरी मदद आप यह कर सकती हैं कि जब कोई महिला आपके पास अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण करवाने आए, तो आप उसे किलकारी सेवा के और उसके फायदों के बारे में जरूर बताएं। उसको बताएं कि भारत सरकार की किलकारी सेवा से हर सप्ताह एक कॉल आएगा, जिसमें उसकी स्वस्थ और सुरक्षित गर्भावस्था के साथ साथ बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी बातें बताई जाएंगी। आप उसे ये जरूर कहें थोड़ा सा बढ़ा दो। फ्रेम चाहिए पूरा योगेश यार। अब जाओ मैं कर रहा हूँ, जाओ चुप चुप करो। स्क्रीन यहाँ से यूज करूंगा पीपीटी वाला। जी जी सर। पीपीटी है किधर, दिखा दो मेरे को स्क्रीन पर एक बार आप करके। ये ना बस चलो अब स्क्रीन पे। अच्छा आप वहां से दोगे तो फिर ही अपने आप स्क्रीन में डिस्प्ले में आ जाएगा। जी सर। बस ठीक है, गुड। इसको मिनिमाइज करके छोड़ दो, बंद मत करो। ये पीपीटी है ना? यही है मेरे को यहाँ से लेके आप नीचे जाओ, थोड़ा सा नीचे जाओ, फिर 8 नंबर स्लाइड तक चलानी है। 8 नंबर बस, तक यहाँ तक चलानी है मुझे। ठीक है, यहाँ तक चला कि वह हर सप्ताह सारे कॉल्स फिर इंट्रोड्यूस करेंगे ठीक है, मैं उसको बीच इनवाइट में कर देता हूँ। जब आप काटेंगे। आएंगे ना हाँ और उसको अगर finishing कर मन देंगे। में बस कोई 11:30 सवाल, वो तो launch शंका कर रहा हो, था, launch के लिए तो आशा बात दीदी करके जो ANM मैंने दीदी कर दिया। या डॉक्टर से बात करें।
तीसरी मदद जो आपसे चाहिए वह यह है कि आप महिलाओं से कहें कि किलकारी सेवा के नंबर अपने मोबाइल में सेव करें, ताकि जब भी हर सप्ताह किलकारी सेवा से कॉल आए उनको पता चल जाए, जल्दी से कॉल उठा के वह उसे पूरा सुने। किलकारी सेवा का नंबर है 0124 4451 660। अगर कोई महिला किसी दिन समय पर कॉल नहीं उठा पाए या उसके मन में आए कि इस संदेश को दोबारा सुनना है, तो इसका भी इंतजाम है। बस उसे 14423 नंबर को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से मिलाना है और जितनी बार चाहे जब चाहे संदेश को सुन सकती है, वो भी एकदम निशुल्क, एकदम फ्री। आइए इसे अपना मिशन बना लें कि हर गर्भवती महिला और 1 साल से छोटे बच्चे की मां के मोबाइल पर किलकारी सेवा चालू हो। आपके सहयोग के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दीदी, मैं हूं डॉक्टर अनीता। आज मैं आपको भारत सरकार की किलकारी मोबाइल सेवा के बारे में बताने आई हूं। यह निशुल्क सेवा उन महिलाओं के लिए है जो कम से कम 4 महीने की गर्भवती हैं या जिनके 1 साल से छोटा बच्चा है। किलकारी गर्भवती महिलाओं और माओं के लिए एक सखी समान है। क्या सोच रही हैं? कैसे? अभी बताती हूँ। गर्भवती महिला किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आशा दीदी या एएनएम दीदी के पास अपना पंजीकरण करवाती हैं। जब पंजीकरण में गर्भवती महिला अपना नाम, उम्र, कहाँ रहती है, मोबाइल नंबर, संभावित डिलीवरी की तारीख आदि बताती है, तो सारी जानकारी सरकारी RCH रजिस्टर में दर्ज हो जाती है। अब अगर महिला के गर्भ का 4था महीना शुरू हो चुका हो या 1 साल से छोटा बच्चा हो, तो किलकारी सेवा अपने आप उसके मोबाइल फोन पर शुरू हो जाती है। इस सेवा में महिला के फोन पर हर सप्ताह एक कॉल आएगा। हमको यह पता है कि महिला के कितने महीने का गर्भ है या बच्चा कितने महीने का है, तो हम उसी हिसाब से हर सप्ताह माँ और बच्चे की सेहत से जुड़े संदेश भेजते हैं। तो ऐसे किलकारी बन जाती है एक सच्ची साथी, जिसे फिक्र है गर्भवती महिला की और बच्चे की। मैं जो भी संदेश देती हूँ उसका मकसद है कि महिलाओं को उनकी गर्भावस्था, उनके और उनके बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में एकदम सही और सटीक जानकारी मिले। तो पता चला ना, महिलाओं के लिए किलकारी सेवा को अपने मोबाइल पर शुरू करवाना कितना जरूरी है, ताकि हर सप्ताह वो संदेश सुन सकें। बस इसीलिए इस जरूरी सेवा को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार को आपकी मदद की जरूरत है। आप 3 महत्वपूर्ण काम करके हमारी मदद कर सकती हैं। पहली मदद तो आप यह कर सकती हैं कि महिलाओं की गर्भावस्था और बच्चे के जन्म का पंजीकरण सही समय पर हो। इससे यह होगा कि सारी जानकारी सरकारी सिस्टम में सही समय पर जमा हो जाएगी और किलकारी सेवा महिलाओं के मोबाइल पर सही समय पर शुरू हो पाएगी। इसके लिए आपको खास ध्यान देना होगा कि महिला आपको अपना सही मोबाइल नंबर दे, नहीं तो किलकारी संदेश उन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर महिला के पास अपना खुद का मोबाइल नहीं है, तो वह परिवार के किसी दूसरे सदस्य का मोबाइल नंबर दे सकती है, जिसके साथ वह रहती है और जिसका फोन आसानी से कॉल सुनने के लिए ले सकती है। भारत सरकार की दूसरी मदद आप यह कर सकती हैं कि जब कोई महिला आपके पास अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण करवाने आए, तो आप उसे किलकारी सेवा के और उसके फायदों के बारे में जरूर बताएं। उसको बताएं कि भारत सरकार की किलकारी सेवा से हर सप्ताह एक कॉल आएगा, जिसमें उसकी स्वस्थ और सुरक्षित गर्भावस्था के साथ साथ बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी बातें बताई जाएंगी। आप उसे ये जरूर कहें कि वह हर सप्ताह सारे कॉल्स पूरे के पूरे सुने, बीच में काटे नहीं। और अगर मन में कोई सवाल, शंका हो, तो आशा दीदी, एएनएम दीदी या डॉक्टर से बात करें। तीसरी मदद जो आपसे चाहिए वह यह है कि आप महिलाओं से कहें कि किलकारी सेवा के नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें।
ताकि जब भी हर सप्ताह किलकारी सेवा से कॉल आए, उनको पता चल जाए, जल्दी से कॉल उठा के वह उसे पूरा सुन ले। किलकारी सेवा का नंबर है 0124-4451-6660। अगर कोई महिला किसी दिन समय पर कॉल नहीं उठा पाई या उसके मन में आए कि इस संदेश को दोबारा सुनना है, तो इसका भी इंतजाम है। बस उसे 14423 नंबर को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से मिलाना है और जितनी बार चाहे, जब चाहे संदेश को सुन सकती है, वो भी एकदम निशुल्क, एकदम फ्री। आइए इसे अपना मिशन बना लें कि हर गर्भवती महिला और 1 साल से छोटे बच्चे की मां के मोबाइल पर किलकारी सेवा चालू हो। आपके सहयोग के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दीदी, मैं हूँ डॉक्टर अनीता। आज मैं आपको भारत सरकार की किलकारी मोबाइल सेवा के बारे में बताने आई हूँ। यह निशुल्क सेवा उन महिलाओं के लिए है जो कम से कम 4 महीने की गर्भवती हैं या जिनके 1 साल से छोटा बच्चा है। किलकारी गर्भवती महिलाओं और माओं के लिए एक सखी समान है। क्या सोच रही हैं? कैसे? अभी बताती हूँ। गर्भवती महिला किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आशा दीदी या एएनएम दीदी के पास अपना पंजीकरण करवाती हैं। जब पंजीकरण में गर्भवती महिला अपना नाम, उम्र, कहाँ रहती है, मोबाइल नंबर, संभावित डिलीवरी की तारीख आदि बताती है, तो सारी जानकारी सरकारी RCH रजिस्टर में दर्ज हो जाती है। अब अगर महिला के गर्भ का 4था महीना शुरू हो चुका हो या 1 साल से छोटा बच्चा हो, तो किलकारी सेवा अपने आप उसके मोबाइल फोन पर शुरू हो जाती है। इस सेवा में महिला के फोन पर हर सप्ताह एक कॉल आएगा। हमको यह पता है कि महिला के कितने महीने का गर्भ है या बच्चा कितने महीने का है, तो हम उसी हिसाब से हर सप्ताह माँ और बच्चे की सेहत से जुड़े संदेश भेजते हैं। तो ऐसे किलकारी बन जाती है एक सच्ची साथी, जिसे फिक्र है गर्भवती महिला की और बच्चे की। मैं जो भी संदेश देती हूँ, उसका मकसद है कि महिलाओं को उनकी गर्भावस्था, उनके और उनके बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में एकदम सही और सटीक जानकारी मिले। तो पता चला ना, महिलाओं के लिए किलकारी सेवा को अपने मोबाइल पर शुरू करवाना कितना जरूरी है, ताकि हर सप्ताह वो संदेश सुन सकें। बस इसीलिए इस जरूरी सेवा को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार को आपकी मदद की जरूरत है। आप 3 महत्वपूर्ण काम करके हमारी मदद कर सकती हैं। पहली मदद तो आप यह कर सकती हैं कि महिलाओं की गर्भावस्था और बच्चे के जन्म का पंजीकरण सही समय पर हो। इससे यह होगा कि सारी जानकारी सरकारी सिस्टम में सही समय पर जमा हो जाएगी और किलकारी सेवा महिलाओं के मोबाइल पर सही समय पर शुरू हो पाएगी। इसके लिए आपको खास ध्यान देना होगा कि महिला आपको अपना सही मोबाइल नंबर दे, नहीं तो किलकारी संदेश उन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर महिला के पास अपना खुद का मोबाइल नहीं है, तो वह परिवार के किसी दूसरे सदस्य का मोबाइल नंबर दे सकती है, जिसके साथ वह रहती है और जिसका फोन आसानी से कॉल सुनने के लिए ले सकती है। भारत सरकार की दूसरी मदद आप यह कर सकती हैं कि जब कोई महिला आपके पास अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण करवाने आए, तो आप उसे किलकारी सेवा के और उसके फायदों के बारे में जरूर बताएं। उसको बताएं कि भारत सरकार की किलकारी सेवा से हर सप्ताह एक कॉल आएगा, जिसमें उसकी स्वस्थ और सुरक्षित गर्भावस्था के साथ साथ बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी बातें बताई जाएंगी। आप उसे ये जरूर कहें कि वह हर सप्ताह सारे कॉल्स पूरे के पूरे सुने, बीच में काटे नहीं। और अगर मन में कोई सवाल, शंका हो, तो आशा दीदी, एएनएम दीदी या डॉक्टर से बात करें। तीसरी मदद जो आपसे चाहिए वह यह है कि आप महिलाओं से कहें कि किलकारी सेवा के नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें, ताकि जब भी हर सप्ताह किलकारी सेवा से कॉल आए, उनको पता चल जाए, जल्दी से कॉल उठा के वह उसे पूरा सुन ले। किलकारी सेवा का नंबर है
012444516660। अगर कोई महिला किसी दिन समय पर कॉल नहीं उठा पाई या उसके मन में आए कि इस संदेश को दोबारा सुनना है, तो इसका भी इंतजाम है। बस उसे 14423 नंबर को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से मिलाना है और जितनी बार चाहे, जब चाहे संदेश को सुन सकती है, वो भी एकदम निशुल्क, एकदम फ्री। आइए इसे अपना मिशन बना लें कि हर गर्भवती महिला और 1 साल से छोटे बच्चे की मां के मोबाइल पर किलकारी सेवा चालू हो। आपके सहयोग के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दीदी, मैं हूं डॉक्टर अनीता। आज मैं आपको भारत सरकार की किलकारी मोबाइल सेवा के बारे में बताने आई हूं। यह निशुल्क सेवा उन महिलाओं के लिए है जो कम से कम 4 महीने की गर्भवती हैं या जिनके 1 साल से छोटा बच्चा है। किलकारी गर्भवती महिलाओं और मांओं के लिए एक सखी समान है। क्या सोच रही हैं? कैसे? अभी बताती हूँ। गर्भवती महिला किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आशा दीदी या एएनएम दीदी के पास अपना पंजीकरण करवाती हैं। जब पंजीकरण में गर्भवती महिला अपना नाम, उम्र, कहाँ रहती है, मोबाइल नंबर, संभावित डिलीवरी की तारीख आदि बताती है, तो सारी जानकारी सरकारी आरसीएच रजिस्टर में दर्ज हो जाती है। अब अगर महिला के गर्भ का 4था महीना शुरू हो चुका हो या 1 साल से छोटा बच्चा हो, तो किलकारी सेवा अपने आप उसके मोबाइल फोन पर शुरू हो जाती है। इस सेवा में महिला के फोन पर हर सप्ताह एक कॉल आएगा। हमको यह पता है कि महिला के कितने महीने का गर्भ है या बच्चा कितने महीने का है, तो हम उसी हिसाब से हर सप्ताह माँ और बच्चे की सेहत से जुड़े संदेश भेजते हैं। तो ऐसे किलकारी बन जाती है एक सच्ची साथी, जिसे फिक्र है गर्भवती महिला की और बच्चे की। मैं जो भी संदेश देती हूँ, उसका मकसद है कि महिलाओं को उनकी गर्भावस्था, उनके और उनके बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में एकदम सही और सटीक जानकारी मिले। तो पता चला ना, महिलाओं के लिए किलकारी सेवा को अपने मोबाइल पर शुरू करवाना कितना जरूरी है, ताकि हर सप्ताह वो संदेश सुन सकें। बस इसीलिए इस जरूरी सेवा को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार को आपकी मदद की जरूरत है। आप 3 महत्वपूर्ण काम करके हमारी मदद कर सकती हैं। पहली मदद तो आप यह कर सकती हैं कि महिलाओं की गर्भावस्था और बच्चे के जन्म का पंजीकरण सही समय पर हो। इससे यह होगा कि सारी जानकारी सरकारी सिस्टम में सही समय पर जमा हो जाएगी और किलकारी सेवा महिलाओं के मोबाइल पर सही समय पर शुरू हो पाएगी। इसके लिए आपको खास ध्यान देना होगा कि महिला आपको अपना सही मोबाइल नंबर दे, नहीं तो किलकारी संदेश उन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर महिला के पास अपना खुद का मोबाइल नहीं है, तो वह परिवार के किसी दूसरे सदस्य का मोबाइल नंबर दे सकती है, जिसके साथ वह रहती है और जिसका फोन आसानी से कॉल सुनने के लिए ले सकती है। भारत सरकार की दूसरी मदद आप यह कर सकती हैं कि जब कोई महिला आपके पास अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण करवाने आए, तो आप उसे किलकारी सेवा के और उसके फायदों के बारे में जरूर बताएं। उसको बताएं कि भारत सरकार की किलकारी सेवा से हर सप्ताह एक कॉल आएगा, जिसमें उसकी स्वस्थ और सुरक्षित गर्भावस्था के साथ साथ बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी बातें बताई जाएंगी। आप उसे ये जरूर कहें कि वह हर सप्ताह सारे कॉल्स पूरे के पूरे सुने, बीच में काटे नहीं। और अगर मन में कोई सवाल, शंका हो, तो आशा दीदी, एएनएम दीदी या डॉक्टर से बात करें। तीसरी मदद जो आपसे चाहिए वह यह है कि आप महिलाओं से कहें कि किलकारी सेवा के नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें, ताकि जब भी हर सप्ताह किलकारी सेवा से कॉल आए, उनको पता चल जाए। जल्दी से कॉल उठा के वह उसे पूरा सुन ले। किलकारी सेवा का नंबर है 0124451660। अगर कोई महिला किसी दिन समय पर कॉल नहीं उठा पाई
या उसके मन में आए कि इस संदेश को दोबारा सुनना है, तो इसका भी इंतजाम है। बस उसे 14423 नंबर को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से मिलाना है और जितनी बार चाहे, जब चाहे संदेश को सुन सकती है, वो भी एकदम निशुल्क, एकदम फ्री। आइए इसे अपना मिशन बना लें कि हर गर्भवती महिला और 1 साल से छोटे बच्चे की मां के मोबाइल पर किलकारी सेवा चालू हो। आपके सहयोग के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दीदी, मैं हूँ डॉक्टर अनीता। आज मैं आपको भारत सरकार की किलकारी मोबाइल सेवा के बारे में बताने आई हूँ। यह निशुल्क सेवा उन महिलाओं के लिए है जो कम से कम 4 महीने की गर्भवती हैं या जिनके 1 साल से छोटा बच्चा है। किलकारी गर्भवती महिलाओं और माओं के लिए एक सखी समान है। क्या सोच रही हैं? कैसे? अभी बताती हूँ। गर्भवती महिला किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आशा दीदी या एएनएम दीदी के पास अपना पंजीकरण करवाती हैं। जब पंजीकरण में गर्भवती महिला अपना नाम, उम्र, कहाँ रहती है, मोबाइल नंबर, संभावित डिलीवरी की तारीख आदि बताती है, तो सारी जानकारी सरकारी आरसीएच रजिस्टर में दर्ज हो जाती है। अब अगर महिला के गर्भ का 4था महीना शुरू हो चुका हो या 1 साल से छोटा बच्चा हो, तो किलकारी सेवा अपने आप उसके मोबाइल फोन पर शुरू हो जाती है। इस सेवा में महिला के फोन पर हर सप्ताह एक कॉल आएगा। हमको यह पता है कि महिला के कितने महीने का गर्भ है या बच्चा कितने महीने का है, तो हम उसी हिसाब से हर सप्ताह माँ और बच्चे की सेहत से जुड़े संदेश भेजते हैं। तो ऐसे किलकारी बन जाती है एक सच्ची साथी, जिसे फिक्र है गर्भवती महिला की और बच्चे की। मैं जो भी संदेश देती हूँ, उसका मकसद है कि महिलाओं को उनकी गर्भावस्था, उनके और उनके बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में एकदम सही और सटीक जानकारी मिले। तो पता चला ना, महिलाओं के लिए किलकारी सेवा को अपने मोबाइल पर शुरू करवाना कितना जरूरी है, ताकि हर सप्ताह वो संदेश सुन सकें। बस इसीलिए इस जरूरी सेवा को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार को आपकी मदद की जरूरत है। आप 3 महत्वपूर्ण काम करके हमारी मदद कर सकती हैं। पहली मदद तो आप यह कर सकती हैं कि महिलाओं की गर्भावस्था और बच्चे के जन्म का पंजीकरण सही समय पर हो। इससे यह होगा कि सारी जानकारी सरकारी सिस्टम में सही समय पर जमा हो जाएगी और किलकारी सेवा महिलाओं के मोबाइल पर सही समय पर शुरू हो पाएगी। इसके लिए आपको खास ध्यान देना होगा कि महिला आपको अपना सही मोबाइल नंबर दे, नहीं तो किलकारी संदेश उन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर महिला के पास अपना खुद का मोबाइल नहीं है, तो वह परिवार के किसी दूसरे सदस्य का मोबाइल नंबर दे सकती है, जिसके साथ वह रहती है और जिसका फोन आसानी से कॉल सुनने के लिए ले सकती है। भारत सरकार की दूसरी मदद आप यह कर सकती हैं कि जब कोई महिला आपके पास अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण करवाने आए, तो आप उसे किलकारी सेवा के और उसके फायदों के बारे में जरूर बताएं। उसको बताएं कि भारत सरकार की किलकारी सेवा से हर सप्ताह एक कॉल आएगा, जिसमें उसकी स्वस्थ और सुरक्षित गर्भावस्था के साथ साथ बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी बातें बताई जाएंगी। आप उसे ये जरूर कहें कि वह हर सप्ताह सारे कॉल्स पूरे के पूरे सुने, बीच में काटे नहीं। और अगर मन में कोई सवाल, शंका हो, तो आशा दीदी, एएनएम दीदी या डॉक्टर से बात करें। तीसरी मदद जो आपसे चाहिए वह यह है कि आप महिलाओं से कहें कि किलकारी सेवा के नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें, ताकि जब भी हर सप्ताह किलकारी सेवा से कॉल आए, उनको पता चल जाए। जल्दी से कॉल उठा के वह उसे पूरा सुन ले। किलकारी सेवा का नंबर है 0124-4451-660। अगर कोई महिला किसी दिन समय पर कॉल नहीं उठा पाई या उसके मन में आए कि इस संदेश को दोबारा सुनना है, तो इसका भी इंतजाम है।
We are going to start the session in next 5 minutes. So requesting all the participants to please uh, come up, come back on in the hall. हटवा देंगे वो भी. Yes, sir. Yeah. So I request all the participants to please settle down and come back to their seats. We are going to start the session now. So the agenda of the workshop is as follows. The first session will be on importance of Kilkari and Mobile Academy. Then we will have a session on introduction and current status of Kilkari and Mobile Academy. And then a video with case stories on Kilkari beneficiaries will be played. And post-lunch, we'll have a session on best practices and innovations from states on Kilkari and Mobile Academy. This session will be taken by the state representatives themselves. And then we will have a session on demonstration of new MIS dashboard and features of Kilkari and Mobile Academy program. And the last session will be on future roadmap of Kilkari and Mobile Academy program. So we will now start with the session. So first session will be the presentation on importance of Kilkari and Mobile Academy program, which will be taken by Mr. Madhusudan from ARMMAN. So I kindly request Mr. Madhusudan to please present the session. And for this, I would request Dr. Aparna Hegde, Founder Chairperson ARMMAN, and Deputy Director General Sri Rakesh Kumar Moria sir to chair the session. Thank you, Jayashree. Thank you, Nishant. A very good morning to you all.
So my job is to basically set the context today, why we need Kilkari. So I have some statistics with me here, which I really want to present to you just to make sure that you understand now where is the gap in the entire system. Despite we do have a very robust, fairly designed health system, but still given that counts are so huge that definitely even our ASHAs and NMs try their level best. Obviously, some women are definitely going to be missed in some corners. So just look at some of the big stats India faces. 30 million pregnancies every year. These are all minus of all those which are basically treated as abortion and other parts. So just imagine the count. Then you have 25 million childbirth every year. And then we have some 1.05 million ASHAs across. Just look at the number. On an average, roughly 55 beneficiaries have to be catered by an ASHA on an average. If we can start considering that, can this ASHA really go to each of these households on a weekly basis? Is it possible? Just ask this question to yourself. Technically, the answer is no, she cannot. Now, if you start imagining even the geographical kind of the spread we have, probably there are remote hamlets everywhere. Now, imagine the ASHA moving to the household or the household moving to the ASHA. Both are somehow sounds a bit impractical given the volume and the spread. So that's why we say, probably that Kilkari is something where the messaging is much easier, reaches easily at each and every household, and probably the gap which really exists in the system because of the huge number of counts we have, probably Kilkari has the capacity to address. Look at the adoption of technology we all have seen, and even in the introductory session, we all have heard how really mobile phones in India have really made a difference. Today, practically every household has a phone now. Why can't we use technology to basically share these messages, which are really, really important and probably much needed at such an important time frame? So, considering all this, look at the scenario. ASHA and ANM can't reach each and every household every week. The lesser the contacts, obviously the chances of missing the important information is very, very high. Once the gap for information increases, the chances of adoption of any message via any untrusted source becomes very, very high. And this will increase the vulnerability. Probably people will start searching the internet or YouTube's, and sometimes there could be credible, sometimes there could be misleading information also, which can be adopted by the families. Obviously, the results are going to be very, very different. Again, absence of trusted information in the system, despite we have such a robust health system and we have such a huge penetration of mobile phones. Why can't we really make it useful so that all the mobile phones really turns into a kind of a messaging system which provides you all the credible information related to health, whatever you need at the time of importance, probably say midnight. Can an ASHA really come at home? Practically answer is no. But future Kilkari can probably bridge all these gaps. So this is why we are looking at Kilkari largely. Let's look at some of the why and how. So obviously Kilkari can provide you the timely and accurate information. It really serves as a reminder for all the RCS services which are being provided. So even if somebody really misses that, or somebody doesn't forget, aaj meri HSND hai, mujhe jana hai, probably Kilkari can really help in that way, because he constantly keeps on reinforcing that. On the how part of Kilkari, how can you really get it? Start reporting your pregnancy and childbirth as early as possible. Again, this is, some states are really doing very well. Some states really kind of have practically say a little slow, or probably it could be a lot of other complications such as women may not be reporting on time. So maybe those parts can be really looked up. Then share your correct details with your ASHA and ANM. If that is done, that's the starting point. Once you are done with that, obviously automatically you will start receiving a Kilkari call. And in case if there are any changes in your details, such as phone number has changed, just inform your ASHA and ANM. You are done with that. The moment your numbers are updated, again, you will continue to receive Kilkari, the way you have been receiving in past. So as I said, how to join?
It's mostly done, but again, some of the important informations are really needed here, such as like the LMP and DOB. These are very critical information. And if this is wrong, this can really lead to basically discontinuation of service by a user, or even sometimes they may not find Kilkari very useful. Obviously, they will receive a wrong message. And this is why probably states can start emphasizing on these components. While you ask your data team, your block managers, even your ANM and ASHAs, every meeting, every training should take an opportunity to educate them that the LMP and DOP has to be correct. And there should be large emphasis on, in case if there are mistakes, how do we really keep on rebuilding the system, informing ANM and ASHAs about all these parts, so that they continuously learn as a process and we keep on building our data. How Kilkari can make a difference? So obviously you have access to your weekly prioritized message. As I said earlier also, it's technically not possible for an ASHA to be there on a weekly basis. So obviously Kilkari does fills that large gap and also reduces the burden on ASHAs and ANMs. There is a step-by-step guidance when you start receiving Kilkari on a weekly basis. Every week, it's going to be basically guiding you what exactly has to be done and what you should really avoid. Dr. Anita's advice on do's and don'ts of pregnancy and childbirth, both are very clear, very sharp, and it's really doable. It can easily be practiced by every household. Finally, it connects the pregnant woman, mother and her family with ASHA and ANM. At the end of each message, it keeps on saying, अगर कोई बात समझ में ना आए तो अपनी आशा या एनएम दीदी से संपर्क कीजिए. The contacts are very crucial. And in my last 30 years of experience in the health sector, I've seen every time we have been focusing around these components. But still, this is a piece which really needs an improvement. Kilkari also emphasizes on that part, so that ASHAs and ANM are pivotal to the entire system and families can easily connect with them. And finally, it promotes the pregnant woman, mother and her family for regular checkups, which is most crucial. Even if you remember Dr. Aparna in her opening remarks, she has already said that how important it is if somebody misses and what could be the end result around that in case if somebody has really avoided these checkups. These are very, very crucial. So finally, what are the advantages? Primary information needs during critical periods is addressed. You will have access to information on a week-to-week basis. You don't have any dependency. It's a very simple call which comes to your phone. And even if you miss, there are so many attempts and reattempts to basically make sure so that the family doesn't deprive of any information, at least at this critical period. The information which we are sending out is trusted. As you all know, these are all the Kilkari information are being designed by the program divisions. These are all trusted information, and the same information is going to be told by your ASHA, NM, or even the doctors you meet at the CSC, PSC. Then it finally reminds you about all the weekly priorities so that you don't miss it out. We all know IFA has been a trouble for us, despite we have been providing a lot. People don't consume. Kilkari will try. Keep on bridging these kind of small practices which really need emphasis. Focus on adoption of reinforcement of correct behaviors. These are again something you hear but you don't practice. Kilkari will keep on coming back time to time, telling you about adoption of these practices. And finally, the supports the women and her family for necessary guidance during difficult times. As I said, even at times of difficulty, even at night, if you want to have a consultation, where do you go? But at least you can dial 14423 to have such important information. And obviously, future Kilkari will try to address some of the gaps which currently exist. I think that's all from setting the context. And the next session probably will talk a lot about it. Over to you, Jayshian. Thank you. Thank you, Madhusudan, for sharing insights about the Kilkari and Mobile Academy project and how it is helping the women and children in improving their health. And, so now the next session
will be on introduction and current status of Kilkari and Mobile Academy. This session will be taken by Saeed and Alankrit. I request both of them to please come. Good morning, all of you. Myself, Saeed. And I'm Alankrit Patnaik. So now we are going to present a brief presentation on Kilkari and Mobile Academy and the status of the program. I think most of the people are aware about on January 15, the Minister of Health and Family Welfare launched take a significant step under the Digital India Initiative and they launched two important health services, that is Kilkari and Mobile Academy. The services were designed to improve maternal health, child health across the country. Kilkari delivers audio message about the pregnancy, childbirth, and the child care, while Mobile Academy is an audio training course. It's aimed to empower frontline health workers with their knowledge and skills. The project followed a phase-wise launch to ensure a smooth and scalable national rollout of these services. Minister of Health and Family Welfare recently launched this two important program in some new states. So on 7 February 2024, the then Union Minister of State for Health and Family Welfare, Professor S.P. Singh Baghel, and Dr. Bharti Praveen Pawar virtually launched the Kilkari program in the state of Gujarat and Maharashtra. In continuation of the expansion of plan, today we have witnessed the launch of Kilkari in the state UTs of Karnataka, Goa, Dadra, Nagar, Haveli, and Daman and Diu. Now let's talk about the journey of the based on today's launch. So this project was originally started in Bihar, and these services is for frontline health workers and for pregnant women and new mothers. MoHFW efforts to improve maternal and child health across the country. Initially started in 6 states with 0.6 million beneficiaries in 2 languages, that is Hindi and Odia. Now Kilkari has now scaled up in 223 states, offering content in 10 languages and reaching approximately 5 million weekly beneficiaries. Under Kilkari 2.0, Ministry of Health and Family Welfare includes more topics like nutrition, sanitation, and mental health program. Now let's talk about what is Kilkari. Kilkari is an outbound service that delivers weekly time-appropriate audio multimedia messages about pregnancy, childbirth, and child care directly to families' mobile phone through iWireless technology. It covers the critical time period when most deaths occur from the second trimester of pregnancy until the child is 1 year old. It delivers one pre-recorded IVR per week directly to the mobile phone, and mothers with children under the age of 1 year. So it's covered total 72 message. And KMA program is integrated with MoHFW's centralized RCS portal. This is the only source of information that for these ML services. Kilkari is free service to the pregnant women and the mothers. While the beneficiary receive the call by this number of 0124 4451 660. If the beneficiary want to re-listen the message, she has to dial 14423. And MoHFW is planning to scale up this program by 2025 in all states and UTs. Now let's learn about the journey of beneficiary. Once pregnant woman or a new mother registered for pregnancy in the RCS portal, then she becomes a beneficiary in the RCS portal. And from RCS portal, her information is shared with the KMA portal. Kilkari beneficiary receive weekly calls on the registered mobile number from the second trimester of pregnancy until the child turns into 1 year of age. However, beneficiary who consistently do not engage with Kilkari calls due to low listenership, missed call, or self-deactivation are deactivated based on the system criteria.
So the term graduation refers to the completion of the Kilkari journey. Now, how to access Kilkari? Here, I'm like to focus on last 3 points. If a woman misses her weekly call, the IVR system automatically turns to call her 3 times on the same day and then twice for the next 3 days. And beneficiary can be deactivated if they don't listen regularly to a Kilkari calls 6 weeks. Alternatively, if a woman misses a weekly call from Kilkari or want to re-listen the Kilkari message, she can dial 14423 to re-listen the message again. So all the information, all the content covers all the key areas like maternal health, child health, family planning, and immunization. Now further trials will take by Alankit. Thank you, Saji. So I'll be just briefing you about the Mobile Academy. What is Mobile Academy course all about? So it's a mobile-based training audio course, which is based on the various thematic areas such as the reproductive, neonatal, maternal, and child health, which is designed specifically for the ASHAs to help them refresh the knowledge and skills on the preventive health behaviors. So the intention is to improve the quality of their engagement with the beneficiaries so that they are able to guide them on real time whenever they go on to the field visits. They're able to impart the knowledge to the beneficiaries and also to their families. So in terms of flexibility, how these ASHAs can access the Mobile Academy course is that they simply have to dial a short code, which is 14424, provided by the Ministry of Health and Family Welfare. So they dial this short code and they can access all the contents related to the Mobile Academy course. So what is the importance like? ASHAs, they can simply access all the contents at their own ease from any place at any point of time. So that is the convenience that is being provided to the ASHAs on the go. And in terms of scalability of Mobile Academy course, so currently Mobile Academy is operational in 17 states and UTs, and it is successfully running in 6 different languages, which are Hindi, Bengali, Bhojpuri, Odia, Assamese, and Telugu. Now, a little bit more information about the Mobile Academy course. So as I've already mentioned, the ASHAs can dial the short code 14424, and the total duration of this Mobile Academy course is of 4 hours, and it consists of 11 chapters, wherein each chapter further has got 4 lessons in it. So therefore, 11 chapters multiplied by 4 lessons, in total 44 lessons. So let's say the ASHA completes one particular chapter. At the end of the chapter, there are 4 quiz questions. So there are 2 possible options for the ASHAs to choose. Either it's wrong or yes, and then subsequently she can move ahead with the other questions. Now, once ASHA completes all those 11 chapters, they receive a digital certificate on their mobile through the SMS link. And let's say if they have successfully completed all the 11 chapters, and they score 50% or more. So they either receive the certificate when they are placed at the health facility, or they, as I mentioned, they receive a link on their SMS to download that certificate. But what is the aim behind issuing these certificates by the Government of India to these ASHAs is to actually help build her confidence, to give them a sense of accomplishment that yes, they are skilled enough to be able to guide those beneficiaries on the go whenever they go for a field visit. And Ministry of Health and Family Welfare has recently will be launching a newer version of this Mobile Academy course, where there'll be additional contents in this particular Mobile Academy course. So this is just a template of how the Mobile Academy certificate looks like, wherein there's the name of the ASHA, on which date she completed the course, the registered mobile number of the ASHAs, and then of course the signature of the authorized person. Coming to the key statistics of
the Kilkari and Mobile Academy program. So first I'll continue with the Kilkari. So a total of 5.3 Kilkari beneficiaries have been outreached till August 2024. Second is that 79% of the beneficiaries, they've answered at least one call. The third KPI that we'll be talking about is that more than 42% of the subscribers, they have listened to more than 50% of the call content. And last is that the average duration of this call content, which has been heard by the Ashas, sorry, by the beneficiaries, is about 53 seconds. About the key statistics of Mobile Academy. So about 56% of Ashas, they have started the course. And out of those 56%, 81% of the Ashas have actually completed the course. The statistics are till August 2024. Coming to the right side, I'm talking about the Mobile Academy. So in states like Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Odisha, Rajasthan, Delhi, and Chhattisgarh. So in these states, more than 70% of the Ashas, they have started the course. And in states like Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Haryana, and Uttarakhand, more than 70% of the Ashas have actually completed the course. So again, coming to the key statistics, so like what are the insights that we have generated from this Mobile Academy and Kilkari program? So in particular over here, what we can see on the graph is the rejection rate percentage due to the reduction in the duplicate mobile numbers within the RCH folder. So what is happening here? Let me take an example of Bihar state over here. So we can see on the left side, the bar which is highlighted in blue color, the percentage is 96%. So these individual bar lines, these are basically the percentage of the rejection rate in every quarter for a particular financial year. So let's say 90, we see for Bihar, the rejection rate due to these duplicate mobile numbers, it has fallen down from 96% to 31%. So there's a significant decline of about 65% in the rejection rate because the RC system was made robust. There was less number of duplicate numbers, mobile numbers. Moving on to the next steps, the bar graph, what it represents is the mother pack initiation. So I'll just brief you, is just the overall percentage where more than 50% of the subscribers, they have started their Kilkari journey from the 5th month of their pregnancy. So if you see the orange line, the orange bar, starting from Odisha down to Rajasthan, that is what the overall percentage of 50% is being represented. And it is, say for example, I take the case of Odisha. On the topmost, we have the blue bar line. So that means those are the percentage of Kilkari subscribers who have actually started their Kilkari journey from the 4th month onwards. And likewise, if I move from left to the right for Odisha state, so that is we are moving from the 4th month to the 5th month to 6th month and likewise to the 9th month. So overall, it has been observed that more than 50% of the subscribers, they have actually started their Kilkari journey from the 5th month onwards. And about the statistics related to the percentage of Ashas who have completed the course and started the course. If I take the case of Andhra Pradesh state over here, on the left side, the blue bar, so about 93% of are the Ashas who have actually registered. They have started the course. And that orange bar for Andhra Pradesh representing 96%, that means these are the percentage of Ashas who have actually completed the course. And onto the last slide. So this was the observation through the Mobile Academy that there were average time spent for each of the Ashas based on the completion of the course. So the first statistics that was observed was that up to the average time that was spent by the Ashas was up to about 311 minutes.
And about 71% of the ASHAs, they took almost up to 300 minutes to complete the ASHA course. There were about 21% of the ASHAs who actually took time between 300 to 500 minutes. And the rest 8%, they took more than 500 minutes to complete the ASHA course. So we're done with this particular session. So any state, if anyone has any questions on this presentation. Thank you, Saeed and Alankrit, for such an elaborate presentation and these interesting charts showing the progress of Kilkari and Mobile Academy in the states. So now I request the chair to share their remarks on the progress and the way forward. So first we have any question from the participants, then chair can summarize all this thing. If Any questions or any comment from the states? Please share. So, So thank you so much for a wonderful introduction to the program, both Kilkari and Mobile Academy, and also on telling us the journey of Kilkari Mobile Academy and how far we've reached. And from this data, it's so very obvious that we have to work. I mean, much has been done till now, but we really have a lot to do going forward. It's so important to work with the states to ensure that more and more women and more ASHAs have access to these programs. And the one way we can do it is to really improve data. Right? If the RCS data improves, not only should the quality of data improve, but also there should be early enrollment because it's so important. It's encouraging the 50% of women, enroll into Kilkari in the 5th month of pregnancy. But if we can get that down to 4th month, I understand the first 3 months of pregnancy, people don't want to reveal that they're pregnant. But if we can get them in the 4th month, it'll be really, really important because as a doctor personally, I realize that iron supplementation is so important in the 4th month of pregnancy in a country where anemia is so, such a huge problem. So if we can all work together to ensure that data quality improves and we can get early enrollment, all the women, and then can get onto the ASHA portal earlier, we will see much significant, much more improvement in the data. And hopefully we can see that next year. So, but thank you for the wonderful talks and we really hope to work with the states on this. thank you, madam. Just before this, as you all know that for improving the maternal and child health, the government of India is taking the various initiatives, not from today. It has already started journey from the 2000 onwards. But despite initiatives taken by the government of India, these initiatives and benefits has to reach to the health facilities as well as to the beneficiary. But there is a huge gap between the beneficiary and the health facilities. For that, ANM and ASHA, when we launched the National Rural Health Mission in 2005, that we have initiated the concept of to recruit the ASHA to bridge the gap between the health facilities and the beneficiary. For that, at least beneficiary should know that what kind of benefits and what kind of initiatives is already taken by the government for the benefit of the people. So what are the initiatives, what are the benefits, what are the schemes for which the government of India is taking a huge efforts to improve the maternal and child and as well as others dimensions of the health. The ASHA and ANM plays a critical role to bridge these gaps and also to create the awareness among the beneficiaries to avail the health facilities available to avail the various health facilities at least available in the health different level of the health facilities. For this purpose, over the period of time,
the improvement has been taken, improvement has been made, overall improvement in the RCH and overall improvement of the health status over the period of time. So that as you have already seen, in the 2000 MMR was more than 400, but over the period of time, several initiatives taken by the government, it has reduced to around 120 MMR, as well as in some as well as in terms of the IMR and the child and in IMR and the child mortality, this has also reduced over the period of time. But when this Kilkari Mobile Academy has taken over in 2009 in collaboration with the ARMMAN Foundation, so this has certainly improved the overall outcomes of the RCH activities. But over the period of times, I have seen at the ground level, because of RCH, the major data source for the KMA is the RCH database, which is very old. During my field visit, I have seen some of the beneficiary and ASA have received the 1 or 2 times calls from the KMA, because of at present the KMA is functioning on the physical server, and the RCH is very old architectures. Then the waiting time of the beneficiary ASHA, and there is a huge database on, because of KMA जो हमारा ऑलरेडी KMA का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अभी नहीं है कि जो पूरे होल बेनिफिशरीज को वो कॉल कर सके या फिर आशा को हम ऑन बोर्ड कर सके, तो वो देयर इज ए ह्यूज वेटिंग टाइम फॉर द आशा एज वेल एज द बेनिफिशरीज. बट now we are planning to migrate from the physical servers to the cloud server, so that all the waiting जो on hold beneficiaries and ashas हैं वो हम immediately इसको हम take over कर सकते हैं. वो hopefully we have already taken, and hopefully this exercise will be completed within 3-4 months on hold beneficiaries as well as ashas on the KMA. And my team has already shown some of the statistics in the the enrollment of the ASHA in the Mobile Academy in 2000. Like for example, if we take UP, Jharkhand and Bihar, it started in they have enrolled in 2096%. Rejection. In 2020 is the UP's rejection rate is 96, but over the period, over the 5 period, it has reduced from 96% to 67%. In Bihar, from 96% to 31%. This is certainly improvement has been made in the different states, but since the time duration for the Kilkari, we have feel that there is the call duration of the call durations of the Kilkari is very long, that we are planning to reduce the shortest version of the Kilkari messages, as well as for the Mobile Academy, for the whole course is requires 240 minutes. The ASHA has to complete the course, but on an average, it has shown that on an average is 311 minutes. In some cases, more than 400, and some cases in more than 500. That we have feel that we certainly have to reduce this time duration also, and the Mobile Academy, it has to be some shortened versions in a phase manner, like it has to and divide into 2 or 3 parts. In first phase, introduction phase of the some crucial thing, in second phase, advanced stage, or more advanced stage, so that for each completion of the stages, the ASHA can get the certificate ki, okay, now she has completed the first level of the Mobile Academy, and certain after some time, if she completed the second phase, she can get the certificate. But at present, it is when
she completes the overall 11 chapters, 11 modules. Before that, she cannot get the certificate from the Mobile Academy. And that's why we are reducing from the 11 modules into different segments, so that for each level of for each level of completion, Asha can get a certificate. Okay, she can complete, and these are. And similarly, we are receiving these several requests from the state as well as the PDs. At present, the Mobile Academy covers only the RMNCH activities. But now we are receiving the request the expansions of the Mobile Academy has to from RCH to move other dimensions like the NCD to measure at present the major burden of diseases and the non-communicable diseases. So several courses can be included in the Mobile Academy, but we have to explore this. How can we include in the Mobile Academy in futures? But at present, we are sticking on the RCH activity. But in futures, hopefully within 1 or 2 years, we will develop some modules on the non-communicable diseases and others critical disease control program, so that Asha is the main. Asha is working as a volunteer, but is the main pillar of the beneficiaries and the health facilities. So whatever efforts made by if we can improve the knowledge of the Asha, so certainly she can improve the overall outcomes of the health of the country. If she can reduce the bridge gap between the beneficiary and health facilities, it will directly or indirectly, it can improve the overall health of the nations. These are the initial remarks, and the subsequent sessions we will try to identify which are the areas we have to work on, and what are the other futures way forward we are planning to do that to complete the KMA. As my DG sir has already announced that we are planning to launch the Kilkari and Mobile Academy in the 4 states of northeastern states in the month of November, December, and we are in the process to finalize the modalities. As soon as we complete, and the whole exercise will be initiated for the launch of KMA in 4 northeastern states. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for the valuable insights on the developments undertaken in Kilkari and Mobile Academy and the way forward. So now the next presentation, we will be having the state participants. They will be giving that. The presentation is on Asha experiences regarding Mobile Academy course. So now first we will request the participants from Delhi to please come and give the presentation, please. नमस्ते आप सबको मेरा मैं पूजा विश्वकर्मा पार्क डिस्पेंसरी की MCW विश्वकर्मा पार्क डिस्पेंसरी की आशा वर्कर हूँ। मैं 1.5 साल से इसमें काम कर रही हूँ। 1.5 साल हुए हैं मुझे। मैं ईस्ट दिल्ली से हूँ और मेरी डॉक्टर का नाम है विशाखा अरोड़ा, और मेरी जो MOIC है डॉक्टर विशाखा अरोड़ा, और एनम है मंजू मैम। मैं आशा वर्कर में काम तो कर ही रही हूँ। मैं एटलीस्ट मैं अपने एरिया में बहुत अच्छे से जाती हूँ, बट लेकिन एक चीज मुझे ये बताना था कि मोबाइल एकेडमी के बारे में, कि मोबाइल एकेडमी से मुझे क्या क्या फायदे हुए। मैंने एक दिन जब मेरी ट्रेनिंग का टाइम है, ट्रेनिंग में गई, तो वहां मेरे को मेरी आशा जो कोऑर्डिनेटर है हमारी संतोष मैम, वो मिली। उन्होंने मुझे बताया कि पूजा मोबाइल एकेडमी कोर्स हमारे लिए किस चीज के लिए होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है। एक आशा जब काम करती है वो अपने एरिया में करती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन जब मोबाइल एकेडमी कोर्स वो कर लेती है तो उसे क्या क्या अपने बेनिफिशियल को बताना पड़ता है, क्या चीज है, वो सब उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ। मेरे को क्या होता था, मैं एरिया में जाती थी, कोई भी मुझे प्रेग्नेंट वुमेन मिलती थी, वो 3 महीने के बाद मुझे बताती थी कि आई एम प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हूँ मैम, तो मुझे कार्ड वगैरह बनाना है, MCP कार्ड वगैरह बनाना है, इस चीज की इन्फॉर्मेशन। तो मैं उन्हें कहती थी ठीक है मैं आपका कार्ड बनवाऊंगी, बट लेकिन आपको मैं एक चीज बता रही हूँ कि आपको 3 महीने से पहले आपको एक बार डिस्पेंसरी या आप कहीं भी जहाँ डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं वहां जाकर दिखाइए, क्योंकि हमें 3 महीने के अंतर हमें फॉलिक एसिड लेनी बहुत जरूरी होती है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। अगर वो फॉलिक एसिड नहीं लेगी तो उसको आगे जाके दिक्कत होगी।
तो उसके बाद जब मैंने उसे बताया तो उन्होंने अपना ये बताया एमसीपी कार्ड जुड़वा के फिर डिस्पेंसरी आकर उन्होंने अपना प्रेग्नेंट वुमेन में रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद उन्होंने क्या करा, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उन्होंने मैंने ये बताया कि आपको फॉलिक एसिड के बाद 3 महीने के बाद आपको आयरन की गोलियां खानी थी, जो हमें 100 गोलियां खानी होती हैं। बहुत सारी ऐसी हैं, शायद मैं भी उनमें एक, कि मैंने अपनी किसी को 3 महीने तक बताया नहीं था और मैंने फॉलिक एसिड छोड़ दी थी, जिससे मुझे आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद मैंने आयरन की भी सुनी थी कि लोग ये कहते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन कहते हैं दीदी आयरन से तो बहुत प्रॉब्लम आती है, आयरन से हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है, हम आयरन नहीं खा पाते। तो मैंने उनसे कहा कि एक बार आप डिस्पेंसरी तो चलिए, डिस्पेंसरी जाके आपको पता चलेगा। और मोबाइल एकेडमी कोर्स करने के बाद मुझे ये पता चला कि हमें कैसे कैसे कैल्शियम, आयरन, इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली और हमें कैसे अपनी जो हमारे प्रेग्नेंट वुमेन होती है उन्हें किस तरीके से हमें समझाना होता है, क्योंकि वो समझती नहीं है तो वो कुछ खाती नहीं है, जिससे वो अनेमिक हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अनेमिक। बहुत सारी ऐसी वुमेन्स मिलती है जो अनेमिक होती है, जिनको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ कहती है सिर्फ दवाई दवाई टाइम पे लो, खाने की चीजें भी तो होती हैं। मोबाइल एकेडमी से हमें कितनी चीजें पता चली, लोहे की कढ़ाई में आप खाना बनाएंगी, उससे आपको कितना आयरन, कैल्शियम, कितनी चीजें मिलेगी आपको। मैंने उन्हें बताया कि आप हरी मूंग की दाल भिगोकर इसे खा सकते हैं, आप मूंगफली खा सकती है। मोबाइल एकेडमी से ही मुझे पता चला था, तो मैंने अपने एरिया में जाके बताया। उसके बाद मैंने उन्हें ये भी बताया कि जब आप लोग हर महीने, आपको एक तारीख होती है, हर महीने आपको डिस्पेंसरी में जाकर अपना चेकअप करवाना है। चेकअप करवाती हूँ वो अपना, और उन्हें ये भी मुझे मोबाइल एकेडमी से ये पता चला कि हमें 6 महीने तक, जब वो बच्चा हो जाता है 6 महीने तक उसे सिर्फ जिसकी इंफॉर्मेशन मुझे भी नहीं थी पहले। और लोग क्या कहते हैं, बच्चा होते ही हम लोग कभी जन्म ड्यूटी वगैरह भी देते हैं, इस चीज का भी मुझे ये पता चला मोबाइल एकेडमी से कि हमें बच्चा होती है, हमें कभी भी सबसे पहले होता है माँ का स्तनपान। जो माँ का जो दूध होता है वो सबसे पहले, गाय का दूध जो होता है वो माँ का, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। बच्चे को जब माँ का पहले गाय का दूध देंगे, जिसे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, अगर वो देंगे तो बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहेगी। और बच्चे माँ का स्तनपान से दूध अच्छी तरह से होगा, तो क्योंकि बच्चा कभी कभी बच्चे को पीने में दिक्कत होती है, हम लोग नहीं देते माँ का गाढ़ा दूध। उन्होंने बताया कि माँ का पहले गाढ़ा दूध नहीं देना चाहिए, और 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध, माँ का दूध इसलिए इम्पोर्टेंट है कि माँ के दूध में ही जितने भी बच्चे को माँ का दूध पिलाने से हर चीज प्रॉब्लम उसके बच्चे की फिनिश हो सकती है। और सेकंड, 6 महीने के बाद लोग कहते हैं दाल का पानी, प्लीज दाल का पानी जो होती है वो खिलानी होती है बच्चे के लिए, ना कि माँ खाली पूरा वो खिला। उसके बाद हम पोषक तत्व भी करवा देते हैं। माँ को भी जो पोषक तत्व जरूरी होते हैं कि हरी हरी सब्जियां, साग सब्जी, राग वगैरह, ये लोग ये खिलानी चाहिए माँ को। उसके बाद जब 6 महीने के बाद मैंने बच्चे को बताया, माँ को बताया कि आप लोग क्या करो, अपने बच्चे को, जब हम बच्चे के पर वैक्सीनेशन वगैरह कराते हैं, वैक्सीनेशन अगर टाइम से होगी तो माँ कभी भी बीमार नहीं होगी। अगर माँ बीमार होगी तो बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि माँ को ही सबसे ज्यादा, जब पहले माँ बीमार होती है तो वही बीमारी बच्चे में भी आती है। तो क्योंकि माँ के स्तनपान से ही बच्चा है आपका, तो बच्चे को दूध पिलाते रहेंगे तो माँ भी बीमार नहीं है, बच्चे भी सेफ्टी रहेगी। और उसके बाद मैंने बताया बच्चे के लिए हमें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए, साफ स्वच्छता से हाथ हमेशा हमारे धुले चाहिए, हम कहीं भी कोई भी काम कर रहे हो। और बच्चे को जब हम खाना खिलाते हैं तो वो भी हमारे हाथ अच्छे से साफ सुथरे होने चाहिए, चाहे हमें कितनी बार भी हाथ धोने पड़े, हमें हर काम करने से पहले, खाना बच्चे को खिलाने से पहले हाथ धोने जरूरी है। और 1 साल तक के बच्चे के लिए मोबाइल एकेडमी से पता चला कि 1 साल तक के बच्चे के लिए मेन है ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है। उसके बाद किलकारी, जब मैंने प्रेग्नेंट वुमेन को मैंने बताया तो मेरी बात शायद नहीं समझी, तो मैंने उससे किलकारी में एड करा उसका नंबर, मोबाइल नंबर मेन होता है, मोबाइल नंबर उसका वही होना चाहिए जो उसके पास होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल नंबर उसके पास, तो मैंने उससे बोला आप अपने घर का किसी का भी, आप अपने हस्बैंड का, अपने मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, किसी का भी मोबाइल आप दे दीजिए, मैं आपको उसी नंबर से रजिस्ट्रेशन होगा, आरसीएच नंबर वो पोर्टल पे ऐड हो जाए, जिससे आपको हर 3 महीने के बाद आपको हर माह जिस उसमें 4th या 5th मंथ की जिस भी प्रेगनेंसी होगी, जिस मंथ की, उस महीने के अकॉर्डिंग आपको मैसेज मिलेगा। मैसेज मिलने के बाद जब मैसेज मिला उन्हें तो समझ में आया कि हाँ, कि आशा दीदी हमें ये बात सही बता रही है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो उसके बाद उन्होंने जब भी कोई काम होता था वो मुझे फोन करती थी कि हाँ दीदी मुझे ये बताया गया है। और उसके बाद क्या होता है, कभी कभी ना हम एरिया में जाते हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में बात नहीं करती, की वजह से वो मुझसे फैमिली प्लानिंग के बारे में बहुत अच्छे से खुल के बात करती हैं कि किस चीज की उन्हें जरूरत है, क्या चीज चाहिए, वो हर एक बात मुझे बताती हैं। और सबसे पहली बात ये कि एक आशा और जो उसको पेशेंट होती हैं, जो एएनसी उनका एक अच्छा
अच्छा रिलेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों का अच्छा एक रिलेशन नहीं होगा तो वो लोग शायद हमसे कोई बात शेयर नहीं करेंगे, और जब शेयर नहीं करेंगे तो हमें भी कुछ बातें पता नहीं चलेंगी। थैंक यू, धन्यवाद। एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का कि आपने मुझे इस स्टेज पर बोलने का मौका दिया। मेरा नाम सुदेश कौर है, मैं छतरपुर डिस्पेंसरी से हूँ, साउथ दिल्ली। मैं एक सिख फैमिली से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। मैं एमए बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से एज अ आशा वर्किंग हूँ। मुझे सोशल वर्कर होने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने ये जॉब चुनी अपने लिए। मैं आपको आज मोबाइल एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगी। मोबाइल एकेडमी कोर्स मैंने 6 महीने पहले पर्णा मैम हमारे डिस्पेंसरी में आए थे, उनके कहने पर किया था। इस कोर्स के बाद मेरी जो ट्रेनिंग हमें ज्वाइनिंग के टाइम पे कराई गई थी, 7 मॉड्यूल की एक ट्रेनिंग कराई गई थी जब हमने ज्वाइनिंग की थी, वो सारी ट्रेनिंग इस कोर्स में रिफ्रेश हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा यह कोर्स। और एरिया में भी जब हम इस कोर्स के लिए हमने एडवाइस किया तो कुछ लोगों के पास कॉल किया, उनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस कोर्स से लेके। इस कोर्स में हमें बहुत सारी बातें रिफ्रेश कराई गई हैं जो हमारी ट्रेनिंग से रिलेटेड थी, जैसे गर्भवती महिला का पंजीकरण करवाना, गर्भावस्था के दौरान पोषक आहार और खून बढ़ाने की दवाइयां टाइम से लेना, प्रसव से पहले की तैयारी करना, प्रसव के बाद माँ और बच्चे की देखभाल। हम लोग HbNc के लिए जाते हैं 1.5 महीने तक। उसके बाद बच्चे के टीकाकरण को लेकर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है मोबाइल एकेडमी कोर्स में। किस टीके से क्या फायदा मिलता है, क्या नुकसान, वो भी बताया गया है। 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराना माँ को, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो मोबाइल एकेडमी कोर्स में बताई गई है। इसके बाद 6 महीने के बाद बच्चे को पूरक आहार देना। कई बार मतलब हम लोगों ने स्किप किया है ये चीज कि बच्चों को 6 महीने बाद हमने स्टार्ट नहीं किया था, थोड़ा लेट शुरू किया था, लेकिन इस कोर्स से हमें पता चला कि 6 महीने बाद बच्चे को स्टार्टिंग कर देना चाहिए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें मुझे ये लगा कि फैमिली प्लानिंग को लेके हम लोग भी एरिया में जाते हैं तो हिचकिचाहट होती है हमें भी, और हम नहीं खुल के बोल पाते हम भी, लेकिन इस कोर्स के द्वारा हमें बेनिफिशियरी को भी हमसे बात करने में शर्म नहीं आई और हमें भी। और ये कोर्स लगभग 4 घंटे का है और हमें कहीं जाना नहीं पड़ता इस कोर्स को करने के लिए, हम अपने फोन से ही कर सकते हैं। और महिला के पंजीकरण से लेके बच्चे के लगभग 1.5-2 साल तक के विकास की जानकारी इस कोर्स में दी गई है। और मैं सभी अपनी आशा बहनों को भी एडवाइस करती हूँ कि अभी हमारा 1 वीक पहले हमने DGD छतरपुर की सारी आशाओं ने इस कोर्स को कंप्लीट किया है, और हमारी MOIC डॉक्टर बबीता जी ने बहुत अच्छे से हमें मोटिवेट करते रहे बीच बीच में कि फटाफट अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, और हमने किया। और मेरा एक्सपीरियंस इस कोर्स को लेके बहुत अच्छा रहा, एरिया में भी और यहाँ पे भी। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। Thank you, Asha Didi, Pooja and Sudesh from Delhi for sharing your inspiring stories and telling us how Kilkari and Mobile Academy is helping you in undertaking services in the field and in promoting the healthy behaviors among pregnant women, mothers, and children. So now I request Suman and Sarabjit from Haryana to take a session on how that Kilkari Academy is, Kilkari and Mobile Academy is helping them in delivering their duties. Please, thank you. मंच पर उपस्थित आदरणीय अधिकारीगण,
अभी देश के कोने से आए हुए मेरे सभी फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। मैं आशा वर्कर सरजीत कौर डिस्ट्रिक्ट कैप्टन हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मैं 2011 से लेकर आशा के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूँ और मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका मिला। मैं आज आप सबको अपना जो भी मेरा आज तक का मोबाइल अकेडमी और किलकारी प्रोग्राम को लेकर जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं अपना अनुभव आज आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। मोबाइल अकेडमी कोर्स का हमें कैसे पता चला? मैं जब अपनी मासिक मीटिंग के दौरान अपनी पीएचसी की मासिक मीटिंग में भाग लेने के लिए गई तो वहाँ जो मेरे दो चाचा कैबिनेट की सभी आशाओं और ये 240 मिनट का कोर्स है। इसमें हम इसको अपने समय की सुविधा के अनुसार किसी भी समय जब हमें लगे कि रिलैक्स है उस टाइम में हम कभी भी किसी भी बैठकर इस कोर्स को भी पूरा कर सकते हैं। सच में मोबाइल अकेडमी कोर्स के बारे में जब अशोक होटल के समय आपकी जो आपकी क्षमता है उसको अच्छे तरीके से सुदृढ़ कर सकता है, आपके परफॉर्मेंस को कैसे स्ट्रांग बना सकता है। तो ये सच में बहुत एक्साइटिंग है। कोर्स है होगा और जब मैंने ये मोबाइल अकेडमी स्टार्ट किया सच में जैसे जैसे इसके पहले मैंने चैप्टर कंप्लीट किया कंप्लीट किया उसमें जैसे टोटल 2 चैप्टर्स है तो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते गए मुझे इंटरेस्टिंग हो गया कि नहीं लगा कि हम इसको करते जाएं इसमें जो डॉक्टर अनीता उनकी जो सहायक है रमेश जी अच्छे से इसी करके मैंने सारा कराया जो हमने आज तक कभी करते नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था। और सच में मतलब कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मोबाइल एकेडमी कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो हमारा में एक जो नया कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ उसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लाभार्थियों के साथ जाके गांव में बात करने के तरीके में चेंज आया, जैसे कि परिवार नियोजन के बारे में हम उनसे बात करते हुए हिचकिचाहट महसूस करते थे, पर मोबाइल एकेडमी कोर्स को पूरा करने के बाद सच बता रही हूँ कि आज हम कपल को उनके परिवार में बिठा के जो परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी तरीके के साधन हैं उनको हम अच्छे बहुत बढ़िया तरीके से बता सकते हैं। टीकाकरण जैसी बहुत बड़ी चीज को लेके जो लोगों में इतना अंधविश्वास था, गलत फहमियां थी, मोबाइल एकेडमी कोर्स को पूरा करने के बाद वो हमें जाके ये बताने में अब जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती कि ये टीकाकरण आपके बच्चे के लिए कितना फायदेमंद है, ये टीकाकरण आपके बच्चे को कितनी बीमारियों से बचा सकता है। स्तनपान के बारे में हम माँ को अच्छे तरीके से बता पाते हैं कि प्रसव के तुरंत बाद माँ बच्चे को अपना पहला पीला गाढ़ा दूध कोलोस्ट्रॉम जो कि अमृत के समान माना जाता है, मृग समान माँ और कस्तूरी समान माँ का दूध, ये सबसे बहुत बड़ी चीज है, इसको कभी भी वेस्ट ना करें। प्रसव के तुरंत पश्चात ही माँ को हम बताते हैं कि वो जरूर जब हम 8वें महीने में डिलीवरी की प्रिपरेशन करवाने के लिए जाते हैं हम तभी से स्टार्ट कर देते हैं माँ को ये बताना कि प्रसव के तुरंत पश्चात आपने बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवानी है। तो जैसे कुपोषण, डायरिया, मलेरिया और काफी बीमारियों के बारे में हमने मोबाइल एकेडमी कोर्स के माध्यम से जाना। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये मोबाइल एकेडमी कोर्स और जो किलकारी प्रोग्राम है, जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम एक ही प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे किलकारी प्रोग्राम में तो डॉक्टर अनीता जी हैं, वो बेनिफिशरी को डायरेक्ट उनके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के बारे में अवगत करवाती है, उनको समय समय पर सारी जानकारी देती है। वो हर वीक एक नए मैसेज के साथ लाभार्थी के साथ रूबरू होती हैं
और ऐसे ही जब हम मोबाइल एकेडमी कोर्स को हम करते हैं तो उसमें जो डॉक्टर अनीता जी हैं वो बिल्कुल वो हमें इतने अच्छे तरीके से मोटिवेट करती हैं कि हम फील्ड में कैसे जाके अपने लाभार्थियों के साथ जो हमारी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के बारे में जानकारी है हम उनको कैसे साझा कर सकते हैं। आज जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो जब हमें भी मोबाइल एकेडमी ऑनलाइन करने का ये कोर्स करने का मौका मिला तो सच में हम गर्व महसूस करते हैं। किलकारी प्रोग्राम है जो इसके तहत ये जो आउटगोइंग कॉल नंबर है 012-444-51-660 और जो इनकमिंग कॉल है जो जैसे कि बेनिफिशियरी से अगर कई बार वो कॉल मिस हो जाती है तो वो दोबारा उसको 14-423 पे डायल करके वो उसी वीक के मैसेज को वो कैसे सुन सकती है उसके लिए हम ये दोनों नंबर बेनिफिशियरी के मोबाइल में सेव करते हैं। उनके एमसीपी कार्ड में भी हम नोट करते हैं। जैसे कई बार बेनिफिशियरी के हस्बैंड उनके हस्बैंड का नंबर दिया होता है तो वो कई बार दिन में काम पे होते हैं तो हम उनको ये भी बताते हैं कि दीदी आप ये मैसेज जब भी आपके हस्बैंड आए 14-423 वाला नंबर डायल करके आप वो मैसेज उसी वीक के अंदर कभी भी सुन सकते हो। तो हमें खुशी होती है कि एक तरफ तो जैसे हम मोबाइल एकेडमी कोर्स के माध्यम से जानकारी लेके और हम लाभार्थी को बताते हैं और उसी तरीके से ही जब डॉक्टर अनीता किलकारी प्रोग्राम के माध्यम से बेनिफिशियरी को वो मोटिवेट करती है उनकी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के बारे में इनको अच्छे से जानकारी देती है तो सच में बेनिफिशियरी का भी विश्वास हमारे ऊपर और बढ़ जाता है कि वही बात जो एक डॉक्टर अनीता हमें बता रही है और वही बात जो हमें एक आशा दीदी आके बता रही है तो इस चीज का बहुत असर पड़ता है। सच में मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि हम भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने किलकारी प्रोग्राम और मोबाइल एकेडमी प्रोग्राम को चला के हमारी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने में बहुत अच्छी मदद की है। ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा सराहनीय कदम है और इससे हमारा कॉन्फिडेंस और भी बिल्डअप हुआ है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी तो आज इस बात की हो रही है कि जो मैं अपना अनुभव आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ इतने सब सीनियर्स के साथ हम साझा कर रहे हैं। साथियों मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव ये भी है कि जैसे किलकारी प्रोग्राम की जो कॉल आती थी तो मैं एक बार अपने मायके में गई हुई थी वहां मेरी भाभी के पास जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनके पास किलकारी की कॉल आती थी बट वो उस कॉल को रिजेक्ट कर देती थी वो सुन नहीं पाती थी। वो बोलती थी कि मुझे ये कुछ ठीक नहीं लगता ये हर वीक एक मतलब कि अगर वो एक वीक में नहीं उठा रही तो वो बार बार कॉल करते हैं। तो मैंने उनको मोटिवेट किया मैंने उनको समझाया कि आप ये सुनो ये एक बार नहीं ये हर हफ्ते एक नए मैसेज के साथ आपको डॉक्टर अनीता कॉल करती हैं और आपके स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देती हैं। तो मेरी भाभी ने वो मेरी बात मान के उन्होंने जब ये सारी चीजें सुनी तो वो आज बहुत खुश होती हैं। वो मुझे भी कई बार बोलती हैं कि दीदी अगर आप मुझे ये चीज ना बताते तो शायद मैं काफी चीजें वो मिस कर जाती जो आपने मुझे मोटिवेट किया और मैं इन चीजों के बारे में जानकारी दे पाई हूँ। तो मैं आप सबका फिर से एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबने मुझे सुना उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे उपस्थित आदरणीय अधिकारीगण सभी राज्यों से आए हुए मेरे साथियों आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं मोबाइल एकेडमी का धन्यवाद करना चाहूंगी जिसके कारण मुझे एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला जिसके आगे आकर मैं अपनी बातें आपको बता पा रही हूँ। मेरा नाम सुमन कश्यप है मैं हरियाणा राज्य से हूँ कैथल मेरा जिला है और मैं एक नरड़ गाँव से हूँ। मैं नरड़ गांव में 2005 से आशा वर्कर का कार्य कर रही हूँ। पीएचसी सब सेंटर मेरा मुंदड़ी है और सीएचसी मेरा पुंडरी है। तो जैसे आज आप मुझे सुन पा रहे हो तो जो 2005 वाली आशा थी और आज जो 2024 वाली आशा आपके सामने खड़ी होकर बोल रही है तो मैं ये सारा श्रेय अपनी मोबाइल एकेडमी ट्रेनिंग को देना चाहूंगी जिसके कारण मुझे आज इतना कॉन्फिडेंस मिला कि मैं आप सभी के बीच अपनी बात रख पा रही हूँ। तो जैसे मैं उस टाइम आशा वर्कर लगी थी उस टाइम का मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ क्योंकि वो स्टार्टिंग दौर था तो हम आशाओं के ऊपर इतना कोई खास प्रेशर नहीं था कोई खास जिम्मेदारियां नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे हमारे कंधे पर जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गई। तो जैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ी हमने काम कैसे करना है उसके लिए हमारे विभाग द्वारा समय समय पे हमें ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग तो दी गई
लेकिन जो कॉन्फिडेंस हमें फील्ड में चाहिए था वो शायद मेरा भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा जो टारगेट था कि होम डिलीवरीज को रोकना, संस्थागत प्रसव के लिए सभी महिलाओं को मोटिवेट करना। तो उस समय जब हम जाते थे, मैं जाके महिलाओं को बोलती थी कि आपको घर पे प्रसव नहीं करवाना है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो क्या पता सर, उनकी फैमिली की, उनकी सास या ससुर या उनकी बड़ी जेठानी अगर मुझे बोल देती थी कि आप यहाँ क्या सिखाने आ जाते हो हमारी बहू को, हमारी भी तो डिलीवरी घर पे हुई है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो सर मेरे पास उनको सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत कम जवाब होते थे, तो शायद मेरे को वापस ही आना पड़ता था। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ टीकाकरण के लिए होता था। जब मैं उनको बोलती थी कि बच्चों को टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है, तब भी बच्चे के जो बुजुर्ग थे उस परिवार के, वो कहते थे क्यों आप बार बार हमारे घर आ जाते हो, टीके से आपको पता है हमारा बच्चा कितना रोएगा, उसको कितना बुखार हो जाएगा, अरे मैंने टीका नहीं लगवाना, इसका दादा मेरे से लड़ाई करेगा। तो सर टारगेट तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। अब मैं काम कर रही हूँ, जिम्मेदारियां थी कि आशा की जिम्मेदारी है कि वो माँ जच्चा बच्चा को स्वस्थ रखे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। तो जैसे सर हमारा ट्रेनिंग का दौर चलता रहा, तो एक दिन ऐसा आया कि मैं मेरी अपने जिला हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए गई हुई थी। तो वहां मैंने कुछ आशाओं को मोबाइल एकेडमी ट्रेनिंग के बारे में बातचीत करते सुना। तो बड़ी उत्सुकता से मैंने पूछा कि दीदी आप किस ट्रेनिंग की बात कर रहे हो। तो उनके पास ज्यादा समय तो नहीं था, उन्होंने मेरे को बताया कि आपका जो नंबर रजिस्टर्ड है, आप उस नंबर से 14424 पे कॉल कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि मोबाइल एकेडमी ट्रेनिंग क्या है। तो सर जैसे ही मेरा वो मीटिंग ट्रेनिंग का टाइम पूरा हुआ, घर आई, तो घर आते ही जैसे मैंने कॉल मिलाई, तो जैसे ही वहाँ रमेश जी हैं जो डॉक्टर अनीता जी के सहायक हैं, तो वो स्टार्टिंग में हमें जानकारी देते हैं कि जिस ट्रेनिंग के लिए आपने ये नंबर मिला है आशा दीदी, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। इसके 11 पार्ट हैं, सॉरी 11 भाग हैं, हर भाग के 4 पार्ट हैं, और 4 पार्ट के अंत में आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे। जैसे आप 4 सवाल के सही जवाब देते हो तो उसके आपको 4 अंक मिलेंगे। तो बड़ी उत्सुकता सी हुई मुझे कि एक खेल खेल में मेरे को कुछ सीखने का मिलेगा। तो जैसे ही मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया, तो वो जो जानकारियां मिलती गई और मैं उन जानकारियों को समझती गई, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं ना उसका सही जवाब देके अपने अंकों को पूरा करना है, जो अंक का उनका टारगेट है। अगर मन में कोई इच्छा हो कुछ करने की कि हमें अचीवमेंट लेनी है, तो वो इंसान बड़ी शिद्दत से मेहनत करता है और बड़े ध्यान से सभी बातों को सुनता है। तो कुछ ऐसा ही रहा। 44 नंबर का ये हमारा ट्रेनिंग कोर्स था और मेरे कंप्लीट पॉइंट आए। तो उस ट्रेनिंग का निष्कर्ष मैंने ये निकाला कि जो भी आज तक विभाग द्वारा हमारी ट्रेनिंग्स हुई थी, ये जो मोबाइल एकेडमी की ट्रेनिंग है, वो उन सभी ट्रेनिंग का एक निचोड़ है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे दूध के ऊपर से मलाई को उतारा गया हो, इस तरह का ये मोबाइल एकेडमी का एक कोर्स है जो हमें प्रॉपर पूरी जानकारी देता है। तो उसके बाद का एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगी। जैसे ही मैं दोबारा अपने फील्ड में गई, तो मैंने पूछा, अपनी गर्भवती महिला के पास गई कि आपको संस्थागत प्रसव करवाना चाहिए, तो उन्होंने फिर वही जवाब दिया। तो जैसे मैंने ट्रेनिंग में देखा था कि डॉक्टर अनीता जी और रमेश जी कितने आराम से प्यार से हमें सवाल पूछते हैं, हमें सिखाते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने पूछा। पहले तो ताई जी जो मेरे बड़े बुजुर्ग थे, आप ये बताइए कि आप हॉस्पिटल में जाना क्यों नहीं चाहते। तो उन्होंने बताया कि मेरे ने ये सुना है कि जितनी डिलीवरी हॉस्पिटल्स में होती है ना, उनको जाते ही बड़ा ऑपरेशन कर देते हैं, तो इसलिए हमें जाना ही नहीं है। और दूसरी बात भी, इतना पैसा लगता है, इतना खर्चा होता है कि मैं, हमारे घर में इतना पैसा नहीं है कि हम मैनेज नहीं कर सकते, घर पे डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे मैंने सीखा था, फिर मैंने उनको सेटिस्फाइड करने के लिए पहले उनके सवाल लिए, और ट्रेनिंग से सीखने के बाद जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था, तब मैंने उनको बताया कि जो मैं आपके घर बार बार आती हूँ कि आपको समय पे जांच करवानी चाहिए। वो जांच का ये फायदा है, जो आपके अंदर दिमाग में एक डर बैठा हुआ है कि हॉस्पिटल में जाएंगे क्या पता ऑपरेशन हो जाए, तो जांच का मतलब ये है कि जो हमारे उच्च जोखिम की महिलाएं होती हैं, समय रहते हम उनके कारणों की पहचान कर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम अनीमिया को ले लेते हैं। अनीमिया, खून की कमी होना, मतलब कि माँ और बच्चे की जान को खतरा होना। अगर दीदी हमें पहले पता लग गया आप अनीमिक हो, तो हम आपको बताते हैं कि आप समय समय पे अपनी जांच करवाएं। जो हम आयरन की गोली आपको बता रहे हैं, वो आयरन की गोली खाएं।
ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास बजट नहीं है, अगर आप अनार खाओगे, बादाम खाओगे, तभी आपका खून पूरा होगा। जो मौसमी फल सब्जियां हैं, जैसे हरा साग, लाल बथुआ, चिबड़, और ऐसी ऐसी जो मौसमी, जैसे गाजर का मौसम होता है, आंवला होता है, इन चीजों का यूज करके भी आप अपनी खून की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और जितना अच्छा होगा अगर आप जो खाने वाली चीजें हैं उसे लोहे की कढ़ाई में बनाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह अगर आप हमारे कहने से समय पे जांच करवाते हो, हमारे कहे अनुसार टेटनस का टीका लगवाते हो, रेस्ट करते हो, तो हम उन जोखिमों को पहचान लेते हैं। और 90% अगर आप समय रहते हमारे हिसाब से चलते हो, मेडिसिन लेते हो, दवाई लेते हो, तो नॉर्मल चांस होते हैं डिलीवरी होने के। तो मैम वो सेटिस्फाइड हुए और उन्होंने मेरा साथ दिया, और हमारी जो टारगेट था उसको मैंने अचीव करना स्टार्ट किया। ऐसे ही बात हुई सर टीकाकरण की। तो जब मैंने टीकाकरण के लिए उनको मोटिवेट किया, उनको बुलाया, तो उनको समझाया कि अगर आप अपने बच्चे को स्वस्थ देखना चाहते हो, साथ जानलेवा बीमारियों से बचाना चाहते हो, तो टीका करने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, तो वो एक नॉर्मल बात है, वैसे कि आपके बच्चे को बुखार नहीं होता। तो जब मैंने उनसे ये बातें की, विश्वास बना, और हमारा काम जो है अच्छे से चलने लगा। और मोबाइल एकेडमी का अगर मैं एक सरल एग्जांपल दूं, जैसे हमने लास्ट टाइम में कोविड देखा, कोविड फेस किया, तो हम सभी जानते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी कैंडिडेट्स बैठे हैं, कि कोविड में क्या था, वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी था। और वैक्सीनेशन और कोविड दोनों चीजों का पब्लिक के अंदर एक डर बना हुआ था। लेकिन जैसे ही हम जाके उनको बता पा रहे थे, सेटिस्फाइड कर पा रहे थे, तो मेरे एरिया के लोग वैक्सीनेशन करवा रहे थे। मेरे को अच्छा लग रहा था कि मेरा जो काम है वो मेरे को अभी दिख रहा है। अब क्या हो रहा था, जैसे हमने उनके साथ काम किया, उनका विश्वास जीता, अब सिर्फ सामने से कॉल आनी शुरू हो जाती हैं। अगर फैमिली में कोई हेल्थ इशू है तो वो हमसे पूछते हैं कि आशा दीदी बताइए हमें क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्या दीदी हमें घर पे इलाज करना चाहिए। तो सर अब इस तरह के इशू क्लियर हो गए हैं, अपने आप को हमें एक प्राउड फील होता है कि हम भी फर्स्ट एड जिससे बोलते हैं ना, कोई एक्सीडेंट पे जो स्टार्टिंग की फैसिलिटीज होती हैं, हम आशा वर्कर वो दे पाती हैं। और इस काम के अंदर और सोने पे सुहागा काम किया है हमारी किलकारी योजना ने। जैसे हम किलकारी योजना की बात कर रहे हैं, जो भी हमारी गर्भवती महिला होती है, अब आशा को टारगेट किया है कि वो 3 महीने से पहले ही एंटीनेटल को रजिस्टर्ड करवाए। तो जिस समय हमारे पास गर्भवती आती है, उसको हम रजिस्टर्ड करते हैं, तो उनको हम बताते हैं कि दीदी जैसे आज सब कुछ डिजिटल हो गया है, आपके लिए हर डिजिटल फैसिलिटी भी आपको मिल रही है। हमारी डॉक्टर अनीता जी आपको कॉल करके समय समय पे जानकारी देंगी कि आपको किस समय जांच करवानी है, किस समय आपको टीकाकरण करवाना है, कब आपके बच्चे को आपको पोषक आहार स्टार्ट करना है, कैसे आपको प्रसव करवाना है। तो इन चीजों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। उनको पूरा समझाने के बाद उनके एमसीपी कार्ड पे हम ये नंबर लिखते हैं, उनके मोबाइल में ऐड करवाते हैं, ताकि उनको एक विश्वास हो कि ये कोई फ्रॉड कॉल नहीं है, ये डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आ रही है आपको जानकारी देने के लिए कि आप अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हो, अपने बच्चे को आप कैसे ठीक रख सकते हो। तो ये दोनों इतनी अच्छी मैचिंग हो रही है कि हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि जो हमारी गर्भवती महिला, उसका खुद का फोन नहीं होता, उसके हस्बैंड का, उसकी फैमिली का, किसी का भी नंबर होता है, तो उनको भी सर हम गाइड करते हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर कोई मेल खुद सुनता है उस कॉल को, तो उसके बाद वो अपनी वाइफ को भी जाके बताता है कि आज डॉक्टर अनीता जी का कॉल आया था, तो ये लो तुम दोबारा कॉल करो और वो मैसेज सुन लो। तो सर हस्बैंड वाइफ का भी एक काफी अच्छा रिलेशन बनता है, उनको भी फील होता है, वाइफ को भी फील होता है कि वाकई मेरे हस्बैंड को मेरी फिक्र है। तो इस तरह के चीजें देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बातें बहुत हैं बताने के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन मंच मुझे समय की परमिशन नहीं दे रहा है। तो जो हमारा किलकारी प्रोग्राम है, उसके साथ जो हमारा मोबाइल एकेडमी का प्रोग्राम है, उसके अंदर जो हमारी डॉक्टर अनीता जी हैं, पूरी कहानी जो हमें समझाती हैं, सिखाती हैं, लास्ट में वो हमें ये कहती हैं, कान से जाए पर ध्यान से ना जाए। तो इन बातों के साथ, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी और आप सभी से अनुमति चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Pooja. Thank you, Pooja. Sudesh from Delhi and Suman and Sarajit for sharing the experience on the Kilkari and Mobile Academy. मैं आपसे बस एक चीज ही कहना चाहूंगा कि
कि आरसीएच में मैंने ये देखा है कि जो बेनिफिशरीज के मोबाइल नंबर्स बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप जब भी बेनिफिशरी से जब भी मिले तो उनको आप इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि आप कोई एक ऐसा नंबर उसके अंदर रजिस्टर्ड कराएं जो मोस्टली ज़्यादातर आप यूज़ करें, कि ये ना हो कि एक बार रजिस्टर्ड करने के बाद वो 1 महीने बाद उन्होंने अपना नंबर चेंज कर लिया, नहीं मैंने अपने बेटे को दे दिया। तो उनको बोले कि आप वही नंबर रजिस्टर्ड कराएं कि जो मैक्सिमम टाइम आपके पास हो, चाहे वो सुबह हो शाम हो जिस भी हो, लेकिन आप वो नंबर ही आप रजिस्टर्ड कराएं। इस बात के लिए आप उनको प्रोत्साहित करें। और अभी मेरे साथ वर्चुअली छत्तीसगढ़ से भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर मयंक जैन फ्रॉम बेनतारा। डिस्ट्रिक्ट मिस्टर मयंक जैन। मिस्टर मयंक। शायद कोई इश्यू है लग रहा। मैं फिर दूसरे को बुलाना चाहूंगा मिस्टर अखिलेश फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव। शायद थोड़ी सी कोई कनेक्टिविटी इश्यूज। आगे आगे या मिस्टर अखिलेश। अखिलेश। हेलो। हाँ, आ रही है। हेलो सर, आ रही है आवाज? आ रही है सर? हाँ आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो नमस्कार सर, आप आपके सभी को सर। पास 2 मिनट का टाइम है, क्योंकि हमें और भी सेशंस आगे करने, तो अब 2 मिनट में आप अगर आप बोलना चाहें अपना एक्सपीरियंस। बिल्कुल सर, मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से अखिलेश चोपड़ा बोल रहा हूँ सर। मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेटा मैनेजर के पोस्ट में पोस्टेड हूँ सर। और मोबाइल एकेडमी किलकारी हमारे लिए बहुत अच्छी बात ये रही कि सर राजनांदगांव ने पूरा 100% मोबाइल एकेडमी में सेचुरेट कर लिया है सर। हमारी जो लगभग 2200 मितानिनें थी, सभी ने मोबाइल एकेडमी कोर्स कंप्लीट कर लिया है सर। बहुत इसमें बहुत अरमान बधाई हो टीम का आपको। बहुत बहुत ही अच्छा हम लोगों को सपोर्ट मिला सर। यहाँ पे हमारे जो स्टेट के हमारे कंसल्टेंट थे श्री राजा अहमद जी और ज्योत्सना मैम का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला सर। एट द टाइम जब हम लोगों ने इसको चालू किया था सर, तो हम लोग लगभग 70% में आके रुक गए थे सर। तो वो फिर वो मितानी ने एक्टिवेट नहीं हो पा रही थी, बट सर और मैडम का बहुत सपोर्ट मिला और हम लोग लगभग लास्ट ईयर ही हम लोगों ने 100% कंप्लीट कर लिया। इसमें सर हम लोगों को एक अच्छी बात ये रही कि हमारा डेटा बहुत अच्छा फिल्टर हुआ सर। हमारे इंडिकेटर्स जो आरसीएच के इंडिकेटर्स थे काफी इंप्रूवमेंट हुए। मितानिनों को बहुत मोटिवेशन मिला और वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली तो हुई, साथ ही साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी इंप्रूव हुई सर। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, वो इंडिकेटर्स काफी सुधार हुए। और एक चीज मुझे मुझे पर्सनली ये एक्सपीरियंस हुआ सर कि लोगों की तरफ से डिमांड आने लगी। मतलब जब किलकारी के मैसेज जाने लगे, किलकारी के कॉल्स जाने लगे, तो लोगों की तरफ से डिमांड आने लगी। तो उससे हमारी सर्विसेज भी इंप्रूवमेंट हुई, बीएचएनडी सेशन हमारे इंप्रूवमेंट हुए। हमारा जो असेसमेंट था सर, प्लानिंग और असेसमेंट, ये दोनों चीजें इंप्रूवमेंट हुई। जो हमारा ड्रॉप आउट रेट काफी था सर इम्यूनाइजेशन में, वो इम्यूनाइजेशन का ड्रॉप आउट रेट भी हमारा काफी सुधरा है। क्वालिटी ऑफ फूड, लोगों का जो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ी है। और एनीमिया का जो प्रिवलेंस था हमारे डिस्ट्रिक्ट का, वो काफी हाई था। लेकिन मितानिनों के मोटिवेशन से, मितानिनों के मोबाइल एकेडमी कोर्स करने से और किलकारी से हमारा एनीमिया का प्रिवलेंस काफी रिड्यूस हुआ है सर। और
इसके कंटेंट काफी अच्छे हैं। लोगों को मैंने पर्सनली लोगों से जाके बात की तो उन्होंने कहा कि किलकारी का जो कंटेंट है काफी अच्छा है। साथ ही साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने एक अच्छा काम ये किया सर कि एमसीपी कार्ड में हम लोगों ने किलकारी के मोबाइल नंबर पे वहाँ पे उनको पेस्ट कर दिया स्टैम्प से। तो वो जब कभी किलकारी का कॉल आता है तो बेनिफिशियरी उसको कॉल को उठाती है, तो उससे काफी बेनिफिट मिला सर। हम लोगों ने इसके लिए वर्क प्लान बना के रखा है किलकारी का कि मोबाइल नंबर ज्यादा डुप्लीकेसी ना हो। हर एक मितानिनों को, हर एक एनएम को सेंसिटाइज किए हैं। तो मितानी अब आज की स्थिति में मोबाइल नंबर की डुप्लीकेसी काफी रिड्यूस हो गई है। तो नो डाउट सर मेरे डिस्ट्रिक्ट में, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल एकेडमी और किलकारी से काफी आरसीएच इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट आया है। और आने वाले समय में जैसा आज मैं सुन रहा था सर, एनसीडी के इंडिकेटर्स में भी यदि ये चीजें आ जाएगी तो एनसीडी इंडिकेटर्स भी हमारे सुधरेंगे। और जो ड्रॉप आउट होता था, चाहे वो एनसी का हो ड्रॉप आउट हो, सर्विसेज का ड्रॉप आउट हो, चाहे इम्यूनाइजेशन का ड्रॉप आउट हो, उसमें काफी सुधार आया है। और इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक्स बोल रहा हूँ सर। और साथ ही साथ जो मितानी ने हैं उनका भी काफी हम लोगों को अब सपोर्ट मिलने लगा है। उनकी भी क्वालिटी ऑफ केयर और उनके नॉलेज में काफी इंप्रूवमेंट आया है सर। थैंक यू, थैंक्स लॉट सर। Thank you. Thank you so much. Mr. Bhupesh, District Balot. आ गए। Mr. Bhupesh. सर अनम्यूट कीजिए। Hello, good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon to all of you, sir. Good afternoon. आपकी आवाज नहीं आ रही है। Mr. Bhupesh. जी, गुड आफ्टरनून। हमारा जिला छत्तीसगढ़ में 3rd पोजीशन पे आया हुआ है सर। हम लोग ने 2337 मितानिनों को ट्रेन किया हुआ है सर यहाँ पर। मिस्टर भूपेश, हम आपसे बाद में कनेक्ट होंगे, अभी थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है। तो मिस्टर मयंक हैं क्या अभी ऑनलाइन? अदरवाइज हम फिर इनको बाद में ज्वाइन कराएंगे। ओके। जैसा कि आशा दीदी ने ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस काफ़ी इन्होंने शेयर किया कि कैसे मोबाइल एकेडमी और किलकारी ने उनकी नॉलेज काफ़ी इम्प्रूव करी और उनके जितने भी डाउट्स थे और कैसे वो जब भी वो फैमिलीज बेनिफिशरीज के घर जाती थी, जो उनको इनिशियली क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस होती थी कि वो उनको अंडरस्टैंड समझा नहीं पाती थी। ये सारी चीज़ें कई बार होता था कि इतना समझाने के बाद भी वो बेनिफिशियरी सर्विसेज लेने के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ पे नहीं आती थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स जब इन्होंने किलकारी और मोबाइल एकेडमी से जब इन्होंने अपने आप को इससे जोड़ा, तो इनकी नॉलेज और इनके जितने भी मन में जो डाउट थे, क्लियरेंसेस वो थे, डिफिकल्टीज थी, और साथ में इनको
हौसला अफजाई मिला कि अब हम काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हो गई कि तो हम जब भी हम किसी बेनिफिशियरीज के घर जाएंगे और उनको हम इन सारी चीज़ों पे जब भी हम उनसे बात करेंगे तो हम उनको समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं कि जी ये जो सारी चीज़ें जो बनी हैं आप ही की बेनिफिट के लिए हैं और आप ही की बेनिफिट के लिए ही भारत सरकार कई सारे इनिशिएटिव्स ले रही हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, ये टोटल हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है। ये जो लोगों के मन में इतना डर है कि अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज पे जाएंगे तो हमको इतना पैसा देना पड़ेगा ये सारी चीज़ें करने के लिए, वो सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर करी और होपफुली आगे भी ये अपना काम करती रहेंगी। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं अपर्णा मैडम से मैं को चाहूँगा कि मैडम आशा दीदी को ये थोड़ा प्रोत्साहित करें और फैसिलिटेट करें विद द बुके। Yes, yes. No, I'm personally very inspired by the stories shared by all the four Ashas. बहुत ही inspired हो गई। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, sorry for that. But no, Ashas play such a central role in ensuring that Kilkari works well because they are the conduit to the women for us. तो आप अगर इन्फॉर्म करें, बिकॉज आईईसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर वुमेन को खिलकारी के बारे में पता हो तो ही वो एनरोल करेंगी और सुनेंगी। So Asha is an extremely important conduit to the women directly, कि वो inform करे women को कि ऐसी प्रोग्राम है किलकारी जो आपको information देगी थ्रू आवर प्रेगनेंसी इन्फेंसी। आपका काम भी कम हो जाता है ना उससे, क्योंकि आशा किलकारी अगर इन्फॉर्म कर रहा है तो आपकी काउंसलिंग की काम कम हो जाती है। And Mobile Academy के through you can stay abreast with what you need to do, and we are hoping कि Mobile Academy progress करे, multimedia बने, two-way communication हो, आप questions पूछ सकें, and refresher होती रहे, so really grateful for this work, and it's extremely inspirational to see the work happening in the field. Thank you. Yes, very true. Such inspiring stories coming from the field, and you are the foot soldiers for us. Yes. Who are promoting our message and spreading the awareness about the healthy practices, busting the myths and everything. So, in order to acknowledge your efforts and to felicitate your hard work, so we request now Dr. Aparna Hegde, Madam, to kindly felicitate you by offering a plant. So. Now, Pooja from Delhi, you can come. And Pooja and Sudesh, both can come. हाँ, उनके बाद वो है, इसको Now I request Suman and Sarabjit to please come on the dais. Request you, yes. Oh, what did you do? Thank you, madam. Thank you. So, in the next session, we will be showcasing videos of the case stories on Kilkari beneficiaries. मेरा नाम रोशनी चालकी है। मैं बस्तर जिले की मड़पाल गांव में रहने वाली हूँ और मेरा डिलीवरी कुछ महीने पहले ही हुआ था। समय से पहले डिलीवरी हुआ और मैं पहली बार माँ बनी। मुझे कुछ भी जानकारी नहीं था कि अपने बच्चे को कैसे देखभाल करूँ। किलकारी कोल ने मुझे सही समय पे सही जानकारी दिया, कैसे अपने बच्चे को कैसे कितना कितना देर में पिलाना है और कब कब टीका लगाने जाना है। किलकारी कोल के द्वारा मुझे पता चलता था और
जब भी कुछ भी अपना बच्चा का शरीर को पलट रहा है कि नहीं, वो सब मुझे पता नहीं था कब पलटेगा बोल के। वो किलकारी कॉल के द्वारा ही आपका बच्चा पलट रहा है कि नहीं बोल के मुझे बताया गया। अपने बच्चे को कितना कितना समय स्तनपान करवाना है और कब कितना महीना बाद टीका लगाना है, वो फोन आता था और उससे मैं जानती थी। और अपना बच्चा को अच्छे से ध्यान रखने के लिए कब उसको क्या होगा, कब पलटेगा नहीं पलटेगा, और उसका शरीर में विकास हो रहा है कि नहीं, उसकी जानकारी दिया गया। मुझे और मेरे परिवार को अच्छा जानकारी मिला और मेरा बच्चा को सही सही समय पे टीका लगा, जिसके वजह से मेरा बच्चा अभी पूरी तरह से अच्छा है। किलकारी प्रोग्राम के द्वारा मुझे पता चला तो मैं बहुत अच्छा जानकारी ली और मेरा बच्चा अभी स्वस्थ है। लेकिन ये जानकारी मेरे भाभी को नहीं पता चला। वो गर्भवती थी उतना समय ना, उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके वजह से ना उसका सही से देखभाल नहीं हुआ। उनको किलकारी प्रोग्राम अगर पहले पता चले रहता तो अभी उनका बच्चा अच्छा होता। उनका बच्चा अभी ना पूरी तरीके से अच्छा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि किलकारी कॉल सभी के पास जाए और सभी बहन माता को ना किलकारी कॉल का फायदा होए और सभी का बच्चा स्वस्थ रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। मेरा नाम है सरस्वती उरांव। मेरा गांव है चापड़ी, रांची झारखंड में रहते हैं। इसका 1.5 माह हो गया है। लड़का है और एक लड़की है 4 साल की। सरकारी सेवा वही फोन आने के समय मतलब सुनते हैं। अपने बच्चे के बारे में बताता है, ध्यान रखने के लिए, गीला उला कपड़ा में नहीं रखने के लिए, फिर से अपना ध्यान रखना पड़ता है। 144-23 डॉक्टर अनीता और रमेशर स्वास्थ्य केंद्र आंगनबाड़ी में गए तो मेरे किलकारी का फोन आने का शुरू हो गया। गर्भावस्था के समूह पंजीकरण कराए तो इसके बाद में वही बच्चे और हमारे ध्यान रखने के लिए बता रहे थे अनीता दी और डॉक्टर रमेशर। और उसी तरह से हम ध्यान रख रहे हैं अपने बच्चे को और अपना भी। मेरा नाम माफी है। मैं गांव रेड कला पानीपत की रहने वाली। जब मुझे अपने गर्भवती होने का पता चला तो मैंने अपनी आशा दीदी से संपर्क किया, जिन्होंने मुझे जरूरी कागजात लेकर के एनएम दीदी के पास पंजीकरण के लिए बुलाया और उन्होंने मेरा कार्ड बनाया जिसमें किलकारी का नंबर लिखा हुआ था और उसमें बताया गया था कि हर हफ्ते उस पर कॉल आएगी। ये कॉल 4थे महीने से स्टार्ट हो गया 1 साल तक। किलकारी से मुझे मतलब अपने स्वास्थ्य के बारे में पता चला कि मुझे अपना ख्याल कैसे रखना है, किस टाइप का खाना खाना है, फास्ट फूड बंद करना था और हरी सब्जी खानी थी। एएनएम दीदी से मतलब जो उन्होंने बताया था, किलकारी पर जो कॉल आई थी उसके हिसाब से मैंने उन कॉल को सुना था और फिर उन्होंने जो मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया उसको मैंने अपने गांठ बांध ली। किलकारी में हमारे स्वास्थ्य के बारे में सभी जानकारी बहुत प्यार से बताई गई है। ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर हमारे पास बैठ के सारी बातों को बता रहे हैं। किलकारी की कॉल को सुनना चाहिए क्योंकि उसमें हमारे स्वास्थ्य की जानकारी के लिए बहुत सारी बातें बताई होती हैं और इसे अपनाना चाहिए। नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम नैना देवी है। मैं उत्तराखंड राज्य के जनपद देहरादून ब्लॉक सेंसपुर के लक्ष्मीपुर में रहती हूँ। मैं जांच करवाने सब सेंटर गई थी, तब मुझे पता चला कि गर्भावस्था का 3रा महीना चल रहा है। वहीं पर एनएम दीदी ने मुझे बताया भारत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु की माताओं के लिए चलाई जा रही किलकारी सेवा के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किलकारी में मुझे गर्भावस्था दौरान और बच्चे के जन्म के बाद अपनी और अपने बच्चे की स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी जानकारी फोन पर ही मिलेगी और यह सेवा बिल्कुल मुफ्त है। एनएम दीदी के पास रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 4थे महीने से मुझे किलकारी के फोन आना शुरू हो गए। फोन पर डॉक्टर अनीता गर्भावस्था, बच्चे की देखभाल, टीकाकरण, पोषण और परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देती है। मैंने दूसरी बार गर्भधारण किया है। अभी मेरा 6ठा महीना चल रहा है। मैंने
पिछले बच्चे के समय किलकारी की कॉल पूरी सुनी थी। मेरा पहला बच्चा अब 3 साल का हो चुका है। दो बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर रखने के लिए मुझे किलकारी से ही जानकारी मिली थी, जिससे मैंने बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रखा है। इस बार मेरे पति का मोबाइल नंबर दर्ज है, उनके फोन पर ही किलकारी का फोन आता है। वह खुद भी सुनते हैं और मुझे भी समझाते हैं। नमस्कार। मेरा नाम अनु देववीर है। मैं पिठौरिया का रहने वाली हूँ। जिला रांची, झारखंड रांची का रहने वाली हूँ। किलकारी सेवा के बारे में जब मैं गर्भवती थी तब मुझे पंजीकरण करवाने के लिए तैया दीदी ने गई थी। तैया दीदी हमें सब कुछ बताए कि नहीं, किलकारी एक डॉक्टर अनीता दीदी है, वो सब कुछ तुम्हें बताएगी। किलकारी किलकारी जो है डॉक्टर अनीता दीदी से कॉल किए 1442 डायल करने के लिए बात करते थे, सुन भी लेते थे। अपने सेहत के लिए जुड़ी हुई बातें जानकारी हुई मुझे और मेरे बच्चे के बारे में, अपने बारे में, और क्या एनएनसी का जांच करवाना है और क्या खाना है क्या नहीं, वही सब सारा कुछ बताए। और फिर बच्चे 6 मंथ हो जाते हैं, उसके बाद में उसको ऊपरी आहार भी देना जरूरी है। किलकारी सेवा में डॉक्टर अनीता दीदी कॉल करते थे, वही सुनते थे। Now, I would like to invite Mr. Anand Sahu, State Program Officer from Chhattisgarh. Good afternoon, sir. I am audible. Yes. Respected Maurya sir, Aparna ma'am. This is a very useful program as per the requirement of pregnant women, children, and also for methanins. I am in ASA. हमारे यहाँ सर जैसे कि अभी डिस्ट्रिक्ट के कुछ टेस्टिमोनियल हुए और उसमें बता रहे हैं जो हमारे पास में काफी अच्छे और अच्छा पेनिट्रेशन के साथ में बहुत सारे जिलों में इसको इम्प्लीमेंट किया। और ये इम्प्लीमेंटेशन में जो ये एजेंसी है जो हमारे साथ में है वो काफी अच्छा से यहाँ पे जो उसके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या डिविजनल ऑफिसर जो है वो काफी अच्छे से हेल्प किए। एनुअल एक्शन प्लान जो है हमने यहाँ पे बनवाया। एनुअल एक्शन प्लान के साथ में सारे डिस्ट्रिक्ट डेटा मैनेजर और वहाँ पे जो मैटरनल हेल्थ या आरसीएच के थे नोडल, उनसे भी संपर्क किया। तो उसमें काफी रिजल्ट जो है काफी अच्छा आया और नीचे बेनिफिट तो अभी दिखने में आया जो या आशा और जो बता रहे हैं काफी यूजफुल है ये। इसमें एक दो चार सजेशन है सर मेरे। एक तो जो बिजनेस कॉल अभी बहुत ज्यादा आ रहे हैं मोबाइल में, तो लोग बहुत सारे कॉल पिक नहीं करते हैं। तो उसमें क्लियरली उसमें कुछ शो हो कि किलकारी या ऐसा कुछ कि इस कॉल को ही उठाना है। शायद वो सजेशन पहले दिया था, हो भी गया हो ठीक, तो वो मेरे को वो अभी पता नहीं है। इसके अलावा जो है कि इसको अभी तो जो लिमिटेड आरसीएच एक्टिविटी में है इसका यूज थोड़ा वाइड किया जाए। और वाइड किया जाए वन पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी, लाइक एनीबडी कैन रजिस्टर देयर सेल्फ, यानी कि अभी जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है उनका नंबर आरसीएच पोर्टल पे है तो वहां से कॉल जा रहा है, या फिर एनसीडी पोर्टल की है तो उसमें जो हमारे पास में अभी जो समस्या है लाइक मेंटल हेल्थ, लाइक एनसीडी है, लाइक अभी जो ओरल हेल्थ है, तो इसमें कुछ एक क्यूआर कोड या ऐसा कुछ हो जो उनके रजिस्ट्रेशन में हम इसको हेल्थ सेंटर में लगाएं या उसको पब्लिश करें। और उसमें जाके ऑप्शन हो कि आप किस टॉपिक पे आप जो है वो परामर्श लेना चाहते हैं और किस टॉपिक पे आपको सजेशन चाहिए, या फिर जो किस प्रिकॉशन चाहिए, तो उसमें वो सेलेक्ट कर सके। लाइक कि अभी मेरे को सेम अगर एक ही मदर है और वो अभी केवल आरसीएच का है, सपोज उसका उसके साथ में उसको एनसीडी का भी चाहिए या मेंटल हेल्थ का भी कुछ उसमें उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहां पे वो सेलेक्ट कर पाए कि आज मेरे को ये सेलेक्ट की, वहां पे जाके क्यूआर कोड में जाए, इसको स्कैन करे, ऑप्शन उसमें आ जाए कि प्रेगनेंसी केयर, चाइल्ड केयर, मैटरनल मेंटल हेल्थ, एनसीडी, और वो वहां पे क्लिक करे और वहां पे फिर उसको उस टाइप के जो है उसमें मॉड्यूल्स में जो उसके वीडियोस हैं ये आए और वो इसका बेटर वर्जन हो जाए
कि उसमें एक लिंक भी क्लिक हो जाए कि जिसको यूट्यूब में वो देख सके, यूट्यूब वगैरह में उसको वीडियो मॉडल देख सके। कई बार क्या होता है कि जो ऑडियो वो है सुनने में करीब वो उस समय याद रहता है नहीं रहता है, पर अगर उसी का वीडियो मॉडल में कन्वर्ट कर दिया जाए और उसको जो है परमानेंटली यूट्यूब में एक लिंक के साथ रख दिया जाए, तो जैसे ऑडियो मॉडल ऑडियो उसको मैसेज आया, उसके बाद भी अगर उसको मैसेज में ये आ जाए इफ यू वांट टू सी अ वीडियो मॉडल ऑफ दिस मैसेज, तो वो उसको क्लिक करे और डायरेक्टली यूट्यूब में जाके उसका वो मॉडल अच्छे से वो देख ले और जब चाहे तब देख ले। तो उसके लिए बहुत इजी होगा और वो रिमेम्बरेबल होगा। सेम ऐसे ही मोबाइल नंबर अपडेशन के लिए, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन का हो या जिसका भी हो, तो उसके लिए भी हम उसमें एक सेल्फ मॉड्यूल दें उसको कि आरसीएच पोर्टल पे जो है वो आरसीएच आईडी जो है वो अगर प्रोवाइड कर दें प्रेग्नेंट वुमेन को या उसमें जो बेनिफिशियरी को है, और वो उसको रजिस्ट्रेशन में वन टाइम केवल अपना आईडी डाले और उसका मोबाइल नंबर जिस मोबाइल से रजिस्ट्रेशन आईडी डाल रहे हैं ऑटोमेटिक उसका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा आरसीएच पोर्टल में जाके। तो वो बार बार उसको हेल्थ सेंटर जाके अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये हम कर सकते हैं सर। इसके अलावा जो है इसमें जो सर्टिफिकेट तो हमने यहाँ लोकल बनवा लिया था, जिससे काफी उसको अच्छा हुआ कि पहले वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिशन डायरेक्टर के सिग्नेचर हुआ करते थे सर्टिफिकेट में। तो वो मिशन डायरेक्टर के सिग्नेचर जो है वो पॉसिबल नहीं होता है कि एक आशा तक नीचे तक जा पाए, और यहाँ पे हम जैसे लाइक छत्तीसगढ़ यहाँ पे 73,000 आशा है। तो फिर हमने उसको सीएमएचओ डिस्ट्रिक्ट सीएमएचओ लेवल पे उसका साइनिंग अथॉरिटी करवाया था सर्टिफिकेट पे, ताकि इजिली वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और उसको ज्यादा कन्वीनियंट करने के लिए हम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से भी करवाएं कि इमीडिएटली उसको सर्टिफिकेट मिल जाए और उसमें इजिली वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसके अलावा सर यहाँ पे जो वर्कशॉप जो हो रहा है, तो इसमें इस टाइप के मॉडल की इसमें जो एनालिटिकल पोर्शन की किस टाइप के उसके मैसेज जो है वो लोग सुनना चाह रहे हैं, किस टाइप के उसको अवॉइड कर रहे हैं, किस में टाइम दे रहे हैं, किस में नहीं दे रहे हैं और किस रीजन नहीं दे रहे हैं, इस टाइप का कुछ एनालिटिकल रिपोर्ट रीजन भी पता लगे तो उसको हम अपडेट कर पाए कि ये रीजंस हैं जिससे कारण थोड़े से हम उसको और अच्छा से बेटर प्रमोट कर सकते। थैंक यू सर। थैंक यू साहू जी, आपके सजेशंस बहुत ही अच्छे। इसमें से बहुत सारे सजेशंस जो हम लोग ऑलरेडी कंसीडर कर रहे हैं, जैसे आपने ये बोला कि एक्सपेंशन ऑफ द मोबाइल एकेडमी इंक्लूडिंग द एनसीडी, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें। तो इसी कंटेक्स्ट में मैं आपको यहाँ पे मौजूद सभी सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो 31 स्टेट्स के ऑलरेडी, और आप भी, कि हम लोग अभी जो RCH1 जो हमारा एग्जिस्टिंग है ये हमारा ओल्ड आर्किटेक्चर्स पे है, और जब अभी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं RCH 2.0 विद द सपोर्ट ऑफ द टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द यूनिसेफ, ये हमारा जो RCH 2.0 होगा ये फुल्ली डिजिटल एबीडीएम कंप्लायंस होगा। अगर एक बार बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन अगर हो गया इस सिस्टम पे, तो वो ऑटोमेटिकली अगर हम किसी और दूसरे सिस्टम के पोर्टल्स में जाएंगे वो सेम कॉमन आईडी होगा। आभा नंबर इज द मैंडेटरी फॉर द शेयरिंग द इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स। वो एक जैसे ही वो एक इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो उसके लिए फिर बेनिफिशरीज को ऑप्शंस बहुत ज्यादा बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। उसमें जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो एक बार होगा, क्योंकि वो आधार के साथ लिंक है वो सारी चीजें, तो वो कंप्लायंस के बेस पे वो ऑटोमेटिकली वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ऑटोमेटिकली वो अपने आप ऐड हो जाएगा। और इसमें जो रही बात की जितने भी इंटीग्रेशन हैं, चाहे वो यूविन में जैसे अभी हम RCH में करते हैं, यूविन में करते हैं, तो ये इन फ्यूचर्स में RCH2 जब लॉन्च होगा तो इसमें बार बार डबल एंट्री नहीं करनी। एक बार सिस्टम में जहाँ पे एक बार एंट्री हो गई, बट जो मोबाइल नंबर तो अपडेट होते रहते हैं, उसके लिए सेल्फ मॉड्यूल उनको एक दीजिए कि वो सेल्फ वो अपडेशन कर पाए। अभी एट प्रेजेंट अभी वो नहीं कर रहे हैं। अभी हम फुल्ली एबीडीएम कंप्लायंस पे जा रहे हैं, तो एबीडीएम में आधार के साथ यानी कि आभा के साथ जो नंबर लिंक है वो अभी वही चलेगा। अभी इन फ्यूचर्स में देखेंगे कि कितनी प्रैक्टिकलिटीज आ रही हैं, तो उस केस में फिर हम वो कंसिडरेशन में कहेंगे। अभी एट प्रेजेंट वो सिस्टम अभी हम इसको अप्लीकेबल नहीं करेंगे। और बाकी रही एक्सपेंशंस की बात, वो ऑलरेडी अभी हम लोग थॉट प्रोसेस कर रहे हैं। अभी आफ्टर द कंप्लीशन KMA इन दी ऑल दी स्टेट्स एंड यूटीज, साथ साथ ही हम इसको एक्सपेंशंस का भी सोचेंगे कि NCD, मेंटल हेल्थ, क्योंकि हमारे पास
और भी रिक्वेस्ट आई हैं स्टेट से भी, और कई बार इंटरनल डिस्कशंस में भी ये हुआ कि अगर हम, क्योंकि आशा शी इज द मेन वर्कर बिटवीन द शी इज द मेन पर्सन बिटवीन द बेनिफिशियरी एंड हेल्थ फैसिलिटीज, और इतने सारे प्रोग्राम्स है, आशा को ही वो सारी चीजें करनी है। और एक पर्टिकुलर आरसीएच के लिए अगर उसको एमए मोबाइल एकेडमी के लिए उसको सुनना पड़े, बाकी अगर इसी में ही ऑप्शंस हों तो साथ साथ उसका इन्हेंसमेंट ऑफ नॉलेज भी हो जाएगा, क्योंकि उसको इतनी फ्रिक्वेंटली डिफरेंट सिस्टम, हाँ, वो डिफरेंट क्योंकि प्रोग्राम्स आशा की को ऑलरेडी ट्रेनिंग। वो सारे मॉड्यूल के ट्रेनिंग हो चुके होते हाँ। हैं, वो ऑलरेडी ट्रेंड होती है। और साथ में जो आपका एक सजेशन था कि एनालिटिकल रिपोर्ट, वो ऑलरेडी है, हम लोग यहाँ पे जनरेट करके स्टेट्स को साथ साथ ही करते रहते हैं, लेकिन अब स्टेट्स को भी है, स्टेट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी वो अपने हिसाब से भी वो रिपोर्ट जनरेट करके उसको रेगुलर मॉनिटर कर सकते हैं। और साइनिंग ऑफ सर्टिफिकेट के लिए वो आपके एक अच्छा इनिशिएटिव है। कई बार ये होता है कि सर्टिफिकेट में मिशन डायरेक्टर, अब उसके पास ऑलरेडी इतने सारे काम्स होते हैं कि वो एक सर्टिफिकेट कितने साइन करने, क्योंकि लाखों हजारों में तो होंगे, तो बेटर है कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अगर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल या फिर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स अगर साइनिंग अथॉरिटी, अगर स्टेट अगर डायरेक्शन इशू कर देता है, तो उस पे एज फार एज हमारे यहाँ से कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। वो स्टेट्स का लुक है कि वो किस लेवल पे अप्रूवल अथॉरिटी देना चाहते हैं। और फिर एक और था सर की जो ऑडियो मैसेज को उसमें एक हाँ, लिंक आ वो भी है, जाएगी। वो भी हमारा कंसिडरेशंस में, कि ऑलरेडी हम अरमान टीम के साथ डिस्कशंस कर रहे हैं कि जो हमारे मोबाइल एकेडमी और के इसके हम वीडियोस बना करके यूट्यूब पे या फिर अपनी मिनिस्ट्री के यूट्यूब पे या फिर नॉर्मल यूट्यूब में हम उसको हम डाल दें, ताकि कोई भी बेनिफिशियरी उसको वो इजीली सुन सकता है, कि जब भी उसको टाइम मिले तो यूट्यूब पे वो सर्च करे और वो ऑटोमेटिकली वो उसकी सारी वीडियोस को वो देख सकता है। वो ऑप्शंस हमारा ऑलरेडी कंसिडरेशंस में यानी ऑलरेडी उसका जैसे ऑडियो मैसेज कंप्लीट होगा उसके मोबाइल पे, तो उसको मैसेज आएगा सब यू वांट टू ऑलरेडी रिलेटेड। हमारा कंसिडरेशंस में है, और वो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या फिर दिस फाइनेंशियल ईयर तक का वो कंप्लीट होकर के हम उसको रोल आउट कर देंगे। वो ऑलरेडी हमारा है। और साथ साथ एक चीज जो मैंने अभी ग्राउंड्स पे मैंने कई बार देखा है कि चाहे मैंने बेनिफिशरीज से बात करी या फिर मैंने आशा से मैंने बात करी, कि आशा के पास ऑलरेडी इतने सारे काम थे, तो वो कहते हैं कि एक बार हमने कर लिया तो हमने सर थोड़ा सा आधा घंटा सुना, पौन घंटा सुना, उसके बाद फिर हमें टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हमें बहुत सारी सर्विसेज, हमें बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए हम कंसिडर कर रहे हैं कि उसको ड्यूरेशन उसका हम शॉर्टन करके उसको फेज वाइज में हम उसको डिवाइड कर दें। मॉड्यूल्स कहें कि अभी है कि आफ्टर उसको 11 चैप्टर्स करने के बाद ही उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो हम शॉर्टन करने जा रहे हैं कि अगर वो फर्स्ट 3 चैप्टर्स इस तरह से उसको हम डिजाइन करें कि पहले 3 चैप्टर्स में उसको बेसिक इंट्रोडक्शंस या फिर बेसिक नॉलेज, उसको अवेयरनेस हो, तो उस पे उसको सर्टिफिकेट दे दें। हाँ, लाइक उसका न्यू टाइम एजुकेशन ड्यूरेशन भी पॉलिसी। वो ऑलरेडी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, और ट्राई कर रहे हैं कि उसको जितनी जल्दी हम उसको फाइनलाइज कर सकें हम अरमान टीम के साथ, और एज सुन एज जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाता है तो हम उसको रोल आउट कर देंगे फॉर द एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए। और ये देखा है कि मैंने फील्ड पे मैंने जो बेनिफिशरीज हैं, जो अभी भी हम फील्ड कर रहे हैं कि हमारे पास ऑन होल्ड में मेरे पास बेनिफिशरीज मेरे पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना नहीं है अवेलेबल है कि जो हम सारी बेनिफिशरीज को हम टेक ऑन बोर्ड कर सकें। तो अब हम फिजिकल सर्वर से हम फिर क्लाउड सर्वर पे जा रहे हैं, और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि जितनी जल्दी हो सके कि हमारी जितनी ऑन होल्ड बेनिफिशरीज हैं उनको हम अपने इस नए सिस्टम पे ला करके जैसे ही उनको हम मैसेज हम डिलीवर करना शुरू करें, ताकि जो बेनिफिशियरी मेरी छूट गई हैं, कि क्योंकि फील्ड पे मैंने देखा है कि सर एक बार मैसेज आया था उसके बाद तो फिर आया नहीं, तो वो सारी चीज़ें जो इश्यूज हमने जो ग्राउंड पे कि वो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे इन फ्यूचर्स में इस तरह की हैपनिंग हो। अगर एक बार वो बेनिफिशियरीज अगर किलकारी से कनेक्ट हो गया, तो मैं इंश्योर करना हमारा काम है कि उसको जितने भी 72 मैसेजेस जो जाने हैं वीकली, वो उसको उस तक पहुंचे, वो किसी भी एक भी मैसेज से वो वंचित ना रह जाए, और इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। और मैं अरमान टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए मोडालिटीज जितनी जल्दी हो सके फास्ट उसको कंप्लीट कर लें, ताकि
जो भी हमारी बेनिफिशरीज हैं वो किलकारी के मैसेजेस से वो वंचित ना रहें। और साथ में ही मैं जब हम RCS 2 के लिए जब मैं बात कर रहा हूँ और साथ में किलकारी मोबाइल एकेडमी जो हम बाकी अभी इन फ्यूचर्स में अदर स्टेट्स में भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि एज सच स्टेट्स पे कोई भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज नहीं है। इसको इम्प्लीमेंटेशंस करने में कोई नहीं है, हमें सिर्फ स्टेट से हमें कुछ ही थोड़ा ही मिनिमल सपोर्ट चाहिए कि जो भी हमारे स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर्स होंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे किलकारी के KMA के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट स्टेट्स को प्रोवाइड कराना है, लाइक उनके लिए सिटिंग स्पेस और जो बेसिक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो। और बाकी किलकारी को स्टेट्स अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के KMA को रूटीन मंथली रिव्यू मीटिंग में उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को वो प्रेजेंट करे, साथ में उसको कंटिन्यूअसली रिव्यू करे। जो भी इसमें प्रैक्टिकलिटी इश्यूज आइडेंटिफाई होते हैं वो आप अपने स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर्स उसको लिसन करें। अगर उनसे सॉर्ट आउट नहीं होता तो हमारी सेंटर टीम अरमान की टीम है, उनको आप ब्रीफ करें। हम उसको फिर यहाँ से सेंट्रली लेवल पे उसको हम सारी चीज़ें करने के लिए कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको जो भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड्स करानी है जो आपको लगता है कि ये है, तो उसके लिए हमारी अरमान टीम ऑलवेज रेडी है। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ें IAC मटेरियल हो चाहे ट्रेनिंग प्रोविजन हो, सारी चीज़ें वो सब कुछ अरमान टीम प्रोवाइड करेगी। सिर्फ हमारे जो स्टाफ्स होंगे जो अरमान टीम उसको जो अपॉइंट करके स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके लिए केवल लॉजिस्टिक सपोर्ट ही अरेंज करना है। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग will be done by the ARMMAN Foundations. Nothing will be expenditures or this thing. It does not be pertain to the states. Only just providing the logistics support for the person deputed by the ARMMAN Foundation. That's all required from all the states. Thank you. Thank you, sir, and thank you, Arman team. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So now, before breaking for lunch, I would like to highlight that there are white panels placed on the left side of the hall, leftmost corner of the hall, where you can write down your thoughts and perspectives about the Kilkari and Mobile Academy, whatever your experience is with Kilkari and Mobile Academy. We would love to hear your feedback, along with your state names, of course. And now we will break for lunch. The lunch is served on the right side, and we will assemble back in 30 minutes. Thank you. 30 minutes or 1 hour? Yes, sir. 1 hour, not sure. Yeah, the panels are on both sides, on the left and the right. Half an hour. 3 minutes, 30 minutes होगा. The lunch break is 30 to not be half an hour. And the pure veg is provided in this my right side, and the veg and non-veg is this side. Thank you, sir. कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। कौन करेगी किलकारी, कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। खुशखबरी दरवाजे खड़ी, फैमिली सोच में पड़ी, कैसे होगा सब बढ़िया बढ़िया। माँ बच्चे में है जान बसी, एक कॉल आएगा उसको तुम उठाना, जो भी बतलाए मम्मी पापा सुनते जाना। क्या खाना, क्या जांच वाच दवाई, कब कब लगेगा टीका, मान लोगे तो माँ बच्चे की सेहत का रखना पड़ेगा। वो देखभाल में पूरे परिवार की हिस्सेदारी, निभा रही है अपनी जिम्मेदारी। बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी।
कौन करेगी किलकारी, कौन करेगी किलकारी। नमस्ते। भारत सरकार ने एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी शुरू की है, जिसमें माँ बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी गर्भवती महिलाओं और उन परिवारों को दी जाती है जिनमें 1 साल से छोटे बच्चे हैं। ये जानकारी फोन कॉल के जरिए हर सप्ताह दी जाती है। ये सेवा एकदम मुफ्त है। माँ बनने की यात्रा कई पड़ावों से गुजरती है, कभी खुशी तो कभी कोई नई चुनौती। जैसे हर कदम पे आप अपने बच्चे के साथ हैं, वैसे ही किलकारी आपकी गर्भावस्था से बच्चे के 1 साल का हो जाने तक आपके साथ है, ताकि आप और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। हम तो साथ हैं ही, आपको भी हमारा साथ देना है। किलकारी के हर संदेश को आप और आपका परिवार मिलकर पूरा सुने। इसकी जानकारी अन्य गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को भी दें। भारत सरकार की इस मुफ्त मोबाइल सेवा का लाभ लेने के लिए आज ही अपनी आशा या एएनएम से पंजीकरण करवाएं। आपके मोबाइल पर किलकारी कॉल 0124 44516660 नंबर से आएंगे, और यदि आपसे वो छूट जाए या कोई संदेश दोबारा सुनना चाहें तो अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 14423 डायल करके सुन सकते हैं। तो फिर आपको किस बात का इंतजार है? अपनी आशा या एएनएम से बात करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर भारत सरकार के RCH पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर का पंजीकरण करवाएं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से खास संदेश। क्या आप गर्भवती हैं? क्या आपका बच्चा 1 साल से छोटा है? अगर हाँ, तो अपनी गर्भावस्था या बच्चे की आयु का पंजीकरण आज ही आशा एएनएम के पास या सरकारी अस्पताल में करवाएं और पाएं अपने मोबाइल फोन पर भारत सरकार की किलकारी मोबाइल सेवा एकदम मुफ्त। इस सेवा में आपके मोबाइल पे हर सप्ताह आएगा एक कॉल और देंगे जानकारी माँ बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हर छोटी से छोटी चीज की। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इनमें ही तो आपकी जान बसी है ना? तो फिर किलकारी सेवा अपने मोबाइल पे आज ही शुरू करवाइए और बताइए कि कितनी परवाह है आपको माँ बच्चे की। कौन करेगी किलकारी, कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। किलकारी, कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। कौन करेगी किलकारी, कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। खुशखबरी दरवाजे खड़ी, फैमिली सोच में पड़ी, कैसे होगा सब बढ़िया बढ़िया। हाँ बच्चे में है जान बसी। एक कॉल आएगा, उसको तुम उठाना, जो भी बतलाए मम्मी पापा सुनते जाना। क्या खाना, क्या जांच वाच दवाई, कब कब लगेगा टीका।
किलकारी कौन करेगी किलकारी माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी खुशखबरी दरवाजे खड़ी फैमिली सोच में पड़ी कैसे होगा सब बढ़िया बढ़िया हाँ बच्चे में है जान बसी एक कॉल आएगा उसको तुम उठाना जो भी बतलाए मम्मी पापा सुनते जाना क्या खाना क्या जांच वाच दवाई कब कब लगेगा टीका मान लोगे तो माँ बच्चे की सेहत पर लगना पड़ेगा टीका होते
अभियान में पूरे परिवार की हिस्सेदारी निभा रही है अपनी जिम्मेदारी। अब बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी, कौन करेगी किलकारी, कौन करेगी किलकारी, किलकारी। कौन करेगी किलकारी, अब बच्चे की सेहत की होगी बातें। नमस्ते। भारत सरकार ने एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी शुरू की है, जिसमें माँ बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी गर्भवती महिलाओं और उन परिवारों को दी जाती है जिनमें 1 साल से छोटे बच्चे हैं। ये जानकारी फोन कॉल के जरिए हर सप्ताह दी जाती है। ये सेवा एकदम मुफ्त है। माँ बनने की यात्रा कई पड़ावों से गुजरती है, कभी खुशी तो कभी कोई नई चुनौती। जैसे हर कदम पे आप अपने बच्चे के साथ हैं, वैसे ही किलकारी आपकी गर्भावस्था से बच्चे के 1 साल का हो जाने तक आपके साथ है, ताकि आप और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। हम तो साथ हैं ही, आपको भी हमारा साथ देना है। किलकारी के हर संदेश को आप और आपका परिवार मिलकर पूरा सुने। इसकी जानकारी अन्य गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को भी दें। भारत सरकार की इस मुफ्त मोबाइल सेवा का लाभ लेने के लिए आज ही अपनी आशा या एएनएम से पंजीकरण करवाएं। आपके मोबाइल पर किलकारी कॉल 012444516660 नंबर से आएंगे, और यदि आपसे वो छूट जाए या कोई संदेश दोबारा सुनना चाहें तो अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 14423 डायल करके सुन सकते हैं। तो फिर आपको किस बात का इंतजार है? अपनी आशा या एएनएम से बात करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर भारत सरकार के RCH पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर का पंजीकरण करवाएं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से खास संदेश। क्या आप गर्भवती हैं? क्या आपका बच्चा 1 साल से छोटा है? अगर हाँ, तो अपनी गर्भावस्था या बच्चे की आयु का पंजीकरण आज ही आशा एएनएम के पास या सरकारी अस्पताल में करवाएं और पाएं अपने मोबाइल फोन पर भारत सरकार की किलकारी मोबाइल सेवा एकदम मुफ्त। इस सेवा में आपके मोबाइल पे हर सप्ताह आएगा एक कॉल और देंगे जानकारी माँ बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हर छोटी से छोटी चीज की। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इनमें ही तो आपकी जान बसी है ना? तो फिर किलकारी सेवा अपने मोबाइल पे आज ही शुरू करवाइए और बताइए कि कितनी परवाह है आपको माँ बच्चे की। कौन करेगी किलकारी, कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। कौन करेगी किलकारी, कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी। नमस्ते। भारत सरकार ने एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी शुरू की। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से खास संदेश। क्या आप गर्भवती हैं? क्या आपका बच्चा 1 साल से छोटा है? अगर हाँ, तो अपनी गर्भावस्था या बच्चे की आयु का पंजीकरण आज ही आशा एएनएम के पास या सरकारी अस्पताल में करवाएं और पाएं अपने मोबाइल फोन पर भारत सरकार की किलकारी मोबाइल सेवा एकदम मुफ्त। इस सेवा में आपके मोबाइल पे हर सप्ताह आएगा एक कॉल और देंगे जानकारी माँ बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हर छोटी से छोटी चीज की। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं,
इनमें ही तो आपकी जान बसी है ना? तो फिर किलकारी सेवा अपने मोबाइल पे आज ही शुरू करवाइए और बताइए कि कितनी परवाह है आपको माँ बच्चे की। किलकारी, कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। नमस्ते। भारत सरकार ने एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी शुरू की है, जिसमें माँ बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी गर्भवती महिलाओं और उन परिवारों को दी जाती है जिनमें 1 साल से छोटे बच्चे हैं। ये जानकारी फोन कॉल के जरिए हर सप्ताह दी जाती है। ये सेवा एकदम मुफ्त है। माँ बनने की यात्रा कई पड़ावों से गुजरती है, कभी खुशी तो कभी कोई नई चुनौती। जैसे हर कदम पे आप अपने बच्चे के साथ हैं, वैसे ही किलकारी आपकी गर्भावस्था से बच्चे के 1 साल का हो जाने तक आपके साथ है, ताकि आप और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। हम तो साथ हैं ही, आपको भी हमारा साथ देना है। किलकारी के हर संदेश को आप और आपका परिवार मिलकर पूरा सुने। इसकी जानकारी अन्य गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को भी दें। भारत सरकार की इस मुफ्त मोबाइल सेवा का लाभ लेने के लिए आज ही अपनी आशा या एएनएम से पंजीकरण करवाएं। आपके मोबाइल पर किलकारी कॉल 012444516660 नंबर से आएंगे, और यदि आपसे वो छूट जाए या कोई संदेश दोबारा सुनना चाहें तो अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 14423 डायल करके सुन सकते हैं। तो फिर आपको किस बात का इंतजार है? अपनी आशा या एएनएम से बात करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर भारत सरकार के RCH पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर का पंजीकरण करवाएं। किलकारी, कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। कौन करेगी किलकारी, कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। खुशखबरी दरवाजे खड़ी, मैं बोली सोच में पड़ी, कैसे होगा सब बढ़िया बढ़िया। माँ बच्चे में है जान बसी, एक कॉल आएगा उसको तुम उठाना, जो भी बतलाए मम्मी पापा सुनते जाना। क्या खाना क्या जांच वाच दवाई कब कब लगेगा टीका। मान लोगे तो माँ बच्चे की सेहत का रखना पड़ेगा टीका। वो देखभाल में पूरे परिवार की हिस्सेदारी, सरकार तो निभा रही है अपनी जिम्मेदारी। कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। कौन करेगी किलकारी, कौन करेगी किलकारी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से खास संदेश। क्या आप गर्भवती हैं? क्या आपका बच्चा 1 साल से छोटा है? अगर हाँ,
तो अपनी गर्भावस्था या बच्चे की आयु का पंजीकरण आज ही आशा एएनएम के पास या सरकारी अस्पताल में करवाएं और पाएं अपने मोबाइल फोन पर भारत सरकार की किलकारी मोबाइल सेवा एकदम मुफ्त। इस सेवा में आपके मोबाइल पे हर सप्ताह आएगा एक कॉल और देंगे जानकारी माँ बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हर छोटी से छोटी चीज की। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इनमें ही तो आपकी जान बसी है ना? तो फिर किलकारी सेवा अपने मोबाइल पे आज ही शुरू करवाइए और बताइए कि कितनी परवाह है आपको माँ बच्चे की। कौन करेगी किलकारी, कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। नमस्ते। भारत सरकार ने एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी शुरू की है, जिसमें माँ बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी गर्भवती महिलाओं और उन परिवारों को दी जाती है जिनमें 1 साल से छोटे बच्चे हैं। ये जानकारी फोन कॉल के जरिए हर सप्ताह दी जाती है। ये सेवा एकदम मुफ्त है। माँ बनने की यात्रा कई पड़ावों से गुजरती है, कभी खुशी तो कभी कोई नई चुनौती। जैसे हर कदम पे आप अपने बच्चे के साथ हैं, वैसे ही किलकारी आपकी गर्भावस्था से बच्चे के 1 साल का हो जाने तक आपके साथ है, ताकि आप और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। हम तो साथ हैं ही, आपको भी हमारा साथ देना है। किलकारी के हर संदेश को आप और आपका परिवार मिलकर पूरा सुने। इसकी जानकारी अन्य गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को भी दें। भारत सरकार की इस मुफ्त मोबाइल सेवा का लाभ लेने के लिए आज ही अपनी आशा या एएनएम से पंजीकरण करवाएं। आपके मोबाइल पर किलकारी कॉल 012444516660 नंबर से आएंगे और यदि आपसे वो छूट जाए या कोई संदेश दोबारा सुनना चाहें तो अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 14423 डायल करके सुन सकते हैं। तो फिर आपको किस बात का इंतजार है? अपनी आशा या एएनएम से बात करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर भारत सरकार के RCH पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर का पंजीकरण करवाएं। किलकारी, कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। कौन करेगी किलकारी, कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। खुशखबरी दरवाजे खड़ी, फैमिली सोच में पड़ी, कैसे होगा सब बढ़िया बढ़िया। माँ बच्चे में है जान बसी, एक कॉल आएगा, उसको तुम उठाना, जो भी बतलाए मम्मी पापा सुनते जाना। क्या खाना, क्या जांच वाच दवाई, कब कब लगेगा टीका। माँ डरोगे तो माँ बच्चे की सेहत का रखना पड़ेगा टीका। वो देखभाल में पूरे परिवार की हिस्सेदारी, सरकार निभा रही है अपनी जिम्मेदारी। माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। कौन करेगी किलकारी, कौन करेगी किलकारी, किलकारी। नमस्ते। भारत सरकार ने एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी शुरू की है, जिसमें माँ बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी गर्भवती महिलाओं और उन परिवारों को दी जाती है जिनमें 1 साल से छोटे बच्चे हैं। ये जानकारी फोन कॉल के जरिए हर सप्ताह दी जाती है। ये सेवा एकदम मुफ्त है। माँ बनने की यात्रा कई पड़ावों से गुजरती है, कभी खुशी तो कभी कोई नई चुनौती। जैसे हर कदम पे आप अपने बच्चे के साथ हैं, वैसे ही किलकारी आपकी गर्भावस्था से बच्चे के 1 साल का हो जाने तक आपके साथ है, ताकि आप और बच्चा
दोनों स्वस्थ रहें। हम तो साथ हैं ही, आपको भी हमारा साथ देना है। किलकारी के हर संदेश को आप और आपका परिवार मिलकर पूरा सुने। इसकी जानकारी अन्य गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को भी दें। भारत सरकार की इस मुफ्त मोबाइल सेवा का लाभ लेने के लिए आज ही अपनी आशा या एएनएम से पंजीकरण करवाएं। आपके मोबाइल पर किलकारी कॉल 012444516660 नंबर से आएंगे और यदि आपसे वो छूट जाए या कोई संदेश दोबारा सुनना चाहें तो अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 14423 डाल करके सुन सकते हैं। तो फिर आपको किस बात का इंतजार है? अपनी आशा या एएनएम से बात करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर भारत सरकार के RCH पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर का पंजीकरण करवाएं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से खास संदेश। क्या आप गर्भवती हैं? क्या आपका बच्चा 1 साल से छोटा है? अगर हाँ, तो अपनी गर्भावस्था या बच्चे की आयु का पंजीकरण आज ही आशा एएनएम के पास या सरकारी अस्पताल में करवाएं और पाएं अपने मोबाइल फोन पर भारत सरकार की किलकारी मोबाइल सेवा एकदम मुफ्त। इस सेवा में आपके मोबाइल पे हर सप्ताह आएगा एक कॉल और देंगे जानकारी माँ बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हर छोटी से छोटी चीज की। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इनमें ही तो आपकी जान बसी है ना? तो फिर किलकारी सेवा अपने मोबाइल पे आज ही शुरू करवाइए और बताइए कि कितनी परवाह है आपको माँ बच्चे की। करेगी किलकारी, कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। नमस्ते। भारत सरकार ने एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी शुरू की है, जिसमें माँ बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी गर्भवती महिलाओं और उन परिवारों को दी जाती है जिनमें 1 साल से छोटे बच्चे हैं। ये जानकारी फोन कॉल के जरिए हर सप्ताह दी जाती है। ये सेवा एकदम मुफ्त है। माँ बनने की यात्रा कई पड़ावों से गुजरती है, कभी खुशी तो कभी कोई नई चुनौती। जैसे हर कदम पे आप अपने बच्चे के साथ हैं, वैसे ही किलकारी आपकी गर्भावस्था से बच्चे के 1 साल का हो जाने तक आपके साथ है, ताकि आप और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। हम तो साथ हैं ही, आपको भी हमारा साथ देना है। किलकारी के हर संदेश को आप और आपका परिवार मिलकर पूरा सुने। इसकी जानकारी अन्य गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को भी दें। भारत सरकार की इस मुफ्त मोबाइल सेवा का लाभ लेने के लिए आज ही अपनी आशा या एएनएम से पंजीकरण करवाएं। आपके मोबाइल पर किलकारी कॉल 012444516660 नंबर से आएंगे और यदि आपसे वो छूट जाए या कोई संदेश दोबारा सुनना चाहें तो अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 14423 डाल करके सुन सकते हैं। तो फिर आपको किस बात का इंतजार है? अपनी आशा या एएनएम से बात करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर भारत सरकार के RCH पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर का पंजीकरण करवाएं। किलकारी, कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। कौन करेगी किलकारी, कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। खुशखबरी दरवाजे खड़ी, फैमिली सोच में पड़ी, कैसे होगा सब बढ़िया बढ़िया। माँ बच्चे में है जान बसी, एक कॉल आएगा, उसको तुम उठाना, जो भी बतलाए मम्मी पापा सुनते जाना। क्या खाना
क्या जांच वाच दवाई कब कब लगेगा टीका। मान लोगे तो माँ बच्चे की सेहत का रखना पड़ेगा टीका। वो देखभाल में पूरे परिवार की हिस्सेदारी सरकार तो निभा रही है अपनी जिम्मेदारी। हाँ, बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। कौन करेगी किलकारी, कौन करेगी किलकारी। नमस्ते। भारत सरकार ने एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी शुरू की है, जिसमें माँ बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी गर्भवती महिलाओं और उन परिवारों को दी जाती है जिनमें 1 साल से छोटे बच्चे हैं। ये जानकारी फोन कॉल के जरिए हर सप्ताह दी जाती है। ये सेवा एकदम मुफ्त है। माँ बनने की यात्रा कई पड़ावों से गुजरती है, कभी खुशी तो कभी कोई नई चुनौती। जैसे हर कदम पे आप अपने बच्चे के साथ हैं, वैसे ही किलकारी आपकी गर्भावस्था से बच्चे के 1 साल का हो जाने तक आपके साथ है, ताकि आप और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। हम तो साथ हैं ही, आपको भी हमारा साथ देना है। किलकारी के हर संदेश को आप और आपका परिवार मिलकर पूरा सुने। इसकी जानकारी अन्य गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को भी दें। भारत सरकार की इस मुफ्त मोबाइल सेवा का लाभ लेने के लिए आज ही अपनी आशा या एएनएम से पंजीकरण करवाएं। आपके मोबाइल पर किलकारी कॉल 012444516660 नंबर से आएंगे, और यदि आपसे वो छूट जाए या कोई संदेश दोबारा सुनना चाहें तो अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 14423 डाल करके सुन सकते हैं। तो फिर आपको किस बात का इंतजार है? अपनी आशा या एएनएम से बात करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर भारत सरकार के RCH पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर का पंजीकरण करवाएं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से खास संदेश। क्या आप गर्भवती हैं? क्या आपका बच्चा 1 साल से छोटा है? अगर हाँ, तो अपनी गर्भावस्था या बच्चे की आयु का पंजीकरण आज ही आशा एएनएम के पास या सरकारी अस्पताल में करवाएं और पाएं अपने मोबाइल फोन पर भारत सरकार की किलकारी मोबाइल सेवा एकदम मुफ्त। इस सेवा में आपके मोबाइल पे हर सप्ताह आएगा एक कॉल और देंगे जानकारी माँ बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हर छोटी से छोटी चीज की। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इनमें ही तो आपकी जान बसी है ना? तो फिर किलकारी सेवा अपने मोबाइल पे आज ही शुरू करवाइए और बताइए कि कितनी परवाह है आपको माँ बच्चे की। कौन करेगी किलकारी, कौन करेगी किलकारी। माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। नमस्ते। भारत सरकार ने एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी शुरू की है, जिसमें माँ बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी गर्भवती महिलाओं और उन परिवारों को दी जाती है जिनमें 1 साल से छोटे बच्चे हैं। ये जानकारी फोन कॉल के जरिए हर सप्ताह दी जाती है। ये सेवा एकदम मुफ्त है। माँ बनने की यात्रा कई पड़ावों से गुजरती है, कभी खुशी तो कभी कोई नई चुनौती। जैसे हर कदम पे आप अपने बच्चे के साथ हैं, वैसे ही किलकारी आपकी गर्भावस्था से बच्चे के 1 साल का हो जाने तक आपके साथ है, ताकि आप और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। हम तो साथ हैं ही, आपको भी हमारा साथ देना है। किलकारी के हर संदेश को आप और आपका परिवार मिलकर पूरा सुने। इसकी जानकारी अन्य गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को भी दें। भारत सरकार की इस मुफ्त मोबाइल सेवा का लाभ लेने के लिए
आज ही अपनी आशा या एएनएम से पंजीकरण करवाएं। आपके मोबाइल पर किलकारी कॉल 0124 4451 नंबर से आएंगे और यदि आपसे वो छूट जाए या कोई संदेश दोबारा सुनना चाहें तो अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 14423 डाल करके सुन सकते हैं। तो फिर आपको किस बात का इंतजार है? अपनी आशा या एएनएम से बात करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर भारत सरकार के RCH पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर का पंजीकरण करवाएं। कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। कौन करेगी किलकारी, कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। खुशखबरी दरवाजे खड़ी, फैमिली सोच में पड़ी, कैसे होगा सब बढ़िया बढ़िया। हाँ बच्चे में है जान बसी, एक कॉल आएगा, उसको तुम उठाना, जो भी बतलाए मम्मी पापा सुनते जाना। क्या खाना, क्या जांच वाच दवाई, कब कब लगेगा टीका। मान लोगे तो माँ बच्चे की सेहत पर रखना पड़ी कभी का। वो देखभाल में पूरे परिवार की हिस्सेदारी, सरकार निभा रही है अपनी जिम्मेदारी। अब बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। कौन करेगी किलकारी, कौन करेगी किलकारी, किलकारी। नमस्ते। भारत सरकार ने एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी शुरू की है, जिसमें माँ बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी गर्भवती महिलाओं और उन परिवारों को दी जाती है जिनमें 1 साल से छोटे बच्चे हैं। ये जानकारी फोन कॉल के जरिए हर सप्ताह दी जाती है। ये सेवा एकदम मुफ्त है। माँ बनने की यात्रा कई पड़ावों से गुजरती है, कभी खुशी तो कभी कोई नई चुनौती। जैसे हर कदम पे आप अपने बच्चे के साथ हैं, वैसे ही किलकारी आपकी गर्भावस्था से बच्चे के 1 साल का हो जाने तक आपके साथ है, ताकि आप और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। हम तो साथ हैं ही, आपको भी हमारा साथ देना है। किलकारी के हर संदेश को आप और आपका परिवार मिलकर पूरा सुने। इसकी जानकारी अन्य गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को भी दें। भारत सरकार की इस मुफ्त मोबाइल सेवा का लाभ लेने के लिए आज ही अपनी आशा या एएनएम से पंजीकरण करवाएं। आपके मोबाइल पर किलकारी कॉल 0124 4451 नंबर से आएंगे और यदि आपसे वो छूट जाए या कोई संदेश दोबारा सुनना चाहें तो अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 14423 डाल करके सुन सकते हैं। तो फिर आपको किस बात का इंतजार है? अपनी आशा या एएनएम से बात करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर भारत सरकार के RCH पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर का पंजीकरण करवाएं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से खास संदेश। क्या आप गर्भवती हैं? क्या आपका बच्चा 1 साल से छोटा है? अगर हाँ, तो अपनी गर्भावस्था या बच्चे की आयु का पंजीकरण आज ही आशा एएनएम के पास या सरकारी अस्पताल में करवाएं और पाएं अपने मोबाइल फोन पर भारत सरकार की किलकारी मोबाइल सेवा एकदम मुफ्त। इस सेवा में आपके मोबाइल पे हर सप्ताह आएगा एक कॉल और देंगे जानकारी माँ बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हर छोटी से छोटी चीज की। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इनमें ही तो आपकी जान बसी है ना? तो फिर किलकारी सेवा अपने मोबाइल पे आज ही शुरू करवाइए और बताइए कि कितनी परवाह है आपको माँ बच्चे की।
करेगी किलकारी, कौन करेगी किलकारी, माँ बच्चे की सेहत की होगी बातें सारी। It is once again Namaste. requested all the participants. Can you please give your valuable feedbacks or your like your hopes and dreams for Kilkari Mobile Academy in the panels behind the left and right, the corners, and please mention your state name so that we can work on those areas.
Thank you so much, participants. So please assemble all the participants who are standing behind the hall. Can you please take your seats? We are going to start the after lunch session. We will have a session on best practices and innovation from states and UTs on KMA program. This session will showcase key learnings from the program over the past years, highlighting best practices that have driven success. It will focus on the strategies that we aim to replicate for continued impact and scalability. States team from Andhra Pradesh, Bihar, and Chhattisgarh will present some of their best practices. So first, I would like to request Andhra Pradesh team to share their present the session on best practices. And to chair this session, I would request DDG sir, Sri Rakesh Maurya sir, and CEO from ARMMAN, Ms. Shreya Dev, to kindly chair the session, please. Now I would like to Andhra Andhra Pradesh to make a presentations to talk upon the best practices and innovation adopted on KMA. Welcome. Yes. Okay, so very good afternoon, Nandal. So once again, so thank you for the dignitaries who are sitting on the stage and off the stage. So we feel this is the great opportunity to share the best practices from the Andhra Pradesh regarding the Kilkari and Mobile Academy. So we are here. I'm Raju Lankapalli. I'm the state program manager from ARMMAN. I'm looking for the Andhra Pradesh Kilkari and Mobile Academy activities. So from Andhra, the government representatives. So my honorable additional directors are RMNCH, Dr. KVNS Anil Kumar sir. And also we are already diagnosed the Kilkari state champion, the statistical officer from the deputy director wing. So Y Gopalakrishna sir. So both people came from the state government. So with three of us, we would like to share about the Andhra Pradesh best practices. Okay. So the thing is, no, Andhra, this program is launched in May 2022, but the program effectively started in Andhra from January 2023. So I'm onboarded in Andhra in December 2022. So effectively implemented this program on January 2023. So the zero progress on the up to December. So whenever I visited to the state officials, I met with the state officials and we had a good we have a good introduction about our program. And the same time, the state officials also having the good interest to spread this program throughout all the districts. So
here we observe that how we are moving forward to effectively going on at the field level. So we have a good brainstorming activities at the state level, and with the state official suggestion and we created state level constitutional committee to implement this Kilkari and Mobile Academy program. Why? Because as a ARMMAN, as a state program manager, I am here to give the support for the state people. So I involve the state officials to involve them to implement this program. So in this context, we formed a constitutional committee in the chair of the additional director sir and deputy director and community process wing, as well as ARMMAN team like me. So we are all people formed a constitutional committee and we prepared some roles and responsibilities. So like this, we just started our journey in Andhra Pradesh. So we conduct the virtual meetings with the district people. How we form the state level committees, the same we are formed at the district level also. Why? Because we should give the some like recognition for the district people also. So we identify the district level people and we formed a district level committee. We given the responsibility to them to monitor this program. Likewise, the state and district and facility level, we formed a constitutional committees. Here the thing is directly I come to the slides here. So if you look at into the Andhra Pradesh slide, the major objective is here to enhance the maternal and child health outcomes in Andhra Pradesh by conducting the capacity building trainings to the frontline workers, as well as like to creating the massive awareness among the community. So this is the how we planned. First of all, already we have a good team at the ground level, not only in Andhra, in everywhere. We thought that this program belongs to the Ashas. In Andhra, the Ashas are the major grand ambassador for this Kilkari and Mobile Academy program. So likewise, only just we are step forwarded into the field. So in this way, we plan to give the training programs in the cascade model. We call forward the district people to the state level and we conducted the state level TOT program, TOT training. And the same thing we are conducted the district level. We insist the ASHA nodal officers who came from the facility level. We insist them to conduct the training program at their facility level with the ASHAs. So this kind of cascading model also we implemented. So that's why the best practices is showing intensively on ground activation, the capacity development and training, and data improvement and stakeholder engagement. So these are, see, like the ground activation means already I told you, the frontline workers, ASHAs and ANMs, they are actively involved in this program. We make them to involve in this program actually. Why? Because we created a short voice audio message also. We created short voice audio message and we shared to all the frontline workers to say about this entire the concept. So this is really help to us while entering into the field. So, and also who are the people already involved? I told you, these many people are involved in this program and these are all the people, the state level constitutional committee. So by them only, we are successfully implementing this program in Andhra Pradesh. And the best practices already I told. And the day one itself, in the January month, we started the program. In the February first week, we discussed the state officials and state officials came forward to print the Kilkari inbox number, outbox number and the MCP card. Why? Because the pregnant woman, once they registered in the RCH portal, each and every pregnant woman should get the MCP card. So this is the way we started our journey and we printed this Kilkari inbox, outbox number on the MCP card. And our additional director, sir, is emphasize the one program like one ASHA 5 PW. Like already each ASHA should meet with the 5 PWs in a day. Likewise, that ASHA should meet with the PW and sit with the PW to speak about the Kilkari concept. Not only for pregnant women, along with the pregnant women, the family members also should in that group. So the ASHA should create the awareness among the family members to regarding the Kilkari and Mobile Academy program. While doing the session, the ASHA is
motivating the PW to save Kilkari inbox number in their mobile phones. Why? Because the problem is the program is there, but ground level community is also there. Here the biggest problem is the lack of awareness about this concept. That is the what, first of all, we encourage the Ashas to save this Kilkari inbox number in the pregnant women mobile phones. Why? Because majority of the people, they are getting the Kilkari call like a spam. The majority of the people, they are disconnecting. So this is the way if one Asha 5PW activity is massively propagated in the ground level. And also at the state level, we are initiated the data validation. How many Ashas are creating the awareness about the Kilkari. So in our Kilkari MIS portal, there is a usage report. How many beneficiaries are dialed back to 14423. See, 14423, how many people are calling? So already we insist the Ashas to mobilize the beneficiaries while interacting with the beneficiaries, ask them to dial 14423. Whenever they dial back to the 14423, automatically the data will comes to our portal. So in Andhra, nearly monthly, the 10,000 beneficiaries are dialed back into the 14423. So this is the how we are started validating the data. And then another activity, we are conducting the capacity building trainings at the facility level. So during the capacity building trainings, we are mobilizing the Ashas to adopt this program as their own program. How it is like, no? Already in their territory, the 1,000 population, there is a Asha. So we are emphasizing the Ashas to exhibit this Kilkari number in the public places. So like wall writing activity. So whenever we are saying these words, no, they are taking this ownership and they are all started to writing the Kilkari inbox number, outbox number in their territory where the public places and where the public is gathering it there. The wall writing activity also one of the key parameter, the progress of the Kilkari in Andhra. And already I told no, the electronic and print media at the state level with the support of the additional director, sir, we involve all the electronic and print media wherever the program is going on at the state or district or facility level. Very next day, we are circulating the press note to the entire print media. Why? Because nowadays in the digital media and print media is playing a vital role. So about the Kilkari, what is importance of the Kilkari, we are propagated through the print and electronic media. Even today also a lot of Telugu well-reputed news channels came here to capture this entire the program. So we are utilizing this strategy to propagate about the Kilkari. And parallelly, we are coordinating with the Anganwadis also, like 3 A's, Asha, ANM, Anganwadi teacher, 3 A's concept. So already we are started at the district level, we are started given the training programs to the CDPOs. They are also actively involved in this program. So in Anganwadi centers, while coming to the pregnant women, they are giving the counseling sessions to the PWs about the Kilkari and Mobile Academy program. So what are all the possibilities at the ground level? We are completely utilizing the structure, the missionary, what we have from the government side, we are trying to utilizing all the platforms. And training and capacity building. Already I told no, the cascading approach we are following. The state level already we are done. District level we are giving the training programs. And once done the district level, the Asha facilitator went to the facility level and they are started giving the training program to the Ashas. Our job is not done by giving the training program. Our program officers, they are at the ground level. So we are identifying the low, poor performing blocks, poor performing facilities, and our POs are visiting that particular facility and they are giving the supporting hand to the Asha facilitator. After conducting the training program, our program officer and our facilitators together will go to the field visit and they are like interacting with the pregnant women to get the feedback about the Kilkari calls. And so the result achieved so far. So these are all by doing this, all the strategies. Now in the 2022, the Kilkari listenership, those who are listen more than 50% is around 27% of the beneficiaries. They are listening the more than 50% content.
And if you look at into the August 2024, the 34% of the beneficiaries, they are listening more than 50% content. So this is what we achieved. And the second thing is coming to the mobile academy. Actually, in the January 2023, we majorly focus on the mobile academy course. Why? Because the frontline workers, the 42,000 Ashas placed in Andhra Pradesh, they are all our frontline workers. So we started to mobilizing the Ashas to complete the mobile academy course. So during that time, the data issue, lot of data issues also there. So the mobile numbers is not matching. So the duplicate mobile numbers are there. So some of the Ashas are not getting the mobile academy course. So we triggered out these all the issues by conducting the awareness program at the ground level. We emphasize the ANMs to validate the ASHA data in RCH portal. So the ANMs actively involved to update the ASHA mobile number in the RCH portal, and weekly basis we are sharing the performance report. Additional directors are sharing the report to the all the districts. By sharing this report, we are creating the competition in between of the districts. Some first week, the one district is placed in the top place. So we are giving the instructions or guidelines below. The one of the district, Nellore district, is placed in the first place in this particular week. In the second week, there is a Prakasham district is stands there. So let's see, the Prakasham district is going to first place in the next week. So this is the way we are motivating the districts. The districts also actively involved to conducting the ASHA Mobile Academy course completion in the state. And already I told you, the Constitutional Committee formation is the very biggest achievement in Andhra. So why? Because the program with the one person is not possible. So unless we are not having the good wings at the state and district and facility level, so we are not achieving this much of results. So that's the way the committees are actively involved in this program. Already we designed the roles and responsibilities of the district level committees and facility level committees. And thoroughly, whenever we visit to the field, we directly met with the DM and HO, and along with the district team, we are conducting the review program. So how they are performing, if they have any doubts, we are sort outing the doubts. This is the way we are keep on monitoring the program at the state. And IEC material distribution. The starting of the program, the additional directors are giving the directives to the entire the districts. Whatever Kilkari material is there, all the material should print by the facilities and exhibit this IEC material in the health facilities. This is the guidelines given by the SAR. So automatically each and health facility, they are exhibited the Kilkari inbox number in the health facilities, and even the posters also. The ASHAs, every time they are sharing the Kilkari number and Mobile Academy process in their individual and the internal WhatsApp groups. This is the way we utilize the digital platform. And then case study. In the February month itself, I collected the one case study from the tribal district. The tribal district, the ANC is regularly listening the Kilkari call. So the son affected by the diarrhea, like diarrhea symptoms, while listening this Kilkari call, she followed the instructions guidelines by the Dr. Anita. She is coordinated with the nearby Asha. So likewise, she given the good feedback. That case study, I captured that, I documented, and I show with the state official team. So they also feel very happy. Yeah, this is the program is showing the good results at the ground level. So immediately this kind of case studies we developed, and also from the Asha. Asha, in Andhra, while doing the Mobile Academy course, one of the Asha is she prepared the notes. She prepares the notes, and after completion of the course, whenever she is conducting the field activities, she is utilizing that notes as a reference point. So this is the way this kind of case studies we developed and we shared with the state also. So this is the how in Kilkari and Mobile Academy, we are achieved the good result within the span of the 15 months time. This is all happened because of the state official support, and every time in the weekly basis, monthly basis, in the morning time or evening time. So what is the progress of the Kilkari? The asked by the additional director, sir. So whenever just walking around that chair, so what you are doing, what is the progress? So this kind of follow-up also made by the sir.
this kind of follow-up is not is a monitoring basis, just in the general discussion. By doing the general discussion by the state officials, I feel also very happy. Yes, we want to do something at the field level. So likewise only, and we met with the district collectors. See, at the state level already we are maintaining the good structure. So this the same structure wanted to be happen at the district level. So in this context, no, I went with the district, I went and met with the district collector and given the concept to the district collector. So they are also feel very happy after my visit. No, the district collector directly give the instructions to the local news channels to propagate about the Kilkari call in their news channels. So this is the way the district collectors given the guidelines. And also we are utilizing the FM channel. I given the interview to the FM channel more than 1 hour, up to 1 hour time. So like the FAQs, questions and answers they are asking, and then I am just giving the answers. So this interview also spread out entire the state, and all the people are listened. So this is the way we are using the print media, electronic media. And finally, just I wanted to say one thing: the print media, electronic media, this media people definitely there, and they are giving the good support. But that is entirely temporarily situation. Ultimately, our permanent scenario is the frontline workers is the like permanently they are giving their efforts to improve the listenership. That is the what I felt. Already I utilized the print media, news channels and FM channel and all the things. But if we monitor the program by the state and district people and frontline workers, then only we can achieve the good result. So finally, actually, this is the one thing. Recently, our state people, the state people is designed this poster. This is in the regional language. Actually, these 3 lines is contains about that. No, the what are all the components covered in the 72 messages. Like this is the child health and maternal health and immunization, family planning. Okay, so to listen about this all the information, please listen the Kilkari call by this number. So this is the way we just prepared, and like the maternal health related picture and this pictorial also we prepared. And this is really impressed by our Principal Secretary of Health, Andhra Pradesh. So sir is unveiled this poster, and they are given the directions to the all the health facilities to exhibit this poster in the all the health facilities. So this is also one of the good achievement in Andhra. So why? Because already we have a IEC material, but in the regional language, how the people are easily catch up. So this is the way with the team of our additional sir and statistical officer sir and me. We 3 of us really doing the brainstorming activity up to 10 or 11 o'clock at the night time. Definitely, I wanted to say proudly. Why? Because I am done this activity at the state level. So likewise only we are prepared this one. Ultimately, our Principal Secretary really impressed, and he is suggested to share this poster to the entire the facilities. So this is the way we are done this activity. So remaining posters also here with us. So remaining posters also here with us whenever we are visiting to the field. Like this is the wall writing activity. This is the wall writing activity done by the Ashas only. They are taking the ownership, and they are with their own expenses they are prepared in some of the districts. This is also one of the thing. But by doing this experiment, we are already proposing the state to this kind of wall writing activity to done by the all the districts. We are also there to give them some financial assistance. That is not a big issue. But this is the way the wall writing activity is also creating the massive awareness about the Kilkari and Mobile Academy program. This is the how our Ashas are visiting to the field, and they are conducting the awareness IPC session with the pregnant women and their family members. Already I told no, the pregnant woman is not only one person, our target people. Along with the pregnant women, the family members also must be know about the Kilkari concept. Why? Because the majority of the pregnant women, they are not having the mobile phones. Majority of the pregnant women, their husbands having the mobile number. So we are giving the IPC session, interpersonal communication to the
entire family members. So this is the way we are doing the program. And recently in August 15th, the districts take one prestigious activity. So in Independence Day, there is a parade. So like in presence of the district collector, there is a parade is going on. So this is the branding vehicle, MCH branding vehicle. In the MCH branding vehicle, the entirely vehicle is covered by the Kilkari number. So this is entirely covered by the Kilkari number, and in presence of the district collector, this parade went very well. And also our Ashas, around 30 to 40 placards they prepared. They prepared and they're completely covered entire the ground by showing the Kilkari inbox number and outbox number. So we are utilizing the frontline workers or efforts like this. And then this is already I told you, we are meeting with the district collector and we are sensitizing about the Kilkari. Why? Because we are taking the district and medical health officer support. And in advance, in the forwarded way, why can't we involve the bureaucrats in this program? So that's the way we are meeting with the district collector. They are also progress. They are also positively involved and they are also very happily encouraging to coordinate with the district team. So this is the way we are doing. So this is all about Andhra Pradesh best practices. Thanks a lot. Finally, these are the pictures. Recently in the Poshan Mah, September 1st week, our Ashas and Anganwadis ANMs are arranged this kind of like Rangoli. So with the nutritional foods in the Anganwadi center. So whenever the pregnant women came, no, they're simply sitting here and our Asha is started counseling sessions to the ANC and PNC. This is not happening in the one district. This is happening around 10 to 11 districts. Yes. Thanks a lot. Sir, please. Yes. Nothing more. But what I would like to say is, most of the people say that medical and health department is useless. They don't have much confidence. So we took up a challenge and we have done it without anybody's help. When I say without anybody's help, I mean IAS officers. IAS officers take the credit of everything which is done by us, and they will laurels at the central level or the state level. So that was the first idea. Number two, I am always open. I am not frightened to tell. Number two, with teamwork, we can do anything. I never did. I just used to give them some ideas, and then they used to come back that this is what you have done, and I used to give you some corrections, and they have done it a lot. That is the second aspect. Third, we have a lot of confidence on our ground level staff. They do a lot of work. The only thing is they do not have proper guidance. They do not know how to do the thing. They want to do, but they do not know how to do it. So we told them in a simple, understandable language how to deliver the goods. And last but not the least, we had a good team of MH, not Kilkari alone. We have a team of maternal health which takes care of everything. Nobody will say this is not my domain of work and I don't work here. This is the work of Razu, this is the work of... Whatever we say, they used to do it. And this is how we have gone ahead, and we hope we will be furthering in our efforts, and then we will show much more improvement. I think 100% is completed in Mobile Academy. We will be doing 100% listenership also in Kilkari also. And we hope with all the blessings of the madams and sir, and anybody who wants to have a study, you can always come down here. I think two states are studying. One is from Karnataka, one is from the other day, some other girl has come. They both are studying how we have made Kilkari a good initiative and how we have involved the community in that also. Thank you. Thank you.
Thank you. Thank you, Mr. Raju and Mr. Anil Kumar for making a wonderful presentation on the best practices and innovation adopted in Andhra Pradesh. The initiatives taken by the Andhra Pradesh is very good and I suggest that other states who are implementing the KMA program, they can explore these possibilities at the own state level and see what impacts can be done, what impact will be on the KMA. If this feels good, it can be rolled out by the ARMMAN team at the central level for all the states and UTs. And now the next presentation from the Chhattisgarh. Mr. Raja will from state program manager will make a presentations. Good afternoon, everyone. From Chhattisgarh, I have my colleague Kiran Kumar. He will present and I will support him. Thank you, Raja sir. Good afternoon, everyone. I'm Kiran Kumar, State Program Manager, Chhattisgarh. So I'm here to discuss about the best practices from Chhattisgarh regarding Kilkari Mobile Academy program. So basically, I would like to give you a background about the program. This program was started in 2017 and followed by some COVID factors and because of other health priority programs in the state. The program was being implemented, but the focus and ownership of the program was not so well from the government side. They were trying to implement the program at their end, but due to some other priority programs and most of the things like it was not in all their review meetings. Sometimes the review meetings agenda is being missed in the review meetings, and basically the systematic approach of the program is being disrupted. So keeping that in mind, we all come up, me and Raza sir and everybody come up with a plan, a tool, basically district action plan, a tool, which includes all the predefined actions and targets from district level to block level to facility level, where each and every officials from the districts and blocks and also from the field, what's their role in implementing KMA, not only in implementing, but also its monitoring, its follow-up, its awareness, its reach. And so these were all included in this document. So the main objective of this district action plan, sorry, just a second. So the district action plan is a strategic framework aimed to integrate Kilkari and Mobile Academy within the health systems for better program implementation, data strengthening, and awareness, reach, and progress of the program at district, block, and field levels. The need of district action plan for Kilkari and Mobile Academy was developed to ensure effective implementation at various levels. So basically, this district action plan was developed keeping in mind contributing to the health outcomes, health indicators, also those indicators which are responsible for smooth implementation, and maternal and child health indicators, which are together combinedly documented into a document, and also the process for achieving those indicators, the steps which would be taken from the state level to district level and the block level regarding, for example, compliance of state directives issued from state level to district level and compliance of those letters at block level. Integrating Kilkari Mobile Academy as agenda in district review meetings, block review meetings, and also in DHS review meetings. So basically, I would like to give a glimpse of a tool. What does tool actually, district action plan tool actually includes?
So district action plan includes district profile, like how many the HR number of HRs at different levels, like the district data managers, block data managers, number of ASHAs, ANMs, RMNCH counselors, district consultants, RMNCH consultants, and many other people who are working for health outcomes. Sort of the basic process was we prepared this DAP document, and the document was further piloted in Bastar district with some of the officials, which includes Chief Medical and Health Officer, District Program Manager NHM, District Data Manager, RCS Nodal, RMNCH Consultant, District ASHA Coordinators, and District Block Coordinators. So these were the designated people who combined for a one-day activity at the district level. We all together come up with a plan, keeping in focus the gaps we have found till that time. What are the gaps are there in implementing Kilkari and Mobile Academy, and also at which level the program is being, the reason of poor performance at field level, the gaps at different levels, like from district level, where are the gaps where Kilkari Mobile Academy is not able to review properly, or not able to pass a proper communication channel. So we all come together and we analyze the gap in the district. So based on those gaps, we have formulated some plans, like process, what will the process, what will the steps will be there, which can be taken by different government officials at different level. For example, for Kilkari and Mobile Academy, data strengthening is one of the important part that would be focused at block and district level. Based on these RCS data only, the Kilkari and Mobile Academy program is success at every levels. So the data cleaning process should be initiated. For example, if a data cleaning process should be initiated, so a letter should be coming from the district level to the block level, and these instructions should be passed to the frontline workers, like the ASHA coordinators at ASHA supervisors and ASHA coordinators at a block level. So the data needs to be collected of ASHAs, and that should be confirmed, validated, verified, and that to be entered again into the RCS portal, because most of the people might know this RCS, the RCS portal where ASHA's numbers are already there. It's been last 2 to 3 years where these RCS, these ASHA numbers are validated, registered ASHA numbers are validated. What it happened, like for the first time when we started this data cleaning activity, so most of the numbers of the ASHAs were unable to dial for the MA course was because those were the old numbers which they have lost, or some of the ASHAs were already left their work, some have been expired or something. So due to that reasons, data cleaning activity, a letter has been communicated from the CMHO office to the district and block level officials. Later on, RCS line lists was provided to the district and block ASHA coordinators, where they rectified and got correct phone numbers from the field level, and they were submitted to the block, where RCS data entry was done. Later, at district level, the data was verified and validated, and the ASHAs were able to dial the course. So I was telling a step-by-step process for one particular thing, that was data strengthening. The same process was followed for not only for data strengthening, also for like is awareness and promotion of Kilkari Mobile Academy. So what were the actions can be planned from the district level? So all this planning was done by the district officials. The main motive of this district action plan was to create ownership and awareness among the stakeholders, especially the government part, so that they own this program and implement this program, review this program, and take the complete ownership of implementing this program at their different levels. Please. Yeah, just to add on that, as you know, when we started implementing this program in Chhattisgarh, it was in January 23 when I joined. The majority of people, they were saying that it's ministry's program and the state was not taking that much initiative for that. So there were so many directives that has been issued by MD, NHM, and zonal level directives, state level directives, district level directives, even from ministry level directives, they were there. But that was not given that importance to this program
So we thought that what we can do extra so that we can ensure that buy-in should be there from the system end, that this is their own program. Ministry is just rolling this out to your state and you have to take it further. So it thought that unless until district should take that initiative, that buy-in, that this is their program and how they have to plan for that program, this would not be give that result which we are intended to. So we thought that let's district to come up with their own targets, because this program was totally based on the RCS data. So how to strengthen that data and what target district should have for them. So they have decided everything for them, and we developed one tool, as Kiran stated here, that was consists of everything, that what activity you have to do to strengthen RCH, particularly data entry, particularly this LMP dates, rejection. Because when we joined the rejection in Chhattisgarh, that was almost 56%. 56% data was being rejected just because of duplicate mobile number. So we thought, and Mobile Academy course, that was also not too much, because if we see overall Mobile Academy program, you will find that it's a very low hanging fruit. If you will go through with strategic direction, with strategic inputs, you will easily achieve that target, because you're having that service providers with you, those who have to complete that course within 240 minutes. Only thing is that the major challenge which we were facing, that their number was not appropriate in the RCH, and that was not being updated on a regular interval. Because of that, the Asha, when they were dialing, they were getting answer that you are not registered with RCS, and then you have to re-register and start the course. So these kind of challenges we were facing. So we have fixed the target for each and everything, like rejection, how to reduce rejection. Let district define the target for this particular quarter, how much you can achieve, what step you have to do, what processes you have to follow that, and who will be responsible. That tool defined that who will be responsible, whether it's data manager, whether it's a CMHO's responsibility to review the program on a monthly basis, what all the activity, what are the process, that was completely defined in that district action plan, and was being reviewed every during their review meeting at the block level and district level. And because of that, that has given a marvelous result within 6 months. After till I could say that September, I was struggling with the numbers. And after September, we got that the first district in entire program area was the Bemetara, that person who was not able to connect, Mr. Mayank Jain, and my team, PO Josna Sharma, she was there. They worked together, and finally, that under the Mitanins, which you used to say in Chhattisgarh, the Asha, huge numbers were there, because you can say that in Bemetara, I could remember there may be 2,200 Mitanis, 2,200 Ashas were there in particular district. And within 3 month time, this team, this entire team of BC, DC, and our PO, they work together very hard, and they make ensure that the Bemetara is the first district in entire program area who completed the saturated for a Mobile Academy course. And this has given, you can say that pathway for other districts. Apart after that, one by one, 6 districts saturated for Mobile Academy course, and still it's going on. And I'm very proud to say that my colleague Digvijay is here, and the person who was responsible for saturating the district in Chhattisgarh, Josna Sharma, now she is in Gwalior. She has also worked there very hard with good support from SPM, our SPM, Mr. Digvijay, and she has ensured that saturation of Gwalior district in Madhya Pradesh. So 6 districts in Chhattisgarh, 1 district in Madhya Pradesh. The credit goes to entire team, especially to the PO who was behind that. So because of that, not only a Mobile Academy program, instead of that, so many things, if you can say that Raju has also explained that, we have districts came up with the suggestions that we have to have that wall writing. So we don't have fund for wall writing, though we can provide that fund. It's not a big issue. But thing was that let them do, because if they feel that this is their program and they have to spread the message, then they have to come up with certain funds available with them. So they decided that we are having VHSNC fund at the village level. So they utilized that VHSNC fund and started the Asha
they started wall writing at their area. That has given huge, you can say, visibility to Kilkari program at the village level. NHM decided that we are having that audio visual system, how to spread the message of Kilkari, how the people should come, because either you can have, during VHSND, you will have a number of beneficiaries available at the platform. One platform that VHSND, second is PMSMA. So in PMSMA, you will having that most of the beneficiaries, they are entitled beneficiary for Kilkari, because 4 months onward, they used to come for PMSMA. So we decided that NHM has decided, we are having audio-visual system with us. Let's use that audio-visual system. We can run that Kilkari promotional video, which you have seen here also. That has to be run, and that was even given a good picture, the good spread to the Kilkari program in entire state. So this kind of, this was the result of that PMSMA, that DAP activity which we have done in Chhattisgarh. And after that, we decided Chhattisgarh was the first state who was taking the initiative to ensure that this is the ministry's program, and we started meeting with, yeah, sure. We started to meeting with district collectors. The Chhattisgarh was the first state. When we made to district collectors, they said, this is ministry's program and we are not aware of that. So we thought, this may fire back to us sometime later that you are implementing this program and district collectors, they are not aware of this. So we started that initiative also. And now 6-7 districts of Chhattisgarh, that was KMA program is included in DHS review meeting. Collectors are reviewing that on a regular basis. So this has given another vision to the state, and collectors are monitoring and providing support whichever is required in the state. Now we are working closely with WCD department on a pilot basis, so that we can ensure the AAA concept, as Raju said. So we are working on that, and hopefully while we will meeting next time, we'll share something on that. Thank you. Thank you, Mr. Raja. Now I would like to invite Mr. Pranay from Bihar. Mr. Pranay. सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रणय है और मैं टीम लीडर आशा प्रोग्राम हूँ, साथ ही साथ केएमए का नोडल ऑफिसर भी हूँ बिहार में। जैसा अभी 2 स्टेट का हमने सुना, बहुत सारी एक्टिविटीज उनके द्वारा की गई हैं। कुछ ने स्टेट पर किया कुछ एक्टिविटीज, और हमारा जो एक्टिविटीज है वो ज्यादातर हम लोगों ने डिवीजन पर किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे किलकारी प्रोग्राम का। वैसे तो स्टेट में हमारे 2016 में स्टार्ट हुआ, लेकिन ये एक तरह से नहीं के बराबर चल रहा था, या इस प्रोग्राम की जानकारी नीचे तक नहीं थी, या हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन पर नहीं था। लेकिन ये 2021-22 में फिर हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। एक ओरिएंटेशन हम लोगों ने सबसे पहले स्टेट लेवल पर रखा, जिसमें हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट 38 डिस्ट्रिक्ट के हमारे डीसीएम्स थे जो आशा प्रोग्राम के नोडल हैं। डिवीजन पर 9 डिवीजन के हमारे सारे डिविजनल आशा कोऑर्डिनेटर्स आए हुए थे। स्टेट के सारे प्रोग्राम्स, हमारे फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ एंड अदर्स प्रोग्राम के भी एसपीओस को हम लोगों ने इसमें इनवाइट किया था। वहाँ उनका ओरिएंटेशन हुआ। पूरे प्रोग्राम के साथ साथ एक मेजर जो पार्ट था हमारा मोबाइल एकेडमी और किलकारी का था। वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की, और डेटा की अगर बात हम देखेंगे तो जहाँ हम लोगों का डेटा एंट्री जो हो रहा था किलकारी में 51,000 जो डेटा एंट्री हुआ था, वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 25 लाख तक गया। उसके बाद अभी हम लोगों ने अगस्त तक उसमें 11,40,000 के आसपास हमारा डेटा एंट्री हो गया है। और अगर कंप्लीशन की बात करें तो 22-23 में जहां कंप्लीट 8% मात्र हो रहा था, अभी वो डेटा हमारा लास्ट ईयर 23% था और अभी 16% हो गया है।
स्टेट से हम लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया, स्टेट से एक डायरेक्टिव हमारे एमडी एनएचएम सर की तरफ से इशू हुआ और वो डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट तक गया। लेकिन मेन लीड जो लिया उन्होंने वो डिवीजन का था। हमारे डिवीजन पर डिविजनल आशा कोऑर्डिनेटर हैं, रीजनल प्रोग्राम मैनेजर है, रीजनल एमएनई है और साथ में हमारे स्टेट का एचएमआईएस सेल। इनके कोऑर्डिनेशन से सबसे पहले जो डेटा में डुप्लीकेसी थी, जैसा भी बताया गया कि डेटा रिजेक्शन हमारा 96% था, वो अब 31 पर आ गया है। तो ये प्रयास जो है हमारे पूरे कलेक्टिवली है, ये पूरे टीम का है, जिसमें कि हमारा आशा प्रोग्राम, साथ में एचएमआईएस की पूरी टीम, डिवीजन की टीम, डिस्ट्रिक्ट की टीम और ब्लॉक की टीम। जैसा सबने बताया कि आशा प्रोग्राम में हमारा बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, पूरा स्टेट से लेकर के ब्लॉक तक। काम तो हम लोगों ने कर दिया, लेकिन मेन दिखना था रिफ्लेक्शन इसका आशा के लेवल पर। वहां हमारे हर स्टेट में आशा फैसिलिटेटर भी हैं। तो बीसीएम्स के द्वारा, जो हमारे ब्लॉक में नोडल हैं, बीसीएम्स के द्वारा आशा फैसिलिटेटर्स का भी हम लोगों ने इस दोनों प्रोग्राम में ओरिएंटेशन कराया। सबको पता है आशा दीदी लोग भी आई हुई हैं। वो आशा दिवस होता है, महीने में एक बार होता है, वो लोग जाती हैं और हर फैसिलिटेटर क्लस्टर मीटिंग्स करती हैं। तो 4 क्लस्टर मीटिंग्स नॉर्मली हो जाती हैं। तो उनको इस प्रोग्राम के बारे में बताया गया, उनको ओरिएंट किया गया ब्लॉक लेवल पर। और आईसी में हम लोगों का, सर इसमें कोई पैसा नहीं है, तो हम लोगों को आशा डायरी का प्रिंटिंग का पैसा हम लोगों के पास अप्रूव था। उसमें हम लोगों ने एक डेडिकेटेड पेज इस दोनों प्रोग्राम के लिए हमने दिया, ताकि हमारी आशा दीदी तक ये इंफॉर्मेशन जाए, इस प्रोग्राम के बारे में जाए कि हमारा किलकारी क्या है और मोबाइल एकेडमी क्या है। और उसमें नंबर्स भी हम लोगों ने डाले और मेरा नंबर सारे ब्लॉक वालों के पास में है कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं, इवन आशा तक मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर जो गया हुआ है। तो वो लोग उस प्रोग्राम को जब समझें तो उसमें जो डेटा एंट्री हम लोगों का था, पहले जो रिजेक्शन होता था, अब डेटा पंच भी हम लोग का ठीक हो रहा है, जिसके कारण आप देखेंगे डेटा हमारा बढ़ करके, जो मैंने बताया भी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 25 लाख था और अभी 11,40,000 के लगभग क्लीन डेटा है। अब इसको हम लोग देखते हैं तो कैसे हुआ, अब बेनिफिशियरी सुनती हैं कि नहीं सुनती हैं, जैसा बहुत क्लियरली बताई थी आशा दीदी लोग। तो इसमें हम लोगों ने उनको बोला कि जो नंबर है आप बेनिफिशियरी के मोबाइल में आप सेव कर दें। जो नहीं कर सकते हैं नॉर्मली लोग कर लेते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं आप उसको नंबर सेव कर दीजिए। जैसा बताया भी गया कि वो आता है तो कभी कभी वो स्पैम जैसा भी दिखता है, तो वो काट देते हैं लोग, फिर उसको सुनते नहीं हैं। तो उसको जब सेव रहता है तो स्पैम नहीं दिखता है, तो नंबर आया तो फिर उसको लोग सुनने लगे। लिसनरशिप की भी बात करें तो इसमें हमारा टाइमिंग बहुत ज़्यादा है और ग्रेजुएशन भी है हमारा, 16% बेनिफिशियरी का इसमें गया है। तो इस तरह से हम देखें कि धीरे धीरे करके इस प्रोग्राम का रीच हम लोगों ने बढ़ाया और आज हमारी बेनिफिशियरी बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम को सुन भी रही हैं और डेफिनेटली ये रिफ्लेक्ट करेगा हमारे मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम पर। अब हम बात करते हैं मोबाइल एकेडमी की। मोबाइल एकेडमी में भी सेम प्रॉब्लम हम लोगों के साथ में था, डुप्लीकेसी था उनका नंबर जो आरसीएस पोर्टल पर था। 2 मिनट और, ठीक है सर, बस तुरंत समाप्त करते हैं। तो मोबाइल एकेडमी में भी सेम हम लोग का इशू आ रहा था। तो वहां से फिर टीम जो थी हमारे जो इसने काम किया किलकारी में, सेम काम हम लोगों ने इसमें कराया, डेटा क्लीन हुआ। और ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सिर्फ मई महीना में 10,000 आशाओं ने मोबाइल एकेडमी कोर्स को कंप्लीट किया है। और अभी हमारा अचीवमेंट जो है सितंबर तक में 58% हो गया है। और हम लोगों ने टारगेट रखा है कि इस बार मोबाइल एकेडमी में कम से कम 70 to 80% हम लोग करेंगे।
और मेरा 7 डिस्ट्रिक्ट नहीं 7 ब्लॉक्स में पूरी आशा ने मोबाइल एकेडमी का कोर्स पूरा कर लिया है। 2 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो हम लोग एकदम 100% कंप्लीशन पर हैं, वैशाली और शिवहर। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में 2 से और भी ज्यादा नीचे लाइन में 4-5 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पूरा कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रणय जी। थैंक यू सर। जो स्टेट से जो हमें इनिशिएटिव्स और एफर्ट जो मिले हैं वो वाकई अच्छे हैं, लेकिन इस पे अभी थोड़ा और भी काफ़ी कुछ करने को है। मेजर जो मुझे अभी जो फील हुआ है कि मेनली है कि अवेयरनेस एट द ग्राउंड लेवल पे वो अभी थोड़ा सा वीक पॉइंट है, जिसके लिए हमें एफर्ट्स करना चाहिए, चाहे वो बेनिफिशरीज के लेवल तक का अवेयरनेस हो, चाहे वो आशा के लेवल। क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशंस यही मेरे को समझ में आया कि आशा को अभी भी वहाँ पे नहीं पता है। बहुत सारे लोगों एरियाज हैं जहाँ पे उनको केएमए के बारे में भी नहीं पता। तो एफर्ट्स हमें यही करना चाहिए कि एटलीस्ट अगर बेनिफिशियरी और आशास को अगर पता होगा कि ये ऐसा कोई प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और ये हम लोगों के बेनिफिट के लिए है, तो वो खुद ही डिमांड करेंगी स्टेट अपने जो भी उनके सीएचओज हो गए या फिर ब्लॉक लेवल पे कि ऐसा प्रोग्राम है, हमें ऐसे करना है। अगर आपने नहीं इम्प्लीमेंट किया है तो उसको आप इम्प्लीमेंट करें। अगर डिमांड अगर हमारे ग्राउंड लेवल से अगर उठनी शुरू होगी तो इमिडिएटली हायर लेवल को हर हालत में पूरा करना होगा। तो वो एक हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना होगा कि ताकि जितना भी हम अवेयरनेस हम फैला सके, वो एक मेजर एफर्ट्स हमें देखना होगा कि कैसे उसको कर सकते हैं। जो स्टेट्स ऑलरेडी जो एफर्ट्स ले रहे हैं कि बाय कंस्टिट्यूटिंग ए कमिटी इम्प्लीमेंटेशंस एट द लाइक जैसे बिहार एवरी आशा दिवस दे आर सेलिब्रेटिंग, तो ड्यूरिंग दैट platform they can create the awareness about the KMA, and some other state are also using the some pamphlet. But I feel that if every facilities either at the sub center or PSC level, if we have the some kind of posters display at the PSC level, this is the at the entrance level, at the delivery room, or at the where the doctor is seeing the patients, and agar we if we show the some kind of pamphlet at that level, so every beneficiary should know, okay, this is the program, and some kind of audio or video messages can be displayed. I have seen some of the places TV is available at the PSC level, to we can display some kind of every time this kind of efforts if we can meet, and that will be helpful for the expansions of the KMA and as well as for the benefit for ma'am. So I think thank you to everyone. It's actually very, very inspiring to see what's possible. It's possible to saturate districts and show that it can be done. Of course, it requires a lot of support from the state machinery. Very detailed district level plans are created. They are reviewed on a weekly basis. And I think most importantly, the message was you can't do it without onboarding the ASHAs, the ANMs, and the Anganwadis, the 3 A's, as it was pointed out. Each one has a critical and very important role to play. But it's great to see the progress. A lot has happened, I think, in the last 2-3 years from the states which have presented. There are many other states who've not presented, and I know for a fact that much innovation is happening in those states also. And I'm also hoping that this really inspires the new states who are coming on now, Karnataka, Goa, and Dadra, Daman. This is a fantastic program. It has huge impact on the ground for mothers and children. So really looking forward to seeing this spread through the whole country. And thank you everyone who presented the best practices. Thank you. Thank you so much, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, and Bihar team. Thank you, sir and ma'am, for sharing the session. Now we would like to break for the tea. Then after that, we will take the session on demonstration of MIS dashboard and features. So tea is ready at the right hand side. So please, we'll break for 15 minutes for tea. Then we'll come back again on our sheets so that we can start the session right after that.
क्यों दीदी? तो आज कितने परिवारों से मिली? दूसरों के लिए तो इतना समय निकालती हो, कुछ समय अपने लिए भी निकाल लो। इसमें आपका ही नहीं, सबका फायदा है। हम बात कर रहे हैं मोबाइल एकेडमी की। नाम तो सुना ही होगा और शायद इसके लिए अपना नाम एएनएम दीदी के पास दर्ज भी कराया होगा। मोबाइल एकेडमी एक ऐसा कोर्स है जो आपको माँ बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर आपका ज्ञान भी बढ़ाएगा और आपके काम में मदद भी करेगा, और वो भी बिना किसी फीस के। यही नहीं, इसे पास करने पर आपको सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और ये सब खुद डॉक्टर अनीता आपको समझाएंगी, ताकि आप ये बातें आसानी से दूसरों को बता भी पाओ और समझा भी पाओ। मोबाइल एकेडमी आपके लिए किसी स्कूल या कॉलेज से कम नहीं, और उतना ही जरूरी भी। पर इसके लिए आपको ना कहीं जाना है, ना समय देखना है, क्योंकि आपको जब समय मिले, जितना समय मिले, आप इस कोर्स को कर सकती हैं, क्योंकि ये आपके फोन पर है। हाँ हाँ, चाहे जैसा भी फोन हो। ये पूरा कोर्स सिर्फ 240 मिनट का है। पर डरो नहीं, आपको पूरा कोर्स एक साथ करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई काम बीच में आ जाए तो फोन काट दो और जब चाहे दोबारा शुरू कर दो। जहां छोड़ा था ये वहीं से ही शुरू हो जाएगा। तो आओ और देखो इस कोर्स को अपने फोन से कैसे करना है। अगर अब तक आपने अपना नाम और फोन नंबर ANMDD की मदद से RCH पोर्टल पर दर्ज नहीं कराया तो अभी कराओ, और अपने उस मोबाइल फोन का नंबर दो जिससे आप मोबाइल एकेडमी कोर्स करोगी। बस फिर एक नंबर याद रख लो, या इससे भी अच्छा, इससे अपने फोन पर डाल ही लो। ये नंबर है 14424। लो, हो गया आपका मोबाइल एकेडमी में दाखिला। बस ये नंबर लगाओ और शुरू हो जाओ। हाँ, अगर नंबर ना लगे तो अपनी ANM दीदी से बात करो। कहीं कोई गलत नंबर तो नहीं दे दिया गया, या आप तो किसी दूसरे नंबर से फोन नहीं मिला रही थी? जब आप पहली बार 14424 पर फोन लगाओगी तो आपको डॉक्टर अनीता के सहायक रमेश की आवाज सुनाई देगी। ये आपको कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे और आपका स्वागत करेंगे। मैं हूँ रमेश, डॉक्टर अनीता का सहायक। मैं आपको बताऊंगा इस कोर्स को करने का सही तरीका। उनकी पूरी बात ध्यान से सुनकर 2 का बटन दबाओ और कोर्स शुरू कर दो। अगर दोबारा सुनना हो तो 1 का बटन दबा दो। इस कोर्स में 11 भाग हैं और हर भाग में 4 पाठ। और आपको करना क्या है? बस सुनना है, समझना है, और जहां जहां निर्देश मिले उसके अनुसार अपने फोन पर 1 का बटन या 2 का बटन दबाना है। जब पूरा पाठ या भाग समझ आ जाए तो अगला शुरू कर दो। अगर कुछ चूक गया हो या दोबारा सुनना चाहती हो तो दोबारा या जितनी बार चाहो सुन लो। हर पाठ के अंत में आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 2 उत्तर दिए जाएंगे, जिनमें से कोई एक सही और एक गलत होगा। अपने फोन पर 1 का बटन या 2 का बटन दबाकर सही उत्तर चुन लो। बस सुनते जाओ, समझते जाओ, उत्तर देते जाओ। 11 भाग पूरे हो जाए तो फोन पर 2 का बटन दबा दो। अब आपको आपका रिजल्ट बताया जाएगा। जब तक पूरा संदेश ना सुन लो, फोन मत काटना। अगर पास हो जाओ तो बधाई हो। सरकार की तरफ से आपको मोबाइल एकेडमी सर्टिफिकेट मिलेगा। पर अगर पास नहीं भी हुए तो निराश मत होना। मोबाइल एकेडमी हमेशा आपके लिए खुला है। दोबारा ये कोर्स करो, प्रश्नों का उत्तर दो और नंबर पालो। आप ये कोर्स जितनी बार चाहे कर सकती हो और अपना ज्ञान डॉक्टर अनीता से सीख कर बढ़ा सकती हो। तो समय जाया ना करें, अभी के अभी ANM दीदी की मदद से अपना नाम और फोन नंबर RCH पोर्टल पर दर्ज कराओ। आखिर शुभ काम में देरी क्यों? नंबर एक बार फिर नोट कर लो, 14424।
क्यों दीदी? तो आज कितने परिवारों से मिली? दूसरों के लिए तो इतना समय निकालती हो, कुछ समय अपने लिए भी निकाल लो। इसमें आपका ही नहीं, सबका फायदा है। हम बात कर रहे हैं मोबाइल एकेडमी की। नाम तो सुना ही होगा और शायद इसके लिए अपना नाम एएनएम दीदी के पास दर्ज भी कराया होगा। मोबाइल एकेडमी एक ऐसा कोर्स है जो आपको माँ बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर आपका ज्ञान भी बढ़ाएगा और आपके काम में मदद भी करेगा, और वो भी बिना किसी फीस के। यही नहीं, इसे पास करने पर आपको सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और ये सब खुद डॉक्टर अनीता आपको समझाएंगी, ताकि आप ये बातें आसानी से दूसरों को बता भी पाओ और समझा भी पाओ। मोबाइल एकेडमी आपके लिए किसी स्कूल या कॉलेज से कम नहीं, और उतना ही जरूरी भी। पर इसके लिए आपको ना कहीं जाना है, ना समय देखना है, क्योंकि आपको जब समय मिले, जितना समय मिले, आप इस कोर्स को कर सकती हैं, क्योंकि ये आपके फोन पर है। हाँ हाँ, चाहे जैसा भी फोन हो। ये पूरा कोर्स सिर्फ 240 मिनट का है। पर डरो नहीं, आपको पूरा कोर्स एक साथ करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई काम बीच में आ जाए तो फोन काट दो और जब चाहे दोबारा शुरू कर दो। जहां छोड़ा था ये वहीं से ही शुरू हो जाएगा। तो आओ और देखो इस कोर्स को अपने फोन से कैसे करना है। अगर अब तक आपने अपना नाम और फोन नंबर एएनएम दीदी की मदद से आरसीएच पोर्टल पर दर्ज नहीं कराया, तो अभी कराओ और अपने उस मोबाइल फोन का नंबर दो जिससे आप मोबाइल एकेडमी कोर्स करोगी। बस फिर एक नंबर याद रख लो, या इससे भी अच्छा, इससे अपने फोन पर डाल ही लो। ये नंबर है 14424। लो, हो गया आपका मोबाइल एकेडमी में दाखिला। बस ये नंबर लगाओ और शुरू हो जाओ। हाँ, अगर नंबर ना लगे तो अपनी एएनएम दीदी से बात करो। कहीं कोई गलत नंबर तो नहीं दे दिया गया, या आप तो किसी दूसरे नंबर से फोन नहीं मिला रही थी? जब आप पहली बार 14424 पर फोन लगाओगी तो आपको डॉक्टर अनीता के सहायक रमेश की आवाज सुनाई देगी। ये आपको कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे और आपका स्वागत करेंगे। मैं हूँ रमेश, डॉक्टर अनीता का सहायक। मैं आपको बताऊंगा इस कोर्स को करने का सही तरीका। उनकी पूरी बात ध्यान से सुनकर 2 का बटन दबाओ और कोर्स शुरू कर दो। अगर दोबारा सुनना हो तो 1 का बटन दबा दो। इस कोर्स में 11 भाग हैं और हर भाग में 4 पार्ट। और आपको करना क्या है? बस सुनना है, समझना है और जहां जहां निर्देश मिले उसके अनुसार अपने फोन पर 1 का बटन या 2 का बटन दबाना है। जब पूरा पाठ या भाग समझ आ जाए तो अगला शुरू कर दो। अगर कुछ चूक गया हो या दोबारा सुनना चाहती हो तो दोबारा या जितनी बार चाहो सुन लो। हर पाठ के अंत में आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 2 उत्तर दिए जाएंगे, जिनमें से कोई एक सही और एक गलत होगा। अपने फोन पर 1 का बटन या 2 का बटन दबाकर सही उत्तर चुन लो। बस सुनते जाओ, समझते जाओ, उत्तर देते जाओ। 11 भाग पूरे हो जाए तो फोन पर 2 का बटन दबा दो। अब आपको आपका रिजल्ट बताया जाएगा। जब तक पूरा संदेश ना सुन लो, फोन मत काटना। अगर पास हो जाओ तो बधाई हो। सरकार की तरफ से आपको मोबाइल एकेडमी सर्टिफिकेट मिलेगा। पर अगर पास नहीं भी हुए तो निराश मत होना। मोबाइल एकेडमी हमेशा आपके लिए खुला है। दोबारा ये कोर्स करो, प्रश्नों का उत्तर दो और नंबर पालो। आप ये कोर्स जितनी बार चाहे कर सकती हो और अपना ज्ञान डॉक्टर अनीता से सीख कर बढ़ा सकती हो। तो समय जाया ना करें, अभी के अभी एएनएम दीदी की मदद से अपना नाम और फोन नंबर आरसीएच पोर्टल पर दर्ज कराओ। आखिर शुभ काम में देरी क्यों? नंबर एक बार फिर नोट Good कर लो। afternoon, everyone. Again, once again,
I'll request all the participants again to kindly wind up your tea break and come back to your seats, please. Actually, we are running out of time. Can we quickly assemble on our seats? Thank you. Now we have the session on demonstration on new MIS dashboard and features of Kilkari and Mobile Academy portal. So I would request ARMMAN team kindly present this session. And to chair this session, I would request DDG sir, Sri Rakesh Kumar Moria sir, and Mrs. Shreya Dev ma'am from ARMMAN to kindly chair the session. Hello, everyone, honorable delegates and all the participants. And I'm Sanat Kumar. I'm the technology director for ARMMAN. And it's an honor and privilege to be associated with this great Kilkari and Mobile Academy program and contributing towards the technology development after, my 30 years plus years of working in public sector and private sector and government globally. And helping pregnant ladies and children, it's very honorable experience. Okay, and thank you for that. And technology is a backbone of what we do. We're talking about high technology and high touch, and blending them together. So when we say technology in terms of for Kilkari and Mobile Academy, there are three major components that we deal with. We'll be talking about MIS, which is the front end that you see. But to feed everything to that MIS, we have IVR. IVR is a system that does all the dialing, telecom communication, to all the beneficiaries. So that is a complete integrated system that we have. And then you have a core engine that takes the data from RCH, runs various algorithms and does validation, schedules different messages for beneficiaries and sends to IVR, then receives the response back from IVR. And all that data are stored in core engine database. And then that's a transactional database. Then we have got the MIS, which you will see a little bit. And we pull that data and summarize it and showcase, various charts and graphs. So how the system is performing and measuring various KPIs are all done through MIS. And there are three things we are doing on these three components. The first one we are doing is we are enhancing the capacity, because 2 years ago, when we did the capacity analysis, it was very less. It's been drastically gone up because of the a lot of rejections have gone away. You have seen it already. Acceptance rate has gone up and still more to go. And so to support that, whatever bandwidth we had earlier, it's not going to support that. So we are increasing that bandwidth, and we did that to accommodate these 3 new states. And then we'll still have to add few more states going forward. And then there are plenty of on-hold data which is not getting processed, that we'll process that.
So that is increasing the capacity. That is just from the telecom side. Then the same way for the core engine, that also needs to be enhanced to process all these heavy volumes. And then the MIS as well, because the data size multiplies. So we need to enhance MIS to process that as well. So we are working on that. So that is the enhancing the capacity, then enhancing the product itself. Because a lot of the things that we learned from the existing product, we want to enhance it so that we don't have the same problem, going forward. There are certain limitations in the existing product, which has been very old, like, 1916, it has been running, and a lot of limitations because of the design, because of the technology. So we are enhancing the features so that it becomes easy to use, and a lot of the problems that we face in the field can be eliminated, with by adding these new features. And so that is the second thing we are doing, enhancing the product features. The third thing we are doing also is the innovation. Going forward, the technology keeps changing, and we have AI, machine learning, a lot of new technologies. So how can we use that to increase our accessibility, so that more acceptance is more from the beneficiary, and the stickiness is more, so that they keep coming back. And also their listenership also increases, the percentage they listen, how can we increase that? And how can we do better in training the ASHAs using the latest technologies? So all these things comes part of innovation. You will be hearing in the another talk, but that's part of the technology we are getting implemented within the technology. So those are the three major areas that we are working on in all these three components. And so today we are going to showcase what we are planning for MIS. It's not a finished product yet. We are still, in progress. And just to give you an idea about what the look and feel is going to be, and in the current MIS, how it is, and in the new MIS, how different it will look. So before we start that, we'll have a short presentation done by Nitish. He is heading the Kilkari and Mobile Academy technology. Here is Nitish. Will share with you a small presentation. Yeah. Hello everyone, myself Nitish Goel. So I will be taking you through the presentation which we have prepared for the MIS. So quickly I will go through with the current MIS portal overview. As far as you all will be working, you will be using the current MIS portal. So we know these are the current features of the existing MIS. So we know that current MIS supports around 25 reports for the various programmatic indicators that is available for both Kilkari and Mobile Academy programs. And these reports are can be downloadable easily with respect to, like, we can download in Excel format, with even in PDF formats for offline access. And lastly, we have the drill down facility in the, like, we can drill down with respect to the tabular format, like we can go till the block level, state, district and block level. And lastly, with help of these reports, we can have the trend analysis from the beginning of this KMA program. And we have given the link for the current MIS portal at the bottom of this presentation. Okay. So now I will move to the major enhancement which we are looking for MIS 2.0. So as we know, technology has upgraded, and this is the new time. So we need to transition from the existing tabular data. We need to showcase our data in a visual representation. So that is what we are telling. We are transitioning from the traditional tabular format to the visually appealing graphical interface. Secondly, we will be including geographic-based reporting. That is, we will be enhancing our visualization with the help of the geospatial data. That is, we will be showcasing the India map, and we can select state, district, so that we can reflect the numbers, reflect the data in the map format itself. So these two features will be helping us in improving the UI UX experience. So our interface will be much more faster, and smoother user interaction will be there with the new MIS. Then moving on to
even currently, whatever daily data syncing is there, there are certain issues which will be automated through the new MIS. And one more functionality which we are enhancing in the new MIS, that is the responsive design. So what you can do, you can view the new MIS across any device through any browser, right? So it will be user responsive. So that MIS2 is, I mean, that work is in progress, and we are designing it in such a manner that design will be user responsive. And lastly, it will be having better data management with respect to the streamlined operations. So coming to the new MIS 2.0 homepage, this is the indicative design we are currently working on. So you can see, like in the center, there is the India map, and on the left hand side and the right hand side, there are different graphical interfaces in form of graphs, charts. So which will be helpful for analyzing the data very easily for all the stakeholders of the system. So these are the graphical insights. So we can see we have one of the programmatic indicators such as incoming RCH, where have we three categories: received, accepted, and rejected. So whatever number you are seeing, these are just the sample data. These are not the actual data. So this is just for just for demonstration purpose. So similarly, we have even we will be showing a graph for the unique subscribers served and new subscriber added. So, I mean, we can represent data in various formats with respect to charts and graph. So that already we had a fruitful discussion with the SPMs yesterday regarding our MIS. So we will be taking inputs from the ministry as well as from the state officials and from the SPMs. And accordingly, we will work upon that, and we will see how we can best deliver the MIS 2.0 with respect to the design which is visually appealing, and with also with respect to the data representation. So now I will just showcase you the indicative demo. So as we can see, we have represented data across various charts and line graphs. And now we are able to see we are drilled down to state level. So currently, like in demo, we were representing Assam. We were selecting the Assam state. So this is just a short video. Okay, so as we discussed, so ultimately the benefits of enhanced MIS with respect to it will be like we will be having the enhanced data visualization. And as I earlier said, we will be have the geographic insight with respect to states and districts, and we can drill down till the block level, and we will have the faster data access. And as far the user is concerned, it will be user interface will be more engaging and more visual appealing, and it will be browser agnostic across all the mobile devices. You can use it for any devices, like for example tablets, mobile, or any other device with respect to PC or laptop. And not the least, it will be like whatever data we will be reflecting with the help of the charts or this in the visual appealing manner, it will be helpful for all the stakeholders to make decisions based on the data. So it will be helpful for even for the state officials. So now I will hand it over to Saurabh. He will be demonstrating you the old MIS and the new MIS prototype which we have developed as of today. Yeah, handing over to Saurabh. Thank you, everyone. Thank you, Nitish, and welcome, everyone. So, as we have launched 3 new states, Karnataka, Goa, and Dadra, Nagar, Haveli, and Daman and Diu. So, firstly, I will showcase the current MIS, where we are having the data on the current MIS. Yeah.
So this is our current MIS, and as we have launched 3 new states today, and we can see the calls have started going from second. So we can see Dadra Nagar Haveli, row number 7, Goa, row number 9, and Karnataka, row number 15. So we have made total 1400 calls in 2 days in Dadra Nagar Haveli, 2300 number of calls in Goa, and 234,000 calls in Karnataka. So these states we have already started making the calls. So Kilkari is finally launched in these 3 states, and we can have a round of applause for this milestone for having these new 3 states. And so this report particularly shows how many number of calls we are making on a daily basis, day on day, and how many number of calls have been successful, and out of these, how many number of calls, what is the listenership percentage on these calls. So bifurcation of those listenership percentages and billing total billable minutes and average duration of the calls for these states. So we can also see till date in these 2 states, we have made around 38 lakh number of calls. So we'll go to, yeah. Sure. I'm going to other reports. This is the Kilkari cumulative summary report. So this showcases us the data till previous day. So total number of unique beneficiaries served for these states in 2 days is 3,600 for Goa, 2,300 for Dadra Nagar Haveli, and Karnataka 3,89,000 beneficiaries we have served. So and total pan India till date we have served around 5 crore 90 lakh beneficiaries till date. So these 3 new states can request for their credentials to be created on the current MIS. They can share their they can share their phone numbers and email ID, and we can share the credential for these states with them. Now, before this, just you continue this. Just I would like to request from the state of Karnataka, Goa, and Dadra and Nagar Dadra and Nagar Railway Daman, please communicate the nomination of state nodal officers along with the email ID and the mobile number, so that the ARMMAN team can create a credential for assessing the KMA MIS dashboard. Okay, so that's the end of the session for us. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, Nitish, Sanath, and Saurabh for taking us through the enhanced features of the new MIS dashboard and revamped version of the Mobile Academy portal. Real-time tracking of performance of states will indeed be helpful in scaling up the program and improving the reach of this program through the length and breadth of the country. So the next session will be on future roadmap of Kilkari and Mobile Academy program, and it will be taken by Deputy Director MMP Cell, Rangoli Pathak ma'am. So I request ma'am to please come and deliver the talk. Sir, before I move, I request the chair to, if they have any inputs on. Sir. Achha, Chair. So I request Joint Director Statistics to please come on the stage too. My apologies. Good evening, everyone. Good evening, respected chair, respected senior officers, and state and other stakeholder partners.
So this is our last session of this workshop. It is on the future roadmap of Kilkari and Mobile Academy. So as you have learned from all the day that Kilkari is basically provide the information on maternal child health, immunization and family planning. So the current system of Kilkari is, as you know, that Kilkari is IVRS-based voice messages that reach directly to the beneficiary through their mobile phone. So when, as you know, that the RCH application is only the data source, and RCH will track the beneficiary of pregnant women and the child infant of mothers. And then simultaneously, Kilkari will automatically reaches their mobile phone, and then they will send the message directly to their beneficiary. The current system of Kilkari is only concentrated to primarily on the beneficiary, that is direct beneficiary, that is a pregnant woman and the child, infant of child, rather than it will concentrate on the families or other member of the families, that is especially husband. So we are aiming to modify our content, basically, which are concentrated on the other family member, especially husband, which has played a vital role to play in supporting the mother and the child care. Currently, Kilkari is being operational in 23 states and UT, along with their language preferences. Kilkari, we are ongoing our some processes on Kilkari that we, as you know, that currently we are in the physical server, so which has the limited capacity of storage and processing of data. So we are expanding towards the cloud-based server, which has the capability of scalability, and also the processing and reliability on the cloud-based server will enhance. We are also focusing our content to make it shorter, so that the beneficiary could spend a limited time and focus on certain areas. Our content is mostly focused on spatial important areas, so that the beneficiary could grab easily the important content in a shorter span of time. Now, as I already said, that we are improvise our content, and we are aiming that the content will be focused on the other family member and the husband also, so that the Kilkari content will be engaging to overall family member. So this approach is totally a holistic approach, so that the health information will goes to the entire family, and the support during the pregnancy or child caring will be provided to the pregnant woman and infant of child. Now we are also developing, Kilkari is exploring new and experimenting new things, and it will provide the option to the beneficiary to choose a dramatic story-based telling audio files, so that it will be more engaging and entertaining format, so that the beneficiary could engage with the content and act on the information more and more, so that the health outcome will be improved. Now, the way forward of Kilkari, we are also planning our Kilkari content to conduct, and we are also exploring our media platforms, so that, as you know, that most of the population across India are using social media platform. So we Kilkari, we cannot explore that social media platform as well, because it is most prominent to get or take information. So first we conduct the study whether the WhatsApp media platform will adopt our health information correctly or not, or whether the beneficiary will adopt this media platform as a health informatic or not. So we will conduct these study in certain state, so that we will find out whether its adaptability and feasibility performs very well or not.
Also, we are exploring or we are expanding our technology to predict the time slot preferred by the beneficiary. The advanced, they are machine learning programs so that we can learn from the beneficiary preferences to when the beneficiary more likely to engage with the particularly Kilkari content. So we will select only that time to send the beneficiary, to reach the beneficiary with the Kilkari content. There's also a provision of feedback mechanism. As we know that we are using the WhatsApp media, we are planning to use the WhatsApp media platform. So there is an option of using this social media platform to take a feedback from the beneficiary and their suggestion to improve our program regularly. As ED NHSRC also said that we have to evaluate our program regularly so that it will be improvised time to time. So the feedback mechanism plays one of the important key role to improvising our Kilkari content. We are also, as earlier, we are already conduct our migration from physical server to cloud server. And by March 2025, we are in the position to go live of this fully fledged cloud-based server Kilkari content. We are also in the process to modify our content, which are additionally focused on certain areas. As you know that we are focusing on the family planning, immunization, child care, antenatal care. But there are certain areas like nutrition, sanitation, exercise, and adequate rest, which are very necessary to reduce the MMR and IMR deaths. So to improve that, so we are introducing our content and we are additionally add these important areas in our content. Also, we are addressing as there is a limited capacity of physical server. We cannot expand our server due to its limitation. So there are most of the data are on hold. So when we are migrated from physical to cloud server, that on hold data will be taken care during the time period when we are go live towards the cloud-based server. We are also, as in the launch time, we our DG Stats have already said that we are in the process of launching these Kilkari and Mobile Academy in the 4th Northeastern state. So we are looking forward for that. And also we are in the position that we will expand our Kilkari and Mobile Academy services across India, obviously where the those states which are onboarded on the RCH application during the financial year 25-26 with their language preferences so that the beneficiary could connect easily. Now, what we are proposing in the WhatsApp Kilkari pilot study, that when we are in position to give the platform to the beneficiary as a WhatsApp media platform, then it will be accessible to both the beneficiary through iVirus also and through WhatsApp, so that the beneficiary who do not have the access of the smartphone or internet connectivity, they will able to receive that Kilkari messages. They will not be left out through our program. And through WhatsApp media platform, there are additional benefit of the WhatsApp that they can offer the interactive videos and more engaging compared to the passive listening of the beneficiary, audio-based messages through audio-based messages. And also through this, while interacting with the beneficiary, it will increase our engagement, user engagement, that is the beneficiary engagement, and the retention of the beneficiary. While interacting, while clarifying their doubts and giving their suggestion, they will provide the certain information so that they will connect with the health information which we have provided through Kilkari messages, and they will act accordingly. There's also an opt-in mechanism that is iVirus and through iVirus also and through SMS.
when the beneficiary uses the IVRS-based platform, they will receive 72 messages with the refined and refreshed content. Whenever we will modify the content, the modified content with the IVRS-based messages they will receive. And through WhatsApp media platform, they will receive the 72 messages with the interactive videos, text or images form. With the 1 to 2 quizzes also, so that they will feel more engaging and interactive. So this is the purview of WhatsApp. It will look like this when it will be roll out towards the states. You will got to know that how the video will perform. It will be more dramatic and story based, and it will simultaneously it will provide the health information as well, so that the beneficiary could easily connect with the messages. So now the Mobile Academy. So current system of Mobile Academy is also a audio-based e-learning course, especially to the health worker. It is purely the pre-recorded messages. It is IVRS based, obviously. The current system of beneficiary has some current system of Mobile Academy has some limitation that there's no touch point or feedback interactive sessions. Due to this limitation, the ASHA will loses their if ASHA has some clarity on certain topic, if they have some doubts on certain topic, they cannot ask or clear their doubts at that point of concern. So this is one of the limitation of Mobile Academy. Despite of this limitation, there is a certain good option in Mobile Academy as well, that there is a bookmarking system in the Mobile Academy course, so that the beneficiary, so that the health worker where they have been left out, they will start the training accordingly. So it will be a structured training, but it should not be go at a one go. All the sessions should not be completed at a one go. It is strictly linear navigated. Without the current system of Mobile Academy has no provision of topic selection, so that if health worker wants to select understand on certain topic like institutional delivery or breastfeeding or some family planning method, so there's no provision. It will follow a strict navigation from where they have been left out. So all these problems which are facing in the current system, we are taking care in the new version of Mobile Academy. So we have the provision of topic selection now, so that if ASHA has completed their course, or unless again they want to re-listen some topic or refresh their training on certain topic, so there is a provision now we are giving. And also we are revising our content and additionally provide certain new topics other than the RMNCH related program, that is non-communicable disease, cancer, hypertension, etc. And in future as well, whatever the health related information will be, or training course will be provided to the health worker, we will taking care through this course, e-learning course. So because of addition of this new additional topic, we are providing the lessons into a certain levels from primary to advanced, so that the health worker who are well versed in the certain primary level, they can choose the advanced version as well, and they will grab their knowledge through this training course. And the certificate will be provided at each level when they will pass that course. So in Mobile Academy course also, we are expanding our this training course, e-learning course during the financial year 25-26 with their language preference, so that the health worker could connect the content, because language is most barrier thing which the most of the person are facing. So that if it is being provided in their regional language, so it will be very helpful for the health worker to get the knowledge very easily. So this is the last. Thank you so much for attending and participating
this workshop. Thank you. Thank you, ma'am, for the elaborate presentation. Now we'll open the house for the feedback. If any participants from the states have any feedback to share, please share your feedback. Okay. Okay, so I think most of the participants had exhausted during the day. Still, you have some time if you have any comments or suggestions for the improvement of the KMA. Otherwise, we will go to the last sessions. Yeah. And before you speak, please introduce yourself. Hello. Good evening, sir. Myself, Tapusha. I am working here as a state vice manager, sir. So I just want to learn one thing, because the entire things is dependent on this LMP. So and we found that around 10 to 15% of LMP date is ASHA is collecting by mistake, and we are throughout the month we are getting receive the request that LMP date need to be changed in the RCS portal. So after once we are put this LMP date based on LMP IVR system and all other system is going on in Kilkari. If we change the LMP, it will be effective in the entire process, or sorry, it will be go as per by LMP date only, sir. I think ARMMAN team may like to comment on this. Yes, come. Yeah. So if you are changing the LMP and if it is updated in RCH, so the moment the RCH system updates Kilkari portal accordingly on the change date, the system will recalculate and the weeks are going to be changed. So suppose, let me give you an example. Suppose somebody is listening, say week 10 message. Now a LMP has been updated to say another 2 weeks ahead or maybe even 2 weeks behind. In both scenarios, it will change accordingly. But again, all the changes in RCH itself is something which probably Naveen can confirm. How much we really allow to change the LMPs? That is also one big consideration, isn't it? Yeah. So answer is very clear. If there are changes in RCH, Kilkari will automatically settle and your weeks are going to change. Clear? Thank you, sir. And sir, another request, sir. In KMA program, we are doing lots for the grassroots level. And my request is grassroots level is okay, and we need to motivate in the upper level also. And the upper level motivation, like the higher level bureaucrats and these mission directors, like, so the good and the best platform is Twitter and LinkedIn. Because sir, highest authority is always following this to social media, what we see in the national level. The promotion of KMA for in that level also is required. So it is our request, if it is considered, so it will be better for us. For this suggestion, we will explore with the ARMMAN team. They will compile the best innovation and practices adopted by the state. We will try to compile this and we'll circulate to all the mission director of the state and UT. These are the best practices innovation for the promotion of KM. And they can adopt any one of the
initiative, that kind of thing, we will explore the possibility to compile this. Thank you, sir. And to add, to address your this very same issue that you raised today, the very basic reason we included the best practices today in our workshop. That's the main reason, so that the states can go back to their team and then they can highlight what are the best practices being adopted by the certain states. So that's we have already started working in that direction, but obviously you are correct. We need to make it in a we need to reach out in a state in a more aggressive manner so that this program is successful. Thank you, sir. And sir, in regular manner, state can access these, centrally official Twitter or LinkedIn, so that the good practices from other state also, if they update in the regular manner in a weekly basis in the Twitter or a LinkedIn group, it will be circulated across the pan India, sir, very fastly, and it will be attractive to our high level, state level bureaucrats also, sir. And it will be support us because we also need sometimes pressure for them. So then only work is going very smoothly, sir. We are always here to support the states, whatever support they require from us. Thank you, sir. Thank you. Now, any more comments? Okay, so we now move ahead. So now I request Deputy Director MMP Cell, Mr. Rangoli Pathak ma'am, to please come and give a vote of thanks to the participants, please. Respected DDG sir, Rakesh Kumar Maurya, respected Joint Director, Statistics, Shri Nikhil Kumar Agrawal, all senior official officers from Ministry or State representative, our stakeholder, ARMMAN team and the UNICEF, I hope if somebody is here. Good evening to all of you once again. It is my honor and privilege to extend the vote of thanks for today's National Workshop and Mobile Academy. So I think most of the dignitaries have been left out, so I skipped their vote of thanks, and Nikhil sir has already given the vote of thanks to them. So firstly, I would like to vote thanks to Shri Rakesh Kumar Maurya sir for your warm welcome and remark, and your thought-provoking address and guidance will help our team to work in the right direction. Your expert moderation ensure focused and enriching decision. We are grateful for your leadership throughout the day. I would also gratitude to the presenter, Mr. Madhusudan, and the ARMMAN team for the detailed presentation on the importance of Kilkari and Mobile Academy and for showcasing the experience of ASHA worker and beneficiary. MMP team for presenting the current status of the program and introducing the new MIS dashboard. State Nodal Officer for sharing best practices for your respective states and ongoing innovation that are helping drive the success of Kilkari and Mobile Academy initiative. Special thank to Shri Nikhil Kumar Agrawal sir, Joint Director MMP, for your ongoing support in ensuring the success of today's event. Your dedication to the Kilkari and Mobile Academy program is greatly valued. I also wish to thank for your valuable guidance in organizing this workshop successfully. Without your continued support, this workshop wouldn't have been possible. I also thank to senior officers from various program division if they were there, for their presence and enormous cooperation in the organizing this event successful. None of this would be happen without immense effort of the organizing team from the ministry, especially from MMP team, HMIS team. Your hard work behind the scene has ensured the success of this workshop, and we thank you for your dedication and work.
I would again like to thank this opportunity to my team who has joined hand to organize this workshop successfully. Lastly, I would also like to thank participants, stakeholders, partners for active involvement uh, throughout the feedback throughout the day. Your commitment and the ideas will help us strengthen the Kilkari and Mobile Academy program as we continue working towards improving maternal and child health outcome. I was also very gratitude to all the staffs of Ashoka Hotel for their logistic support. An event of this dimension cannot happen overnight, obviously. Thank you all once again for making this workshop a resounding success. We look forward to continue collaboration in the important journey. Thank you so much. Thank you all. Just before closing the national workshop, just I would like to say something. When we finalized the concept for for organizing the national workshop on the KMA, and the date has been finalized, but thereafter I could not find any time to devote for this organization, the whole arrangement and the for making the this event. I fully devoted to my joint director Nikhil and the from the ARMMAN side to Rohit, Rangoli, and my MMP cell team. They have make all efforts for making this. Just yesterday, I have just visited what kind of arrangement they have made. I've never discussed. Just they have informed we are doing that. We are doing that. I could not find any time to devote for to supervise all these work, but yesterday I have seen what kind of arrangement they have made and what kind of effort they have. I congratulate my MMP team led by the Nikhil and the from the ARMMAN technical team late Mr. Rohit. Several times in night I have spoken to Rohit, Rohit, what happened and what efforts again you have. If you have any issues, please tell us so that I can, my intervention is required. No, sir, we have managed all these things despite short notice. Every time he replied, and thanks to Rohit and thanks to Madam, your passion is wonderful. Without your support, the KMA could not be rolled out everything. And your passion and just I came to know that the next new CEO has joined and we will continue with the works to the new CEO. And hopefully within the next financial year, by the end of the financial year, the KMA to be rolled out in all the states and UTs. Thank you. Thank you so much, all the participants from states, our development partners, all the participants in program division, all our team members. And with this, we are concluding the workshop. Thank you so much and goodbye and good evening. Good night. Thank you.